फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में, हर रोज वो किसी काम में होता है, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहस्सक़लान। अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, है दो बोझल जमातों, जिन और इंसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। या मअशर जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तानिन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए गुरों, जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तो किनारों से आसमान और जमीन के निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। छोड़ दिए जाएंगे तुम शोले आग के और धुआं, तो फिर न कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और न किसी जिन से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोज़ख के और खौलते हुए गर्म पानी के। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने, उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान। इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान। तकिया लगाए हुए होंगे
ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वाली, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उससे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। كأنهن الياقوت والمرجان गोया वो हैं याकूत और मरजान। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان नहीं है जजा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهما عينان نضاختان उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهما فاكهة ونخل ورمان इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهن خيرات حسان इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। حور مقصورة في الخيام वो हूरें जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ना छुआ हो जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और न किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان तकिए लगाए बैठे होंगे मसनों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। صدق الله العظيم।
मेरा नाम हारून रशीद है और मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का मेंबर हूँ और मैं इस वक्त यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री है लाहौर में कोटे कार्डो इंडस्ट्री उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का ये स्टॉल है उसमें हम It's 10 a.m. फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2023 की स्पेशल एपिसोड में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसयू जो सिंध पुलिस का स्पेशल सर्विसेज यूनिट है उनकी शूटिंग रेंज पर, और एक ज़बरदस्त किस्म की शूटिंग चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है कि जहाँ पर ना सिर्फ आर्म फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बल्कि सिविलियन मैंस वुमेंस सभी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इवेंट के पाकिस्तान में नहीं होता और ये कोशिशें हो रही हैं कि इसको बनाया जाए। हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस जॉइंट हैंड्स विद एसएसयू सिंध गवर्नमेंट, और अगर मैं बात कर लेता हूँ मकसूद मेमन साहब की जो डीआईजी हैं एसएसयू के, शानदार किस्म के इक़दामात, उनकी पूरी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। और उनकी टीम की ही रुकन मेरी को होस्ट होंगी जो एसएसयू से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ सैयदा अयमन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदा अयमन। वालेकुम अस्सलाम। अयमन, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर और भरपूर इंजॉय लोग करते हुए दिखाई दिए। ऐसा ही है क्योंकि ये जिस तरह पाकिस्तान में एक तो पहली दफ़ा हो रहा है, फिर सबसे बड़ी बात जो सिविलियंस को इसमें मौका मिला है ना, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, अपनी स्किल्स देखें शूटिंग के हवाले से। ये आम है, आपको पता है इस वक्त। बिल्कुल अमन, आइए ज़रा थोड़ा सा हमें बताती भी चलिएगा और थोड़ा सा दिखाते भी रहिएगा। ये इस वक्त यहाँ पे जो शूटिंग के मुकाबले चल रहे हैं, थोड़ा सा
दिखाइएगा अमन, ये क्या है, किस तरीके से हो रहा है? अच्छा, बेसिकली ये टैक्टिकल शूटिंग कंपटीशन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस बनी हुई हैं। ये बेसिकली बनाया गया है कि हम फील्ड में कैसे टारगेट को अप्रोच कर सकते हैं। आप कहीं पर ऐसी फील्ड में मौजूद है जहाँ पर हर जगह से आपके पास टारगेट आ रहे हैं, तो एक लॉ इन्फोर्समेंट पर्सन के हवाले से और सिविलियन के हवाले से आप उसे कैसे कवर करेंगे, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है। अब जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त ये शूटर अपने टैक्टिकल शूटिंग में इसमें अपनी स्टेज पे ही खेल रहे हैं और आपने देखा है कि हर टारगेट को पर्टिकुलरली वो हिट कर रहे हैं और सेफ्टी वायलेशंस का ख्याल रखते हुए। अच्छा, सेफ्टी क्या है वैसे? ही थोड़ा सा थोड़ा ये तो समझें कि व्हाट इज सेफ्टी है, सेफ्टी के क्या मेजर्स होते हैं आपके उसमें? देखें, सेफ्टी का मेजर जो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं ये हैं कि हमारा जो वेपन है ना, एक चीज़ हमने अपने एज्यूम दिमाग में रखते हैं कि ये जो है ना जान लेने के लिए बना हुआ है, तो ये तो डन है कि इससे या तो किसी की जान चली जाएगी। तो इसको हमेशा सेफ डायरेक्शन पे रखना आपकी जो है ना फर्स्ट सेफ्टी उसमें आता है, एज्यूम कर सकते हैं आप। ख़ास तौर पे तब जब आप फील्ड में उतरे हों कि आपके हाथ से किसी बेगुनाह की जान ना जाए, ये चीज़ यहाँ पर मेन है। और दूसरी चीज़ के लाइसेंस और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? ये क्योंकि IPSC के रूल्स के मुताबिक हमारा इवेंट हो रहा है और उसमें ये मेन रूल है कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, चाहे आप लॉ इन्फोर्समेंट से हो या आप एज ए सिविलियन हो। बिल्कुल ठीक है। तो फिर सैयदा अमन हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगी। आज क्या कुछ होगा यहाँ SSU शूटिंग रेंज में, क्योंकि हिस्ट्री बनी है। आज सिंध पुलिस का SSU यूनिट बाजी ले गया, इनकी पूरी टीम बाजी ले गई, क्योंकि एक ऐसा गेम जिसके मौके बहुत कम है, खेलने वाले बहुत हैं, उनको कम से कम एक्टिविटी मैसर आएगी। एट द सेम टाइम लोगों को शऊर आएगा वेपन रखना कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, चलें आपको दिखाते हैं। आइए अमन। सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी CPLC, उनकी भी टीम यहाँ पर मौजूद है और सैयद इंतज़ार साहब जो उसकी टीम के कैप्टन है वो हमारे साथ मौजूद है। और एक प्रॉपर CPLC की टीम जैसा उनका इदारा है उसी डिसिप्लिन में जो है वो यहाँ पर दिखाई दी है। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इंतज़ार साहब, ओवरऑल अपनी नौइयत का ये पहला इवेंट है, इस तरह के मौके मिलना, आप तो चलें CPLC से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बहुत सारे सिविलियंस आए हुए हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं। जी हाँ, ये अपनी नौइयत का, जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल एक बहुत मुनफरिद एक इन्होंने गेम का इनेकाद किया SSU के ताबन से ख़ास तौर पे, और हमारा CPLC की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने का मकसद ये था कि ये फ़र्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंड गन चैम्पियनशिप हो रही है और इसमें इन्होंने सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने इसमें सिविलियंस को जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। आप देखें जिस तरह के यहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारे पास शहर के अंदर लोग शौक़ भी रखते हैं मगर ऐसी हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद नहीं है, और जो मौजूद हैं वो तरह से ज़ाहिर कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है आजकल जिस तरह की महंगाई के हालात है। तो उस लिहाज से ये एक चैम्पियनशिप का इनेकाद होना एक अच्छी बात है। और दूसरा है कि इससे सिविलियंस के अंदर भी और डिपार्टमेंट को चले प्रैक्टिस का मौका मिलता है, मगर सिविलियन की अगर आप बात करेंगे तो उनको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और जिस तरह के हालात हैं उससे वो अपना और अपनी फैमिली का दिफा कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। 5 रूल हैं सेफ्टी के, जो 5 रूल हैं फायर के, वो हर सिविलियन को जिसके पास लाइसेंस होल्डर है, क्योंकि लाइसेंस तो गवर्नमेंट ने दिया, तो उसको ट्रेनिंग के भी जो है वो कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा इदारा बनाए कि वो जो है वो सीखे। क्योंकि इस ट्रेनिंग ना होने की वजह से बहुत से लोग जो है वो मिस्टेक करते हैं, या तो वो वेपन को यूज़ ही नहीं करते, हाथ ही लगाते, या फिर लगाते हैं तो वो कोई ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर शादियों में जो है वो एक्सीडेंटल फायर हो गए, रोडों पे सड़कों पे हो गए, वैसे लड़के लेके निकले हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर SOPs हैं, वो SOPs जो है वो सिविलियंस को भी सिखाई जाए। शूटर लोड एंड मेक रेडी। मैं से नदीम है और आज मैं यहाँ पे जो है ये सिंध की तरफ से जो है एक एक्सट्रीम पुलिस हैंडगन चैम्पियनशिप चल रही है। यहाँ पे हम आए हुए हैं एज ए सिविलियन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि सिविलियन और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस तरह गेम्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की कराची के जितनी भी लोग हैं वो इसमें जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और वो जुड़ सकें इसको। हम पंजाबी से हैं, यहाँ पर कराची में आए हैं अपना हैंड गन चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए। तो ये कराची पुलिस की एक अच्छी एफर्ट्स है जो हम अप्रिशिएट करते हैं और हम यही चीज़ को रखेंगे कि हम पंजाब में नेक्स्ट ईयर
इसी किस्म के चैंपियनशिप मुनक़िद कराएं। एसएसयू की तरफ से इस वक्त जो शूटिंग कंपटीशन चल रहा है उसके पार्टिसिपेंट्स में हमारे साथ एक फ़ीमेल मौजूद हैं, मिस शाहिना गज़ल, जिनका ताल्लुक़ मोटरवे पुलिस से। तो अब हम इनसे बात करेंगे इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी तक इनका ख़ुद का इसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज ए प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने पूछा कि मेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस इवेंट के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में पाकिस्तान में मतलब लॉन्च हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है एसएसयू की तरफ से। तो आई एम फीलिंग लकी कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से किया है, मोटरवे पुलिस की तरफ से। मेरा नाम उज़मा है और मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से ताल्लुक़ है मेरा, और यहाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फायरिंग इवेंट में। इसका मकसद ये है कि हम मर्दों के शाना बशाना चल रहे हैं और हम किसी भी कोई मुश्किल वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। फर्स्ट पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2023 जारी है यहाँ पर इस वक्त एसएसयू की शूटिंग रेंज पर, और शानदार शूटिंग रेंज जिसपे बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट्स मैंस, वेमेंस और उसके साथ साथ सिविलियंस बहुत दिखाई दिए। जहाँ पर हमारे आर्म फोर्सेस के लोग दिखाई दिए, वहाँ सिविलियंस की एक बहुत बड़ी तादाद जो शायद मौका ना मिलने की वजह से इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अगर आप ये सारी रौनकें देख रहे हैं तो उनमें जो चंद टॉप लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है एसएसपी अज़हर ख़ान साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, एसएसयू सिंध जो मेज़बान है इस चैम्पियनशिप के। अस्सलाम वालेकुम अज़हर ख़ान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज़हर ख़ान साहब, ये इनिशिएटिव और लोगों के चेहरों पे जो खुशियाँ दिखाई दे रही है, ख़ासकर ख़ासा इम्पॉर्टेंट इवेंट अवेयरनेस के लिहाज से भी है हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने जो एक पॉजिटिव इस चीज़ को कवर किया है, इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो आपको शूटिंग कंपटीशन नज़र आ रहा है सारे अरेंजमेंट, तो ये डॉक्टर मकसूद साहब जी जो सिक्योरिटी कराची हैं, ये बेसिकली सर का ब्रेन चाइल्ड है और एक विजन के तहत अपनी टीम को, जिसमें मैं और हमारे साथ दीगर ऑफिसर्स शामिल हैं, हमें ड्यूटी साइन की कि जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। तो शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में एज ए स्पोर्ट्स इसको प्रॉपरली जैसे रिकग्नाइज नहीं है, इसको किया नहीं जाता। तो हमने इसको कराची में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। ये अपनी नौइयत का फर्स्ट एवर कॉम्पिटिशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लोग भी शामिल हैं और यहाँ पे वो अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, कराची है, जो सिंध है, ये एक बेहतरीन और सेफ़ इन्वायरमेंट है मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन के लिए, ताकि वो अपनी कैपेसिटीज़ का यहाँ पे आके पॉजिटिवली आके मुजाहरा करें। और यहाँ पे दुनिया में ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स जो दुनिया में हो रहे हैं वो हमारे मुल्क में भी होते हैं। पुलिस टीम हैंडगन चैंपियनशिप 2023 अब अपने इख्तितामी मराइल में पहुँच गई, लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा इतना बड़ा और इतना शानदार इनिशिएटिव लिया गया। एसएसयू सिंध पुलिस का डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी रेंज के ऊपर इसको इससे पहले माजी में नहीं हुआ, और अगर इसका सहरा तमाम तर जाएगा तो उनके लीडर हेड डीआईजी मकसूद मेमन साहब, जो इस वक्त एसएसयू को भी बहुत शानदार अंदाज से लीड कर रहे हैं, और ये सब ब्रेन चाइल्ड भी दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम मकसूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओवरऑल एक मेले का समा हो गया एसएसयू के इस हेड क्वार्टर में, और ख़ास तौर पे जो एक बड़ा पैगाम गया आप यहाँ से कि जो लोग तरसते थे इस तरह के मुकाबलों के लिए, बहुत खुश हुए। आई एम थैंकफुल टू बदर एक्सपोर्ट टीम, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, और जो सिंध पुलिस की टीम है, जो हमारे प्रोफेशनल शूटर्स हैं जो ये मुकाबले बाहर जाके करते हैं, उनके मदद के साथ हम इस मुकाबले को पाकिस्तान में लेके आएँ। इसमें न सिर्फ ये कि सिंध पुलिस और बाकी जो सिंध के डिपार्टमेंट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और सिविलियन, बल्कि पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट जगहों से लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है सबके लिए कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं होती, ये एक अच्छी खबर है कि जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं जो अमन अमान कायम करने में अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनको एक फ्रेंडशिप फ्रेंडली मैच हम करवा रहे हैं उनके बीच में, ताकि यहाँ से मज़ीद लग रहे हैं तो एक पॉजिटिव पिक्चर पाकिस्तान के जो इस इवेंट के हवाले से हम दुनिया के आगे रख रहे हैं।
बदर सोल्यूशन हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज के सारे ही बड़े इवेंट करते हैं। एसएसयू और बदर एक्सपो सोल्यूशन साथ साथ खड़े। ये इनिशिएटिव एक डिफरेंट इनिशिएटिव है। आपकी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जावेद मियादाद, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, ये सब हम साथ हैं, लेकिन अब आप मकसूद मेमन साहब के साथ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मकसूद मेमन साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया इस पूरी शूटिंग चैम्पियनशिप के इस कंपटीशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि ये समझ लो रिवाइवल है, ठीक है, रिवाइवल है पूरी शूटिंग रेंज का, कि जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर बनेगा कि अभी तो ये हमने सिर्फ सारा का सारा ये सारा लोकल लेवल पे किया है, तो इंशाल्लाह ये जो है पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पूरा शूटिंग प्रोग्राम चला जाएगा। तो ये एसएसयू की तरफ से इंशाल्लाह ये एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। और जिस तरीके से इसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया है, तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो गई है। और जो लोग इस चीज़ के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स पे जाते थे, वो अब उनके लिए ये पता चल गया कि पाकिस्तान में इस टाइप की भी एक एक्टिविटी फायरिंग की अवेलेबल होगी, जहाँ पे आके ये अपने आप को एक अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में किसी भी ओलंपिक्स और इन चीज़ों में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को एसएसयू सिंध पुलिस की जानिब से खुशामदीद किया जाता है। और अब इनामात का सिलसिला बाकायदा शुरू होगा। विमेंस फर्स्ट, ये एक कहावत है, तो सबसे पहले हम अपनी फीमेल कैटेगरी से आगाज कर रहे हैं। और इस फीमेल कैटेगरी में थर्ड पोजीशन एसएसयू की शाहिदा प्लीज तशरीफ लाइएगा। थर्ड पोजीशन शाहिदा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से आप अपना इनाम वसूल करेंगी शाहिदा। और अब सेकंड पोजीशन इन फीमेल कैटेगरी फ्रॉम मोटरवे शाहीना गजल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट गेम और यहाँ हमारी फीमेल पार्टिसिपेट कर रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर अप्रिसिएशन बनती है। शाहीना गजल फ्रॉम मोटरवे सेकंड पोजीशन। And the champion of First Police Extreme Handgun Championship 2023, SSU, from SSU, Rubab. Rubab the champion. Please तशरीफ लाइएगा रुबाब। अब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जहां थर्ड पोजीशन पंजाब पुलिस के मोहम्मद इफ्तिखार खान, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इफ्तिखार खान साहब फ्रॉम पंजाब पुलिस। अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। देखें कि पूरे मुल्क ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में, ये पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, तो आप पंजाब सिंध पुलिस, आप जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला यहाँ पर। और नगद इनाम भी है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, 30,000 का कैश प्राइज विद ट्रॉफी। एंड सेकंड पोजीशन आमिर बंगश फ्रॉम सीटीडी। आमिर बंगश, तालियां होनी चाहिए, वैसे इतना ऐसा ना करें। सेकंड प्राइज ऑफ लॉ enforcement category, Amir Bankash from CTD. And now the champion of law enforcement category, Abdul Shakur from SSU. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान आमतौर पे वेपन्स रखते हैं, आप मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, हमारी सिक्योरिटी के जामिन होते हैं। और अब सिविलियन कैटेगरी, और ये भी वो कैटेगरी है कि जो आज बहुत बड़ी तादाद में जिसने हिस्सा लिया। द सिविलियन कैटेगरी जिसमें थर्ड पोजीशन इमामुल हक। इमामुल हक के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
Second position in civilian category, सूबेदार रिटायर्ड फजल सुभान। फजल सुभान के लिए बहुत सारी तालियां। आपने बताया जबरदस्त। सूबेदार रिटायर्ड फजल सुभान, वेरी वेल डन। सेकंड पोजीशन इन सिविलियन कैटेगरी एंड चैंपियन ऑफ सिविलियन कैटेगरी अरसलान अनवर। बहुत सारी तालियां अरसलान अनवर के लिए। ये भी एसएसयू से पहले ताल्लुक रखते थे, अपना बिजनेस करते हैं अब। बहुत सारी तालियां अरसलान अनवर साहब के लिए। और यहाँ एसएसयू की आप तरबियत का भी अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके का ये इदारा है और सिंध पुलिस में क्या रोल प्ले कर रहा है। मोस्टली हमने देखा कि जितने भी हमारे शूटर्स हैं ज़्यादातर ताल्लुक एसएसयू से था, तो इसमें डॉक्टर मकसूद अहमद साहब को बहुत क्रेडिट जाएगा, उनकी पूरी टीम को बहुत क्रेडिट जाएगा कि ज़बरदस्त किस्म का काम सर आपका। आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉरेन स्पेशल कैटेगरी। there are two participants from France. Number one, Rodolphe Disselke. Rodolphe Disselke. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। Thank you very much, Mr. Rodolphe, for the participation in the event. And second is Mr. Thomas Busquet. Mr. Thomas Busquet from France. Congratulations. Thank you. और यहाँ पे जैसे पंजाब पुलिस आपने देखी, वहीं बलूचिस्तान पुलिस ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। और बलूचिस्तान पुलिस के एसपी नजर खान साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। नजर खान साहब तशरीफ लाए पोडियम पे। अब आइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो फिर एसएसयू शूटिंग रेंज अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। ज़बरदस्त किस्म का इवेंट हुआ, आप देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज इस इवेंट का हिस्सा बने जो आप भी आ रहे हैं। लेकिन मैं और अमन आपसे यहाँ पर इजाज़त लेंगे। अमन, वैसे आप क्या समझती हैं कितना सक्सेसफुल रहा ये इवेंट? अगर ओवरऑल देख लेते हैं तो इसकी सक्सेस को कहाँ रेट करेंगे एज ए गोल्ड मेडलिस्ट आप? मैंने अभी तक जितना यहाँ पर लोगों के तासुरात देखे हैं उसके हवाले से तो देखिए सक्सेसफुल है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे एसएसयू के हेड डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद को कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। और आप यकीन करें कि ये पहला एक्सपीरियंस ही समझे इतना बेहतर रहा है, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आगे तैयार हैं गोल्ड मेडलिस्ट अपने इदारे के साथ मज़ीद कराने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ और बिल्कुल मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल सेकंड आए और मैं इसको अप्रोच करके ना ज़रूर एक और मेडल कर जाऊँ एसएसयू के लिए। थैंक यू वेरी मच सैयदा अमन। और आप बीटीवी के लिए आज को होस्ट भी बनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो इस तरह के इवेंट में अगर आप नहीं होती तो ये मुकम्मल भी नहीं हो पाता। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एसएसयू एंड सैयदा अमन, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। एसएसयू शूटिंग फील्ड से यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ सैयदा अमन के साथ आपसे चाहेगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।
आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जबरदस्त शो, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट शो जो कई हवालों से हमारी मुल्क की मईशत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस तरीके से हमारी इक्विपमेंट जिस तेजी के साथ तैयार हो रही है, तो एक्सपोर्ट के सेक्टर में भी पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक डिफरेंट कंट्री इंशाअल्लाह जरूर दिखाई देगा। हमारे इस स्टूडियो में डिफरेंट मेहमान आते हैं जो मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, सबका पाकिस्तान जिंदाबाद। हर आदमी यही करता हुआ आता है और यही कोशिश यहाँ आइडियाज 2022 की सूरत में दिखाई दी जाए। डेपो की मैं बात कर लेता हूँ, या डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, या बदर एक्सपो सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं जो जुड़े थे और मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब इवेंट आज अपने तीसरे दिन में दाखिल हो गया और कल आखिरी दिन होगा इस इवेंट का। मेरे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद है CEO हुसैन मार्केटिंग। बहुत बड़ा नाम है मार्केटिंग की दुनिया में, कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हुसैन मार्केटिंग कर रही है। उनके CEO बाबर अब्बासी साहब यहाँ हमारे साथ गुफ्तगू के मौजूद। थैंक यू वेरी मच बाबर भाई। उनके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान में आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने वाला एक ऐसा इदारा कि जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आर्मर्ड व्हीकल्स जो है वो बड़ी तादाद में सप्लाई करता है। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। उनके आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान लिमिटेड के CEO मोहम्मद खालिद यूसुफ साहब हमारे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, कराची टेबल प्रीमियर लीग में भी जो है वो इन्होंने अपनी टीम खरीदी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम इनको देख लेते तो इनकी टीम के साथ कोई और नहीं, द वन एंड ओनली बूम बूम शाह खान आफरीदी जुड़े हुए और वो एक जबरदस्त किस्म की ग्लैमरस जो है वो कराची टेबल प्रीमियर लीग को मिला। नवाब के ऑनर है उवैस मीर साहब और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में देही इलाका जात में जहाँ पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वहाँ पर उन देही इलाकात में गैस सप्लाई करना, वहाँ पहुँचाना। ये डायनेमिक इंजीनियरिंग क्या काम कर रही है, ये उवैस भाई से हम जानेंगे कि एनर्जी का इस वक्त पैमाना क्या है और इसको इस्तेमाल किस अंदाज से किया जाए। सबसे पहले बाबर भाई से बात करते हैं। बाबर भाई बिल्डिंग्स बनाते, बड़े बड़े काम करें, लेकिन आइडियाज 2022 हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है। ये इवेंट खासतौर पे आने वाले वक्त में हमारी मईशत के लिहाज से, हमारी एक्सपो के लिहाज से, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट देखी, हर आइडियाज बढ़ रही है। अगर मैं आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान की बात करूं तो कई नए प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो यूसुफ भाई से बात करेंगे तो तेज डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको खुसूसी सलाम नसीम भाई कि आपने इनवाइट किया। और ये जो इवेंट है हमारा आइडियाज़, ये यूँ समझ लें पाकिस्तान की इस वक्त शान है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस तरह के इवेंट्स होते हैं और जिस पाक फ़ौज को यहाँ मैं खुसूसी सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने इस तरह का इवेंट किया और मैंने पूरा विज़िट किया। बेशुमार ममालिक के लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस कराई है वो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा ममालिक के पास है। तो खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, आप सबको, कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। और ये हमारी इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ही रीढ़ की हड्डी साबित होगी, क्योंकि दुनिया में जो भी असला बनाने वाली कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो इसमें सर्व करते हैं, वो आप देखें कि मईशत उनकी कहाँ चली गई है। तो एक मरतबा फिर मैं यही कहूँगा कि ज़बरदस्त काम और सबको, पूरी नेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल। खालिद साहब जबरदस्त काम कर रही है आपकी कंपनी। पाकिस्तान में अगर आर्मर्ड व्हीकल की बात करता हूँ, हम कंपेयर करें दुनिया में, अब ज़ाहिर है हम जर्मनी तो कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह की वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली करें आर्मर्ड व्हीकल्स के हवाले से। देखिए, हमने एक्चुअली जब हम स्टार्ट किया था काम 2010 में जी, उस वक्त हमने एक एसोसिएशन में एक इंटरनेशनल कंपनी को अपने साथ जॉइंट वेंचर में लिया। फॉर अनदर 6 to 8 years हमने उनसे लर्न किया, उनसे हमने टेक्नोलॉजी सारी ट्रांसफ़र करवाई। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया तो हमारे पास लोकल इंडिजीज आ गए। हम यहाँ पे जो गाड़ी की कंपोनेंट चीज़ें हम उनसे मंगवाते थे वो हम यहाँ खुद बना रहे हैं। अब हम खुद बना रहे हैं। रॉ मटेरियल में स्टील और ग्लास है जो बाहर से आता है, उसके अलावा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम एक गाड़ी है उसके अंदर से आर्मर देते, स्टील लगाई, ग्लास लगाया, सस्पेंशन टायर चेंज कर दिए फ्रेश। बट नाउ आफ्टर दैट 2016 में मैंने पहली पाकिस्तान फौज के लिए मेड इन पाकिस्तान APC बख्तरबंद बनाई है। दैट इज फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। एटमॉस्फेयर, यहाँ की रोड्स, यहाँ के पहाड़, यहाँ के
पथरीली रोड, कच्चा एरिया, पका एरिया, दैट्स ऑन लैंड क्रूजर टोयोटा। एसी इंजन हमने यूज किया, स्क्रैच टू हम जिग बना के स्क्रैच टू ग्राउंड, पॉजिटिव एक्सटीरियर एवरीथिंग वी मेड ओवर हियर। तो हमारे यहाँ यही पाकिस्तानी जाके बाहर भी काम करते हैं, और ये गाड़ी ऑलरेडी जो मैंने बनाई है ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड टेस्टेड है। आज से 10 साल पहले हमें एक इंटरनेशनल इदारा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने यही सेम 8 गाड़ियां हमारे कैनप में दी। उस वक्त तक हम बना नहीं सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जो हमें डेवलपमेंट और चीज़ें मिलती गई, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजन, गेयर बॉक्स और चेसिस नहीं मिलता। नहीं तो हम कोशिश करें वो भी हम अपने यहाँ का इस्तेमाल करें, तो मजबूरन हमें व्हीकल का चेसी लेना पड़ता है, वो इम्पोर्टेड है, और हमें वो वही लेना पड़ता है कि मैं वॉल्वो कि मैं अमेरिकन पावरफुल हो, फोर्ड के, लेकिन उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जो ये गाड़ियाँ होती हैं जो हम देते हैं फोर्सेस को या आर्म फोर्सेस को, उनको उसकी इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स होते हैं, दे आर वेटिंग। तो हमने जो चीज़ इस्तेमाल की वो ऑलरेडी पाकिस्तान में लास्ट 60 ईयर से टोयोटा चल रहा है जी। हमने बेस्ट की, उनका हमारी जितनी फोर्सेज हैं उनके पास पिकअप्स हैं, डबल केबन है, सिंगल केबन से, मोस्टली कार भी हैं, जो भी है हमारे पास बहुत रहना है। हमने उसी चीज़ को इस्तेमाल किया कि अगर इन रोड साइड से भी कोई ब्रेक पैड चाहिए, बख्तर बंद हो, कोई गाड़ी भी हो, दे कैन फाइंड आउट एट स्मॉल, किसी भी इंटीरियर से, कहीं से भी। ये नहीं कि ये मेरा इंतजार करे कि मैं इनको एक्सपेंसिव पैसे लगा के इनको कराची से वो चीज़ भेजूं रूरल एरिया में, और दिस इज द मोस्टली पीपल आर डूइंग दैट। अब जो इंटरनेशनल जर्मन व्हीकल्स हैं, ये दूसरी व्हीकल्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, बाहर से मर्सिडीज आई है, मर्सिडीज वाले उसकी अपनी सारी चीज़ें प्रॉफिट वो कमाते हैं आफ्टर पार्ट्स और रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सेल्स में। हम नहीं, हम 2 साल उनको वर्ल्ड, तो हमारी मेन कंपनी है जो वो देती है पाकिस्तान में, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोग 2 years 40,000 किलोमीटर वारंटी दे रहे हैं, पैसेंजर साथ की, बख्तरबंद की, एपीसी की, व्हाटएवर जो भी हमारे स्लोग थे। बख्तर वो सारी बनी हुई है जो आप देख, मैंने 2020 में 2016 में बनाई थी, 4 साल मैं मेहनत करता रहा, टेस्ट एंड ट्रायल पे देता रहा, कुछ डिपार्टमेंट ली, कहीं ने पास कर ली, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गए, उसके बाद जाके कहीं पे कोई कर देते, चलो जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन बावजूद इसके 4 साल बाद जो है अल्लाह ने उसका मुझे रिजल्ट दिया। मैंने 1 साल में 24 व्हीकल्स, 1 महीने में 2 गाड़ी बना के पाकिस्तान में 24 गाड़ी 1 साल में दी। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इदारा है जो बख्तरबंद 24 बनाता है एक। ये बहुत डीपेंड खाल साहब, जरा वे तो दीजिएगा, डायनामिक इंजीनियरिंग जो काम कर रही है, गैस फील्ड, ये मैं अवारा के इलाके में गया था, अवैध भाई ने उस जगह पे लगाई गैस फील्ड, और ये गैस फील्ड जो है वो इसमें मोस्टली पाकिस्तान से चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं। कई सारे मसाइल की जो ये खिदमत कर रहे हैं उन इलाकों, मोड इलाकों में, कि जहाँ बाकी हम आ भी नहीं सकते, गैस और लाइट दे रही उवैस भाई का बहुत बड़ा काम है। उवैस भाई, आप डायनामिक इंजीनियर, थोड़ा सा हमें इस एनर्जी सर का बताइएगा, आपका अयाज 2020 के साथ मैच समझ में नहीं आया मुझे। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। जैसे आपने बयान किया कि हर चीज़ का एक कनेक्ट है, हाउ द एनर्जी सिक्योरिटी, या जो हम डिफेंस सिक्योरिटी की यहाँ जो टैग लाइन है, आर्म पीस, दुनिया में एक फिनोमेना है जी जो हमारे मुल्क को थ्रू इट्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझ आ गया है और आना चाहिए। एक टैग लाइन है, उस दिन मैं किसी कमांड को भी बता रहा था, एनर्जी सिक्योरिटी इज द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। दुनिया में अभी ये सब खेल चल रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। जैसे अभी खालिद भाई ने बात की, इट्स ऑल अबाउट इंडिजनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो काम कर रहे हैं विच टीओटी बेस्ड ऑन, इसकी सारी जो बैकबोन है ना वो है एनर्जी, एंड एनर्जी ड्राइव्स इकोनॉमी। किसी भी मुल्क की अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो उससे उसकी डिफेंस की डिग्निटी स्ट्रॉन्ग है। So we were exploring this, I've told Joy and other कि ये बड़ा एक बड़ी कन्वर्जेंस है। ये हमारे लोग बाकी सेक्टर से बैठे हैं, खालिद भाई को पता होगा, एक कंपनी है नॉरिनको, नॉरिनको चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लब रेट है एसओईस स्टेट ओरिएंटेड पर। जितना उसका डिफेंस का एक्सपोजर है, अभी पाकिस्तान को उसने 400 टैंक्स दिए हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दे हैड अंडर द टीओटी। उसमें उनका कनेक्ट ये है कि उनकी जितनी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसी डिफेंस कैपेबिलिटी को वो एनर्जी कैपेबिलिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे आपने कुएं की बात की, अवारान, आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ फौज नहीं जाती थी, तो आपको भी सलाम है, आई मस्ट से। मैं वो जो आपने भिजवा दिया ना मुझे, वाकई जिंदगी में इतना खतरनाक से नहीं गया मैं। जी, हमारे मुल्क ये आई में कॉल इट आयरनी इन अ वे, और उस आयरनी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का मोड ऐसे है कि जब तक हम इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाएंगे कि जैसे मैं और आप एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग इन आइडियाज अबाउट द डिफेंस सिक्योरिटी आई जब तक नहीं सकती जब तक कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं आ सकती जब तक कि एनर्जी सिक्योरिटी ना हो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी हम कर रहे हैं, तो हमारा विजन है कि वी बीन ट्राइंग कि मेरे और आपके घर में अगर गैस आती है, तो गैस इज वन ऑफ द लाइफ लाइन ऑफ इट। आज दुनिया की जो सुपर पावर है, या ये जो यूक्रेन और ये जितने आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर ऑयल एंड गैस। यूरोप विल बी लाइक मैस, एंड इफ यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स a recession in time to come, it's all about the energy. So जैसे अभी आपने बात की, आपने डिफरेंट देखे, मैं आप नॉरेनको की बात बता रहा था, तो नॉरेनको अगर पाकिस्तान में डिफेंस में स्ट्रांग है, सो वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रॉट देम इनटू ऑयल एंड गैस। उस डिफेंस कैपेबिलिटी की वजह से इराक जो मुल्क में उनके 10 कुएं एंड दे हैव अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। दैट्स वेयर हम एज पाकिस्तानी, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, बिकॉज ये भी मैं आपको बता दूं, नॉट सिचुएशन इधर क्लोज ड्राइंग रूम में बैठ के और स्टूडियोज में बैठ के जेनेरिक बन नहीं सकते। इट्स अ सिचुएशन ऑफ नाउ और नेवर इन अ काइंड ऑफ लाइफ लाइन वी आर ऑन टू इट। जब तक कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि ये जितने हमारे इदारे हैं, एनआरटीसी, एसपीडी, जब तक कि इनकी कमर्शलाइजेशन एट इट्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, we will not able to get our deterrence on the capability. So coming back to your question के what brings us over here, my point जी ये है कि जैसे गैस, आपके घर में गैस नहीं आएगी तो आपको सबसे बड़ी तकलीफ आपकी होम मिनिस्ट्री ने आपको घर से बाहर नहीं निकलने देना। सही बात। एंड गेट रेडी फॉर दिस कि पाकिस्तान के गैस के हालात ऐसे हैं कि वी विल हैविंग नो गैस, व्हिच इज ऑलरेडी द सिनेरियो इन द डाउन द लाइन। गैस होती थी अपने मुल्क में, गैस की कमी जी, ये इसके जखायर कितने रह गए हैं हमारे पास, ये भी बताइएगा। अच्छा सवाल है आपका, which is for this event के करना भी बड़ा जरूरी है, because as I said again, energy security, जब मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे एसजीसी को लीड करते थे बैक इन 25 years ago, तो वो उस जमाने में हम गैस एफिशिएंट थे, गैस सफिशिएंट थे इन टर्म्स ऑफ द, अनफॉर्चुनेटली जैसे बहुत सारी आयरनीज हैं इस मुल्क में कि खालिद भाई जैसा बंदा, जैसे अगर वो इंडिजनाइजेशन की बात की है ना, आई एम इन फेवर ऑफ टीओटी, इफ इट टुक हिम 5 years टू रीच इनटू द 1 year इन द 24 व्हीकल जो उन्होंने बात की, अगर ये 6 साल पहले हो चुके होते तो आज अगर मैं और इन जैसे कई एलसीओ के लिए लो रहे हैं स्टेट बैंक की इंपोर्ट वैल्यूएशन में, तो वो हम कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते। तो गैस में हमारा ऐसे कि हमने गैस को यूज नहीं किया, अब्यूज किया, जो आई एम लिटिल बिट ब्लंट इन टर्म्स ऑफ जिस तरह हमने गैस में फूकी है, ठीक है, वेदर विद बी सीएनजी, या जिस तरह घर में और मेरे में इधर चला है, आप अवारान गए, वो 6 घंटे का सफर आप 3 साल बाद भी नहीं होते। इमेजिन करें उसके घर में गैस का बिल, वो बलूचिस्तान में जो जिसने 20 साल इस मुल्क को फीड किया या 30 साल इस मुल्क को फीड किया, उस फार फ्लंग एरिया में तो एलपीजी वजह से ऑन द गैस का बिल है इसका एवरेज 10,000, और मेरे और आपके घर में या खालिद भाई का माशाल्लाह ऑन द लाइट का घर होगा, उसमें वो गैस का बिल आता है 500 रुपया या 1000 रुपया एट मैक्स। जब वे वी यूज अवर एनर्जी रिसोर्सेज, वेदर इट बी अ माइनिंग, वेदर इट बी दिस, जो आज हम स्टेज पे हैं, इसमें नन अदर देन हमारी अपनी इनएफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्स का बड़ा मेजर हाथ है। बाबर भाई, तो हम आइडियाज 2022 के साथ बड़े ब्रांड हुए, तो इनका कोई कंसर्न था वो भी आके खड़े, पर ये थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह करना है। हमारे जैसे भी उवेश भाई बात की कि हम जिस दौर गुजर रहे हैं, कल हमारा क्या हो किसी को भी नहीं था, जो इस वक्त मई का हमारे हाल है, कौन तरीके से हमारी तेजाब पीछे की जानिब जा, आप माला मार्केटिंग में इतना बड़ा नाम है, इसकी और मार्केट आइडियाज 2022 की डिफरेंट अंदाज से हो सकती है। और ऐसी चीज भी बताइए कि जो सीरियसनेस चाहिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, ये लाजमी तौर पे दी जाती है 100%, लेकिन ये जो बिजनेस टू बिजनेस डील्स पर होती हैं, उनके कुछ और असरदार माहौल भी मुहैया किया जा सकता है। सर ये बिजनेस है, ये बहुत हाई पे हो सकता है। असल में होता ये है कि इसकी कैंपेन नहीं करते, हमें वर्ल्ड वाइड की कैंपेन करनी चाहिए। जितना सक्सेस हम इवेंट होता है ना, तो इसकी वर्ल्ड वाइड कैन नहीं होती, अगर हो तो ये तकरीबन 100 टाइम ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस। तो इसकी कैंपेन होनी चाहिए। आप देखें कि जिस तरह से स्टॉल हैं, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से कस्टमर्स हैं,
उन सबको अगर देखें तो सब पीआर पे आ रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह से इनवाइट किया जाता है बस वो है। अगर प्रो कैंपेन हो वर्ल्ड वाइड तो ये बहुत बड़ा बहुत हाई स्केल बिजनेस हो सकता है। थोड़ा सा हमें डिफाइन कीजिएगा वर्ल्ड वाइड जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं अबाउट मार्केटिंग, उसको जरा थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। और जिस तरह से हमारे एम्बेसडर्स हैं पूरी दुनिया में, वो वहाँ पे इस तरह की एग्जीबिशन वहाँ पर भी करें, ठीक है ना। वहाँ इस लेवल पे ना जाएं, लेकिन ये बताएं कि हम लेवल पे करने वाले, ठीक है ना, तो वहाँ पे और ज्यादा बिजनेस होगा। तो हमें इसमें थोड़ी सी मार्केटिंग को शामिल करना पड़ेगा। और हर 2 साल के बाद हमारा ये इवेंट होता है। मैं थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो माशाल्लाह हमारी ट्राई सर्विसेज इवेंट है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं क्या क्या, लेकिन अच्छे डिसीजन आने चाहिए, सेक्टर से आने चाहिए। और अगर आप मार्केटिंग की दुनिया का बड़ा नाम है तो जरा थोड़ा सा आइडिया तो दें आइडियाज को। सर आइडिया मैंने बताया ना आपको कि वर्ल्ड वाइड आपको मार्केटिंग नहीं है, और उसमें जो टूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया है कि जो एम्बेसडर्स हैं वो वहाँ बात कर सकते हैं, उसके हवाले से ब्रीफ कर सकते हैं, छोटे छोटे वहाँ इवेंट्स कर सकते हैं, तो ये बहुत बिजनेस बढ़ जाएगा। सर एशिया का सबसे चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है आइडियाज, या 4 या 5 बड़े इवेंट्स में से एशिया के हमारा इवेंट आता है। तो क्या हम बाहर से आ सकता है इस सिलसिले में? बिजनेस बाहर से आ रहा है, ये जो कंपनीज आई हो रहे हैं, जो B2B सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये बाहर ही की हैं। और जाहिर है कि हम लोकल मार्केट तो भी नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो इंटरनेशनल मार्केट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम प्रॉपर करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। वैसे तो बहुत होता है, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और हमें फख्र होना चाहिए इस बात पे कि इतना शानदार इवेंट है। और मैं तो पहले भी आपको कहा कि तो मुबारकबाद दूं पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, जहाँ इवेंट उन्होंने किया है। तो इस पर और बेहतर तरीके से मार्केटिंग की जाए। इवेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर पूरा इंटरनेशनली मार्केट है तो हमारा बिजनेस है ना वो 100 टाइम और 100 टाइम बिल्कुल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा। ये बाबर भाई की डिसीजन बहुत जबरदस्त है। खालिद भाई, अब जैसे मैं ओवेस की फील्ड देख कर आया, उसमें मोस्टली जो पाकिस्तान की होती है कुछ दीगर ममालिक से मंगानी पड़ते हैं। इसी तरीके से आपसे बताया कि कुछ स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होते जो चेचेस की आपने किया, मुख्तलिफ गियर बॉक्स वगैरह चीज़ें होती हैं। ये जो इम्पोर्ट बंदी लगी हुई है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नहीं? हमारा कोई खास इम्पोर्ट नहीं होता, हमारे आइटम सस्पेंशन है नॉर्मली वो ट्राइंग कि हम यहाँ डेवलप कराएं। हम यहाँ पे एक है लांडी इंजीनियरिंग, जो सस्पेंशन में कमानी हम बाहर से मंगवाते तो हमने उनके सेट मंगवाए, हमने उसी हिसाब से उनको बोला कि जी इसी वेट के हिसाब से इसी थिकनेस में और इसी साइज में हमें बना कर दें। वो एक चीज़ इंपोर्ट करते थे, हमने वो छोड़ दी, हम यहाँ डेवलप करा रहे हैं, यहाँ से यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। ग्लास में हमने कोशिश की, यहाँ पे एक लाहौर में कोई हैं ग्लास वाले, उनसे हमने ग्लास मंगवाया, हमने GH को दिया, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है यहाँ कोई इदारा नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी में बाहर अगर हम करवाना चाहते हैं तो हमें जर्मनी में इदारा है, बाहर यूरोप में है, बहुत सारी जगह है, वो हम हमारी गाड़ी को प्रॉपरली टेस्ट एंड ट्रायल ब्लास्ट फायरिंग सब कर देते हैं। हमारे सिर्फ एक इदारा है, वो है HQ मिलिट्री ऑफ आर्मी, वो हमारा स्टील ग्लास जो है वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा स्टील होता है उसकी हम हार्श टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि 500 में कार्बन होता है, स्टील ना होता है जस्ट लाइक 6.3 mm, वो आपकी G3 के ब्रश क्लैश ऐसे रोक लेता है जैसे नॉर्मल रिबाउंड होती है, नथिंग लाइक दैट। बट उसकी फिर हम यहाँ से नस से NED से इंडिया से उसकी जो केमिकल है उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी चीज़ें वो चेक करते हैं। हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने को। टेस्टिंग के लिए हमारे पास NED है या कुछ और भी है? नस्ट नस्ट लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से भी हम बुलवाते हैं। एक्चुअली हमने अपने पास इस वक्त मेरे पास 3 से 4 इंजीनियर हैं। हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, दिस केमिकल के इंजीनियर है, हमारा इन हाउस लेजर है। साहब ने रूम दिया जी आर्मर हमने बना के दी। हमने पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑफिस घर हमसे आर्मर करवाए। उससे वो है हमारा उससे लेना देना, लेकिन हम एक पार्ट कंपनी है उसको साथ रखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हमारी वो हेल्प करती है, हेल्प आउट। सो वी डू एवरीथिंग। हम जिस स्पीच के लिए बिस्टर में वो हम बना रहे हैं और वो हम B7 तक बना रहे हैं, जिसमें AP बुलेट भी नहीं जाती। मतलब जो भी स्नाइपर है जो करना है कर ले, the bullet will not cross steel and glass. We do everything, win, और हम लोग करते हैं माशा। लेकिन द पॉइंट तक अब आइडियाज के लाए और आइडियाज के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपका आइडियाज आइडियाज का 2012 में आ रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं था जो 2 साल पहले था, उसके टीम हो प्रीवियस से बेहतर हो रहा है। ये मेरे मुल्क का एक इवेंट है, चेहरा है सर, बहुत ये मुस्बत हमारी चेहरा एक जाता है। पहचान है।
और इससे ये नहीं है कि वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हियर। अभी मुझे इस दफ़ा इंटरनेशनल मार्केट से हमारे बहुत सारे मुल्क हैं, उन लोगों के उनके एम्बेसडर्स भी आए हैं, उनके मिनिस्टर्स भी आए हैं। उसी मुल्क से कोलैब हुआ कुछ कुछ बनाने जी के है लिए फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह, में? मेरे पास लीबिया से, अज़रबैजान, ड्रीम कंट्रीज, उनसे उन्होंने हमसे ऑर्डर्स के लिए हमारी उनसे बातचीत चल रही है। ये एक दिन के लिए होता है, इसके बाद बिजनेस सीजनल होता स्टार्ट होता है, एंड देन दे विजिट अस एंड गो देयर व्हाटएवर द मीन्स आर देयर। बट दिस इज द पॉइंट कि ये एमुनिशन का हुआ है, इट इज नॉट फूड फेस्टिवल। सो मेरा ये कि आप दुबई में होते हैं, फूड वाले में फूड होगा, वैसे ही होंगे। पूरी दुनिया में 62 होते हैं ये आर्म्स एंड एमुनिशन के आप जाते एग्जीबिशन, हैं? 62। उनमें से ऑलमोस्ट 48 में हमारी जो प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन कंपनी है होती है। पार्टिसिपेट करती है। मैं 10 या 12 में जाता हूँ। यूके है, फ्रांस में है, जर्मनी में होता है, लंदन में, अबू धाबी में अलग है, दुबई में अलग है, थाईलैंड में, जापान ने शुरू किया पिछले 1 साल से। वो नहीं करते थे एमिनेशन और इस पे, बट दीज बहुत सारे मुल्क हैं। टर्की में होता है, यूरोपीय यूनियन में होता है, जो दूसरी कंट्रीज हैं साइड, अमेरिका में होता है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड गुड लक टू दिस गाइस। और ये नहीं कि अगर मुझे नहीं होता तो मैं प्राइवेट में, मेरा सबसे लार्जेस्ट स्टॉल है और मेरे शुरू से अभी तक सबसे लार्जेस्ट स्पेस स्टॉल मैंने इनसे लिया है, ऑलवेज फ्रॉम आइडियाज। बिल्कुल ठीक है। वेद भाई, वेद भाई, ये जो पहला सवाल तो मेरा यही था कि जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगी है, ये कितनी टिकल के लिए हो है? कोई प्रॉब्लम क्रिएट है आपके इस एनर्जी सेक्टर को? There are problems around it. You talk about the solutions. पाकिस्तान की इकॉनमी की सस्टेनेबिलिटी, जो खालिद भाई ने प्रैक्टिकलिटी की बात की, प्रैक्टिकल बात की, वो उसमें लाइज करती है। हाउ क्विकली वी अंडरस्टैंड दैट हमें इंडिजिनाइजेशन ऑब्वियसली हमें है द पॉइंट। इन्होंने कहा इनको 5-6 साल लगे अपनी सुटेबिलिटी करने के लिए। आज मैं वो अगर किसी ऐसी स्टेट और इंटरेस्ट के पास आता हूँ, मुझे वो जो $1 का यहाँ पे कर सकता हूँ, वो इंडिजिनसली वो उस सर्टिफिकेशन करने के लिए मुझे $1 million का करेगा। अब दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू पे $1 million rather to give a differential of $900,000 to bring my capacity up. So the one again has to be, and जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कि I'll talk also on blunt कि पॉइंट ये कि हमें अपनी कनेक्टिविटी को सही करना है। हम प्रोग्रेस वो कर ही नहीं सकते जब तक कि मैंने आपको कहा ड्राइंग रूम्स में बैठ के हम अपनी पॉलिसी और बिजनेस प्लान बनाएं। वी नीड टू बी प्रैक्टिकलिटी इन अ वे कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक एलसी, आपने एलसी की बात की, आई डोंट वांट टू कोड इट, मैं कोड भी कर सकता हूँ। सुबह इन द स्टेट आई वाज टॉकिंग विद समबडी एट द सीनियर लेवल, ही वाज सेइंग कि जी फलाने की एलसी नहीं खुल रही। Just imagine, just one example, the state of affair of this country, which you and I need to change, is कि एक मोबाइल इंपोर्ट की जो कि नॉन एसेंशियलिटी का आइटम है, उसकी एलसी खुल रही है अगेंस्ट वन एलसी कि वो वेसल पोर्ट में आएगा जो कि पोर्ट एफिशिएंसी के मुताबिक, जब इन्होंने कहा ना $1,80,000, एक हमारा एलएनजी का वेसल आता है, उसकी हैंडलिंग पे खाली $5 लाख की उसकी हैंडलिंग है, entering in the port, outering in the port, which is going to the third party, which मेरे और आपकी सेहत पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It's so that thing is pending for opening an LC for the last 6 months कि हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है। So with that said, और as again, अभी अगर हमारी आंखें नहीं खुली, just to give you an input, जैसे हुसैन बताया, what are the tools and the tech का प्लेटफॉर्म है जी। एक बांग्लादेश कंपनी, आई डोंट नो हमारे बाकी दोस्त एक्सपोज हो, बांग्लादेश जैसा मुल्क, एट द वन एम्बेसडर दिस मॉर्निंग ही वांटेड टू बी आउटसाइड दिस, ही वाज सेइंग कि जी, मैंने कहा यार ये आइडियाज है, वी शुड विजिट इट एंड प्लान। ही सेड यस, बिकॉज वी यूज्ड टू डू सम गैस बिजनेस विद देम 2011 में, जस्ट टू गिव यू अ 30 seconds एग्जांपल, कि 2010 में उनकी with this current, you know, Vietnam, Myanmar have a various issues which we had it. Only difference we have that they have a 20 million population and we have a 24-40 million population, which is our strength. What it is कि उसमें उनकी 2011 में मैंने कहा जब यूके, तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट थी अराउंड हमारी जितनी थी, which is 2-3 billion 2009-10 में, and they are much deficient in the energy resources of it. जैसे today he said, मैंने कहा जी हम we have a largest event जैसे आपने कहा, and the effort is there for this to Vietnam, a country, how much their export is and what is the marketing Turkish ambassador Vida line with $350 billion is their export, which is
on that where and हमारी कितनी export है. I don't want to say this, you have the numbers in this. अगर आप 10 से हमारी मुल्क का सर्वाइवल ही ये है कि अगर इधर हुसैन मार्केटिंग जैसे लोग हमारी माइनिंग की डिक की एग्जांपल इंडिजिनाइजेशन ऑफ भाई इनके पार्टनर उडियल है विच इज टोयोटा इंडस से ये भी ड्राइव हुए ना व्हाई यू वांटेड टू हैव इट एक जापानीज आई डोंट वांट टू मेक अ कमेंट अबाउट इधर हर चीज का टेंजेंट गलत है इवन आई नो लिटिल बिट ऑन इंडस फॉर्ड और जो हमने काम किया है कि वी नीडेड इस चीज में हमारा सर्वाइवल ही नहीं है जब तक कि हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होती एंड पीपल लाइक हम चलें या खालिद भाई जैसे लोग मोबिलाइज नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं कर सकती वॉट एवर द पॉलिसी वी विल ब्रिंग इन टू दिस कंट्री so this is a situation on unfortunately now and ever and in the last the most important thing which matter कि you bring the people the vision and vision comes with the right people for right job which is grossly missing in our unfortunately थोड़ा सा बहुत अच्छी अवैस की बातें थी उनमें मैं जो एक चीज़ अपने मुल्क में देखता हूँ एज ए पाकिस्तानी अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही नहीं शॉर्ट टर्म प्लानिंग आज का लोग कल खा लिया उठ गए सो गए सुबह भीख मांगने चले गए कल का कोई पता नहीं रोटी पानी दाल है या नहीं क्यों नहीं इसके जो यहाँ इन्होंने इदारे इतने सारे बने हुए वो अपना राइट टाइम पे अपना सही अपना मकसद अब काम करें दुनिया में यानी इट्स इन अमेरिका अब्रॉड एवरीवेयर दे कीप एवरी नोट एंड एवरीथिंग पॉलिटिशियन प्राइवेट पीपल एवरीवेयर तो है ना सर उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस है कि आज हम क्या के बारे में सोच रहे हैं लंदन में पुलिस वेपन लेके नहीं घूमती वारदात होती चीजें होती है कहते लिफ्ट में कहाँ से निकला सिमिलरली दुबई लिफ्ट में कहाँ से निकला किस गाड़ी में बैठा पार्किंग से एग्जिट गेट पे हर जगह उसको चेक होता है एवरीथिंग अब तो देखे ना हम थर्ड टेक्नोलॉजी में ये कहते हैं जो मोबाइल का देखते हैं अच्छा मोबाइल का मेरा टावर बताएगा वो टावर जो आपका है सिविक सेंटर में मैं यहाँ बैठा हूँ दूर है बट वो आपको यहाँ से निकलते हुए बाथरूम में आते हुए निकलते हुए देखते सारा कुछ वो करते हैं लेकिन इन लिमिटेशन वो आपको चेक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तरीके वेपन नहीं लेके घूमते पर यहाँ का ये है कि हमारे यहाँ जो जिसने काम करना है करेगा जो इन्होंने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब बिल्कुल सही और वो लोग जो प्रैक्टिकली मेरा इस एग्जाम का देने का ये था इदारों के बारे में भी कहने का था यार जो 10 साल पहले से खा रहे थे उस वक्त आप थे ना यहाँ पे आप क्यों सो रहे थे मेरा देखो ना पैसे तो पॉलिटिशियन खा गए आवाम मर रही है ना इसमें ओपनली जिन्होंने खाया है वो इस मुल्क में फिर रह रहे हैं और फिर खा रहे हैं बिल्कुल गरीब से गरीब तर हो रहा है अमीर से अमीर तर और मिडिल क्लास है वो भी नहीं में आ गई है तो मतलब कि अवाम पब्लिक का नहीं है एवरीवन इज लुकिंग फॉर देयर ओन बिल्कुल जब आप अपनी ओन खत्म करोगे कि नहीं मैं मुल्क के लिए सोचूंगा तब जाके मुल्क तरक्की करेगा ये मैं अपने लिए मुझे ये चाहिए नहीं करना है नो वे आपको सबके लिए सोचना होगा तो कोई फायदा होगा बाबर भाई आप सम अप करेंगे बस इतनी सारी तो हमारी गुफ्तगू हुई है सम अप आप करेंगे सर सारी बातें हो सकता हूँ और सबने बातें की वैस भाई ने भी और खालिद भाई ने भी और आप मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने किया सिर्फ फन लाइनर कहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन थी और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा खुशहाल रखे पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज पाइंदाबाद ठीक बाबर भाई साहब थैंक यू वेरी मच खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई यहाँ इजाजत लेने का वक्त है ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की मईशत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर मुख्तलिफ सेक्टर्स में लेकिन ये जो भी बात कह के गए वो अपने दिल से कह कर गए क्योंकि ये अगर स्टेक होल्डर हैं अगर हम अपने स्टेक होल्डर्स की मदद नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं में मसाइल होंगे तो फिर जो भी इन्होंने बात की एट द सेम टाइम एक ही पेज पर ये दिखाई देते हैं तमाम बातें करने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद मुल्क के लिए है और कुछ नहीं करना है जल्द फिर आपसे मुलाकात है नसीम खुद अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता ही मिल रहे हैं फिर आपसे जल्दी चल रहे हैं आने के बाद
फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 11 a.m. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B actions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Secretary Ministry of Defence Production, Lieutenant General Retired Humayun Aziz Halal Imtiaz Military, Representative of Armed Forces, Diplomatic Corps, think tanks, public and private defence enterprises, academia, media. Distinguished foreign guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of Defence Export Promotion Organization, I am honoured to host our worthy guests and participants who have joined us from within the country and abroad. I am pleased to welcome you all on this seminar. It is an honor to host you to reflect and interact on a topic of incredible significance among the gathering of brilliant, enlightened minds. I hope this endeavor would facilitate a meaningful debate on an issue that has earned critical significance for strategists, policy makers, and the common masses alike. It is indeed a privilege to have an expert panel from Pakistan and abroad who have traveled to share their insight and foresight. I thank the galaxy of scholars and welcome you all again as we are to enlighten on the topic Artificial Intelligence in Defense Market, a paradigm shift in military strategy and national security. Ladies and gentlemen, the invention of new technologies, globalization of the weapon system, and public-private ventures have greatly influenced the defense industries worldwide. Now, with the technological advancement in the field of artificial intelligence, many new opportunities are coming up. AI is on a developmental trajectory and will be utmost importance in any future war or future strategy. It promises to fundamentally change the way people live, work, and interact. In general, as technology grows more useful, demand grows in turn. This principle will perhaps never be truer than with artificial intelligence, given the rapid and dramatic progress it has ushered in different areas such as military strategy, security, and almost all walk of life. The aerospace and defense sector is responsible for the bulk of development of autonomous military systems. The growth of the market for artificial intelligence in the military sector can be attributed to the increasing investment in the field of artificial intelligence. AI has a very serious implication for national security and defense organizations, and many nations are investing heavily in developing AI applications for the range of military functions. Artificial intelligence research is underway in the field of intelligence collection, analysis, logistics, cyber operation, information operation, command and control, and for use in a variety of semi-autonomous and autonomous vehicles. In fact, AI has already been incorporated in the real world many operations globally. Almost all of the defense leaders believe that AI will be extremely important to their organizational strategy in times to come. Artificial intelligence, robotics are playing a significant role in many defense applications. Robots given by artificial intelligence can be traveled through dangerous areas, perform remote operations,
and most importantly perform the surveillance mission in impossible areas. Lastly, I would say that building awareness of the use of AI is important in the present time. This seminar has provided a great opportunity for all the stakeholders to evaluate the whole domain of AI and its impact on defense market and national security paradigm. I am certain that the avenues of collaboration and a way forward identified by the experts and AI stakeholders who are sitting here will greatly facilitate increasing the defense cooperation among the friends and the partners. I thank you. Thank you very much for your presence. जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है
वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा।
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers B2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. My name is Abdul Basit, and we are exhibiting in Ideas from the platform of K Electric. K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar, and from the platform of K Solar we are offering solar solutions for our commercial industrial users. In these solutions we have multiple models for our industrial and commercial users, which include power purchase agreement. In this solution, all the assets belongs to us, and we are going to deploy it on the premises of our user, of our industrial user or commercial user. In the solution, the customer don't have to pay any upfront costs. They only have to pay the monthly energy bill, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the first solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of deferred EPC payment. This is one of the viable option in which the client doesn't have to pay an upfront cost for their system. They have to pay the capital cost in terms of an installment for the defined period of time. And the third solution we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are the three options available for our users. And in all of our solutions, we are committed to quality, and we are not going to compromise in quality. And if the users is getting solution from K Solar, so what we are offering is one window solution for our users from survey till the commissioning of the system. Only you have to contact K Solar, and we will gonna give you one window solution. You don't have to go anywhere else for any other services. We are going to do the survey, we are going to do the designing, we are going to do the installation and commissioning, as well as we are going to do the all preparation related to the net metering application, and we will help our users to get the generation license. And once the license is arrived, then we will going to install the energy meter, which will be done by our other department of K Electric, net metering department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And in last, I just want to thank the exhibition, the organizers. It's a really good experience over here, and I wish them a very good luck. It is indeed a matter of great pleasure to see the International Defence Exhibition and Seminar, more popularly known as IDEAS, gain strength passing year. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years, and I feel satisfied to see Pakistan's achievements in a relatively new ground for us. Over the years, IDEAS has become a meeting place for defence experts, high-level defence delegations, and trade visitors from all over the world. This rendezvous IDEAS provides excellent opportunity to develop understanding and networking of defence trade for trade and joint ventures, and more importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges being faced by the defence industry. I should say I'm very proud of the progress which IDEAS has made, and which is evident by an overwhelming participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors last 5 years held in year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle hardened
and known for their professionalism the world over. Our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are now gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-track missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, and aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Honorable guests, holding of IDEA is a reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures. In addition to indigenous production, having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of IDEAS 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to IDEAS 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, mind of life. ठंडा ठार पियो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नींबू पानी आपके लिए बहुत जरूरी है और जो ये तमाम चीजें मवेशी मंडी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के इंतजामात भी यहाँ पर मौजूद है। ठंडा ठार पिए, नींबू पानी, मुख्तलिफ शरबत, जूसेस, हर चीज़ मौजूद है। और अगर आपको कोई पकोड़े, जलेबी, समोसे शाम के वक्त खाने का मूड हो तो हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर दस्तयाब है। बहुत सारी चीज़ें, मुख्तलिफ स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर आपको छोटी मोटी परचून की दुकान भी आपको अवेलेबल होगी। तो मवेशी मंडी में हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi, yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1911, PX9 polimer silahımız
mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport FK modellerimiz de mevcut. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The fourth exhibition offers a platform for G2G, 2G, and 2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum, I'm Wasif Rahman. I'm GM Corporate and Defense Sector of Innotech. Innotech Pakistan Army के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा स्टॉल है and this Ideas exhibition is an amazing experience. मैंने पहले तो एज अ विजिटर बहुत एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, बट एज अ विजिटर इट इज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस. और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने जिस तरह काम किया है दिन रात, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग. Ideas is such a wonderful platform for networking. दुनिया भर से लोग यहाँ पे आए हैं. हमारे स्टॉल के ऊपर दुनिया भर के लोगों ने, स्पेशली मिडल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है कि मिलिट्री फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है. एंड वी आर रियली होपफुल कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये आइडियाज़ जो है एक बहुत लकी जॉब साबित. एंड टू टॉक अबाउट माई कंपनी, वी आर Innotech, we're a technical IT solutions providing company. We deal with all sorts of IT solutions, may it be ERP, may it be cybersecurity, may it be data center establishment and management, may it be software development, application development. You can name anything: hospital management system, hotel management system, tourism management systems. You name it and we do it. So this is the right platform. We have a strong base of 650 plus highly qualified and experienced colleagues जो कि दिन रात काम कर रहे हैं. दे हैव पुट अप वंडरफुल शो. हमारा एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है विद द नेम ऑफ AI बेस्ड ऑटो स्टीम सोल्यूशन. इसका कस्टमर हमारा जो है, इट इज़ अ मल्टी टिलियन डॉलर कंपनी नोन एज अरामको इन सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी टेलीकॉम इज ऑल्सो आवर कस्टमर. एंड वी विश कि इस किस्म की एग्जीबिशन जो है वो बैंड की जगह 2 साल की जगह हर साल हो.
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in the defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद मेरा नाम है, मैं बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉरलैंड ट्रक डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम ईएन सर्टिफाइड भी हैं, सी सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है हम। और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोयोटा हाईएस हो, वो आपके पास कोई फायर ट्रक है या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, या देख रहे हैं हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ के ऊपर बाइक ये लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंसेज भी हैं और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है। इन सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint venture and investments in defense production sector. A strategic seminar will also help to facilitate discussions on new challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hardware needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. First in Pakistan, who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zori, Trax, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it.
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, and 2D actions, joint ventures, and investments in the defense sector. A security seminar will also facilitate discussions on global challenge within the defense sector. The 12th edition of IDEA will held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। तो फिर तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद होने वाले आइडियाज 2022 आज ख़त्म हो जाएगा। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा फिर दिखाई दिए, रिकॉर्ड जितने भी एग्जिबिटर्स थे वो भी दिखाई दिए, कई कंपनीज यहाँ दिखाई दी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के माशी हालात बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज ने ऐसी प्रोडक्ट रखी कि जो आने वाले वक्त में रोज़गार के मौके भी फराहम करेंगी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ज़रूरत बनेगी। इस तरह हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं, ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें हमारी फोर्सेज ने कई ऐसी नई चीज़ें रखी हैं कि जो काबिल दीद थी, और जितने भी इंटरनेशनल बंदूक यहाँ आए हुए थे, जितने भी डेलीगेट्स थे, वो खासे मुतासिर हुए और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। दो इम्पोर्टेंट शख्सियत जो स्टेक होल्डर हैं इस आइडियाज़ 2022 के, इन्होंने अपनी कैसी इनकी यहाँ पे इस साल अगर मैं बात कर लेता हूँ, यही इस आइडियाज़ 2022 की बात कर लेता हूँ, तो कैसा रहा इनके लिए बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मिस्टर सईदुर रहमान, ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है कस्बा इंडस्ट्रीज के। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़हूर सरवर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के रुकन है, जबकि इनकी अपनी कंपनी सरवर इंजीनियरिंग हाउस ये भी ज़बरदस्त का काम कर रहा है। इनसे ज़रा बात करेंगे कैसा रहा आइडियाज़ 2022। सईद साहब कैसा रहा, सवाल सिंपल सा, आइडियाज़ 2022। बेसिकली आइडिया 2022 को हमने इस्तेमाल किया है कि हमने अपनी प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च किया, क्योंकि हमारी नई कंपनी का नया सेटअप था, तो हमने इस भरपूर शिरकत की है कि हमारी लॉन्च अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम अपनी प्रोडक्ट बारे में बता सकें और उनको अपने बारे में बता सकें ये कंपनी नई शुरू हुई है। बेसिकली हम एक्सपर्ट हैं एयर डिफेंस वेपन्स की डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और क्वालिफिकेशन के। ये सब हम नया इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी चीज़ को एक स्टेप आगे लेके ना जा रहे हैं कि हम इन सारी प्रोडक्ट्स को सीरियल प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं। उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम लोकल वेंडर को ही इस्तेमाल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड काम करें कि सारे मैकेनिकल आइटम पार्ट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं सारी हमारे लोकल वेंडर्स बनाएं और हम उनके साथ इंगेज हों फुली, ताकि हम क्वालिटी एस्पेक्ट को रखें और हम अपने सेटअप में उन सारे पार्ट्स को लाके उनकी फाइनल इंटीग्रेशन अपने हाथों से। हमारे अगर प्राइवेट सेक्टर में करता हूँ तो हमारे इंजीनियर्स हैं। जी बिल्कुल, आप मतलब ये काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो काफ़ी इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जो इस गैप को पूरा कर सकते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं और उनको हम इन वेंडर्स की प्रेमिस पे डिप्लॉय कर देते हैं और उनके साथ हमारे क्वालिटी के लोग भी आ जाते हैं, ताकि हम उनका लेवल, उनका वो जो प्रोडक्शन की वो है फैसिलिटी, उसको इतना एनहांस करें कि वो एरोस्पेस ग्रेड चीज़ों के काबिल हों और उसको आगे लेके चलें। उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि हम उनको ड्राइंग के साथ, क्योंकि क्वालिटी के लिए सबसे पहला काम है कि जो मटीरियल उनके पास आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है, हम उसको कैसे लेके ट्रेस करते हैं, फिर उसकी जो आगे फिर मशीनिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको किस किस स्टेप पे हमने क्या चेक्स करने हैं, तो कैसे लेके चलना है। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें हमसे कम होती जाए आहिस्ता आहिस्ता, उतना वो फ़ायदा है
कि हम आखिरी स्टेज पे, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आखिरी स्टेज पे आके ही हम उनको चेक करें और बाकी सारी उन्होंने ट्रेसिबिलिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई हो ताकि हम उसको आगे ले चलें, क्योंकि एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के साथ हमें एक स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है, जिसके लिए जो कस्टमर या एंड यूज़र को जो चीज़ जाती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जाती है। और जितनी ही इंपॉर्टेंट या ज़रूरी ये प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी वैलिडिटी और उसकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत आम है। तो हमारी बिल्कुल हमारी ये जरूरत आपके पास सही साहब, जरूर साहब, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी का आप रुकन है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए भी आइडियाज 2022 कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना लर्निंग प्रोसेस होता है, और खासकर अगर जो इनका एक इंटेलिजेंस के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे कोई रिलेट करता है? जी बिल्कुल कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस पे पार्टिसिपेट किया। आके आइडियाज़ में बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल इवेंट उसमें सबसे बड़े इवेंट्स में से कंसिडर है। ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स आई हुई हैं और हमने कोशिश की इस स्टॉल में, हमने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को उठाया जो पार्ट्स आ रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए, और इस एक्सपो में बहुत ज़्यादा मौका मिला। खुद पर्सनली गया, ढेर सारी नेशनल फर्म्स बैठी हुई, मैं उनसे मीटर किया आया, उनको कहा दिया कि कोलैबोरेट करें, जिस किस्म पार्ट आपको पाकिस्तान लोकल इंडस्ट्री से चाहिए आप मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बहुत कैपेबिलिटी है सर। हमारी मुल्क से बनने वाले ऑटो पार्ट्स खास तौर पर 70 से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और बिलियंस की एक्सपोर्ट है सर। ये कोई छोटी एक्सपोर्ट नहीं है, वेरी बिग एक्सपोर्ट। इवन BMW, जैगुआर, इस तरह की गाड़ियों के पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, वो ज़्यादातर सिविल गाड़ी से रिलेटेड है। तो हमने इस आइडियाज़ का फ़ायदा उठा के उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के साथ भी लाने की कोशिश की और उन इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं उसके भी करीब लाने की कोशिश की। इट वाज अ मार्वेलस अपॉर्चुनिटी एंड वी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है। सईद साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि यहाँ पे आप एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मर्जर हो रहा है। अब पहली मरतबा आपकी शिरकत हुई है, तो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कोई मर्जर हुआ? अगर मैं लोकल से हट के बात करूँ, इंटरनेशनल कंपनीज में ये कि हमारे एंड यूजर्स काफ़ी है। मिडल ईस्ट मार्केट है जिसको हम फोकस किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी काफ़ी वहाँ कॉन्टैक्ट्स और एस्टैब्लिश हुए। काफ़ी डेलीगेट्स ने हमारे स्टोर पे हमें विजिट किया। इनफैक्ट एक ये होता है कि पाकिस्तान को उस तरह करना कि इंश्योर ना कि उनको ये पता लगे कि ये वाकई कैपेबिलिटी है हम में ये डिलीवर करने की और बनाने की, तब वो आते हैं। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, और इवन यहाँ तक है कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हमारे साथ जॉइंट वेंचर करके और उसकी जॉइंट डेवलपमेंट में वो हमारे साथ करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता लगा है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, तो वो काफ़ी वो था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम डिफरेंट सर, लेवल डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लेवल डिफरेंट होता है। कोई कस्टमर, कोई एंड यूजर, पहला सवाल उनका ये होता है आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या ये डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल है तो उसकी कैपेबिलिटी और उसकी हमारी क्रेडिबिलिटी और वेपन की और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी का बहुत फर्क पड़ा है उसमें। टू बी ये आइडियाज 2022 करार दिया जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस कई सारे MOU यही इस कमरे से बाहर अगर हम चले जाते हैं तो यही साइन हो रहे हैं। तो वो जितने भी MOU जितनी कंपनीज के साथ सही साइन होते हैं, आप अभी कोई रास्ता बना और मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? मईशत के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वो आप डुअल रोल हो रहा है कि अगर आप जितनी आप प्रोडक्शन या इसकी चीज़ें आप पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान लेंगे, तो इसका मतलब है वो सारी प्रोडक्ट या वो सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है आपको डॉलर LCs खोलनी पड़ेंगी, वो डॉलर्स का होता है, वो आपका ज़र मुबादला वहाँ जाएगा। फिर जब यही चीज़ यहाँ से डेवलप होकर एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला वापस आएगा, वो आपको इन टर्म्स ऑफ हार्ड क्या होगा, तो वो काफ़ी आपका पड़ता है। और उससे ये होता है कि और एवेन्यूज़ खुलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ते हैं। तो ये मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रही होती है। और इसमें ये हुआ कि जैसे सर कह रहे हैं, मैंने भी हमने हमारी ये कोशिश थी कि एक तो एस्पेक्ट ये था कि हम एंड यूजर को देख रहे थे, लेकिन हम लोकल वेंडर्स को भी तलाश कर रहे थे। कॉम्प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर हमें नजर आया या कोई मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर नजर आया, तो हमने आके ज़रूर 1-to-1 बातचीत की है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं। और ये हुआ है कि इससे ये हुआ है कि कम से कम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया। अब मैंने सबको यही कहा है कि मैं आज इंशाल्लाह वापसी होगी तो मंडे से हम ये कांटेक्ट हम पूरी एक शुरू करेंगे, हर बंदे के साथ बैठेंगे कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है,
और क्या वो इसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक अच्छा आइडियाज़ उस लिहाज से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है कि हमें काफ़ी मतलब एंड यूज़र के अलावा लोकल वेंडर जो हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है उसके लिए हमें लोकल वेंडर्स यहाँ काफ़ी नज़र आए हैं जिनमें वो पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ें बना सकते हैं। तो कह रहे थे कि जैसे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो ऑटोमोबाइल के भी स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट उतने ही स्ट्रिक्ट या वो हैं कि जितने हमें एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। तो वो वेंडर्स अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनको डाइवर्स करना चाहेंगे कि वो इस तरफ आएँ और हमारे साथ कोलैबोरेशन है ताकि हम ये काम कर सकें। ठीक है जब आइडिया बहुत मिलते हैं बिजनेस के लिए आइडियाज आने के बाद। तो जिस तरीके से अभी सईद साहब ने बात की कि कई सारे आइडियाज मिले, हालांकि उनसे रिलेट कर सकता है जिनके बारे में पहले पता भी नहीं था। अब वो लोग कहाँ तक इनके लिए करामत साबित होंगे, वो मंडे से काम शुरू हो जाएगा। जिस सईद साहब ने कहा कि 4 दिन खत्म और काम शुरू हो गया, आप प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। आज थ्योरी या जितने से वो बंद हो गए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई देती है और वो ये है कि दुनिया जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है उसमें रेट्स बहुत काउंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत काउंट कर रहे हैं। अगर हम उसकी अपनी चीजें भिजवाए ज्यादा तो हमारी अफ्रीका ममालिक में जा रही होती है, मिडल ईस्ट में जा रही होती है, क्योंकि फ्रांस ये बायर ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रेट्स ही बिल्कुल अलग होते हैं। चाहे हम इन्हीं ममालिक में इनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हम उस कंपटीशन को प्राइस वाइज मैनेज कर लेते? मैं जो गवर्नमेंट आ रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अपील की और आपके वसत से फिर ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि आप हर दफ़ा जो $250 की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में अगर आपको $50 मिल जाती है और उसी क्वालिटी की मिलती है तो आप एक्सपोर्ट की तरगीब तो बाद में दीजिएगा, इम्पोर्ट पर तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना कि लोकल बन सकती है और आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे कर रही है, तो फिर आप इम्पोर्ट क्यों करते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है। नहीं सर, नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम इम्पोर्ट में लगातार लगे, हम हर चीज़ इम्पोर्ट में लगे हुए हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यही हालात है, जो वही वो भी यही करते हैं। सेगमेंट इदारे भी सर मैक्सिमम इम्पोर्ट पे चल रहे हैं हमारे, और हमारा सबसे बड़ा डिलेमा यही है कि जो बाहर की आई हुई चीज़ हो ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जो पाकिस्तान कराची में बनी है या लाहौर में बनी है वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कुछ ऑफिसर से रिक्वेस्ट उन्होंने कहा नहीं जी हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। मैं कहा जी कराची एरिया में बैठ के हमारा एक लोकल मैन्युफैक्चर बोइंग के इंजन पार्ट्स बना रहे हैं, वो सिंगल सोर्स है 10 साल से दुनिया में, उसके अलावा वो कोई पार्ट नहीं दे पा रहा उस प्राइस और उस क्वालिटी में। यानी हमारी एक कंपनी है, मैं उस बात कर रहा हूँ, 10 साल से दे रहा है कराची में लांडी एरिया में बैठे हुए हैं सर, और वो बना के बोइंग को दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे नहीं ले रही, और बहुत से ऐसे पार्ट है जो पाकिस्तान से भर के जर्मनी जाते हैं, उनके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा जा रहा है, फिर हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा वो पार्ट इंपोर्ट करती है, बनते वो पाकिस्तान, जिस तरह हमारे कपड़े बन के जाते हैं बाहर से होके आते हैं। सपोर्ट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान बिजनेस। सर मैं ये समझता हूँ, जो इंपोर्ट को आ सके, मैं ये नहीं कहूँगा स्पोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये तो नहीं कहूँगा स्पोर्ट नहीं किया रहा, मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट के अदारों में जो सीनियर अफसरान बैठे हैं वो इस चीज़ को श्योर करें कि लोकल वेंडर से अगर पार्ट बन उसको इम्पोर्ट ना होने दें। ये कहने की बहुत अच्छी बातें हैं, कोई अच्छी बातें करता है, लेकिन जब इम्पोर्ट आप देखेंगे, आप दो डाटा को टैली कर लें, हमारी लोग जो बनी हुई चीज़ है वो मोटी क्वांटिटी हम समझते हैं कि बन नहीं सकती पाकिस्तान में, तो बस थोड़ा सा यही बनेगा। एक्चुअली बहुत कुछ बन सकता है, हमें एक बार मौका देना है लोकल वेंडर्स को। हम कहते हैं हमारे लोकल वेंडर को एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, उससे पहले आप खुद तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, उसके बाद एक्सपोर्ट में ले जाएगा ना। आप जो पार्ट बाहर से ले रहे हैं वो तो लोकल इंडस्ट्री से लेना शुरू करें, आपकी क्वालिटी मीट ना कि आप मत लें। लोकल इंडस्ट्री के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग काउंसिल की से मैं क्यों बात के बार बार करता हूँ कि हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सब कुछ कर सकती हैं, आप पार्ट दें, आपकी क्वालिटी का नहीं तो आप मत लें, अगर बन जाता है तो इम्पोर्ट ना करें ना। उसके बावजूद अगर हम इम्पोर्ट में लगे रहे तो हमारे हालात श्रीलंका से बहुत होने जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जरूर साहब ने, पैगाम आ गया जरूर साहब का। सईद साहब आपको भी पैगाम इस सिलसिले में मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं किया, तो फिर बुरे हालात आने वाले हैं, और अब भी उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। एक पैगाम आपका भी, आपका कैमरा है बिल्कुल, उसमें मैं आपकी बात को मैं ऐड ये करूँ कि एरोस्पेस इंडस्ट्री पार्ट के अलावा उसकी ना लाइफ साइकिल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो जो आप इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़, उसकी फिर वो जो वेंडर है इंटरनेशनल वेंडर, उसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट के भी आपसे इतने पे चार्ज करता है कि वो इक्विपमेंट से ज़्यादा उसके पैसे बनते हैं। तो अगर आपका लोकल वेंडर वो काम कर रहा है तो वो आपको बहुत कम उसमें सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो उसकी एक्सपर्टीज मौजूद होती है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसको आपको देखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो हो सकता है। और हम यही चाह रहे हैं, हमारी शुरू से ही यही कि हम लोकल इंडस्ट्री को और लोकल वेंडर प्रमोट करें, क्योंकि जितना वो प्रमोट होंगे और जितना वो अच्छा काम करेंगे उतनी हमारी सोर्सिंग बेहतर होगी, हमें चीज़ अच्छी मिलेगी और हम उसको आगे अपने ही लोग भरोसा नहीं कर रहे। मकसद वाली गवर्नमेंट अगर भरोसा नहीं करती है अपने वेंडर्स पे, ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क। सर हम लॉस तो काफ़ी अर्से से ये है कि हम लोकल वेंडर्स को लेके चल रहे हैं। हमारा शुरू से सेटअप था वो एक टोटली लोकल फोकस्ड R&D सेटअप था, ठीक है।
अब हम उसको प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भी उस सिलसिले में कि हम इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे। हमने जब भी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ गए हैं किसी भी पार्ट के लिए, तो हमने लोकल वेंडर्स और लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल हमने टारगेट किया है और उनको टारगेट करके फोकस करके, हमारे लाहौर में भी वेंडर्स हैं, पेशावर में हमारे वेंडर्स बैठे हैं, कराची में भी हम ये काम इन लोग वेंडर्स से करवा रहे हैं। तो अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉन्टैक्ट्स और बनाने, ये आइडियाज़ का हुआ है, मुझे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिले हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके और हम इसको लेके चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सईदुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जहूर सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियाज़ के इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट होते हैं और अब ज़ाहिर ये तमाम के तमाम बड़े स्टेक होल्डर हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन इनके मसाइल भी सबके सामने हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री को, लोकल वेंडर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका जितना मटेरियल है वो बल्क में अगर कोई ले सकता है तो वो सरकार ले सकती है, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसी सूरत में वो वेंडर्स मजबूत होंगे, तो ये लोग भी मजबूत हो रहे होंगे जितनी इंडस्ट्रीज है एट द सेम टाइम, तो फिर पहला पत्थर तो सरकार को ही फेंकना पड़ेगा। ये आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये आइडिया जनरेट होता आ रहा है। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाह रहे हैं आज दिन है। अगर मजीद कोई प्रोग्राम होगा तो आपके साथ मुलाकात करें। टिल देन, अल्लाह ने के बाद। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम इवेंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं डिफेंस प्रोडक्शन में उसको भी शोकेस करता है और मुख्तलिफ ममालिक को पता चलता है कि पाकिस्तान ने इस दिफाई पैदावार में कितनी तरक्की की है और सबको साथ जमा भी करता है। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो एलाइज हैं और जो ममालिक हैं पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उसे पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी उजागर करता है और कौम में भी हिम्मत मिलती है कि हम खुद कफील हैं और अपने दिफा को हम खुद कर सकते हैं, ना कि हमारा इन्हिसार कोई बाहर के मुल्क पर है। इस खित्ते का इमेज बड़ा ख़राब है, जंग, लड़ाई, तसादम, और हिंदुस्तान का इमेज जो है जहारियत का है। हमारा इमेज है अमन का, हमारा इमेज है लोगों को जोड़ने का, हमारा इमेज है बाहमी ताउन को बढ़ाने का, और ताउन का एक तरीका जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुलाना है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छे मुस्बत नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए भी और इस खित्ते के लिए। इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। कोई अगर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल। It's 12 p.m. IDEAS 2020 brings together stakeholders across diverse defense industries. The first exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate sessions global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. This is Faisal Hussain from JB Industries, and we are representing our JB Industries as a manufacturer and exporter in Europe, and covering most of the brands which namely like Everlast and many retail brands, and we are also in promotion of uniform business, and I'm working as a manager merchandise and marketing. Or we are here and we are very pleased to come over here and बहुत नेक्स्ट लेवल की एक हमें यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री इस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और हमारे प्रोडक्ट को लोग एक्सप्लोर करें ओवर सेवरल स्टेजेस. Our expo has done also very good out of their efforts, so keep it up. Thank you very much.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, पैदा किया उसी ने इंसान को। अल्लमहुल बयान, सिखाया उसी ने, बोलना उसको। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मग़रिबों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावुज़। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यख़रुजु मिन्हुमा लुअ्लुअ वल मरजान, निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरि कल अअलाम, और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, जो कुछ है इस जमीन पर उस फना होना है और बाकी रहेगी ज़ात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शानिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मांगता है उसी से जो कोई है आसमान में और ज़मीन में, हर रोज़ वो किसी काम में होता है। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे।
सनफ़ुरुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बोझल जातों, जिन और इंसान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू औ तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तानिन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए गुरोहों, जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ, तुम किनारों से आसमान और जमीन के तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के। कौन सी नेमत को अपने रब की तो झुटलाओगे। युरसिलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान, फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान, तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोज़ख के और खौलते हुए गर्म पानी के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने, उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान, तकिए लगाए हुए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नज़दीक झुक रहे होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथहुन्न
इंस क़बलहुम वला जान। होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। गोया वो हैं याकूत और मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। नहीं है जज़ा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? वमिन दुनिहिमा जन्नतानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे? मुदहाम्मतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाख़तान। उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान। इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसान। इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम। वो हूरें महफूज हैं खैमों में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे? लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान। ना छुआ होगा जिनको कि इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुलाओगे? मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान। तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहे अज़मत है और एहसान करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत खुशी है कि आइडियाज़ 2022 एक मरतबा फिर कराची में हो रहा है। इससे पहले कोई 11 के करीब हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आज इतनी इसकी ज़रूरत इससे पहले कभी नहीं रही। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि इस तरह की कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है तो उससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। जो पाकिस्तान का जनरली इमेज बाहर रहा खासतौर पर पिछले चंद सालों में, तो इस तरह की एग्जीबिशन हमेशा उस चीज़ को निगेट करती है कि पाकिस्तान को जो बहुत से एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। सच एन एग्जीबिशन विल डेमोन्स्ट्रेट कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेनी कंट्रीज, बहुत से मुल्क में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब कोई इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, बाहर के चीफ्स आते हैं, बाहर के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, तो फिर ये साबित करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का ख़ासतौर पे माशी कराची, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सा ख़राब इमेज बनाया है, इस तरह की एग्जीबिशन उस इमेज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और आई विश आइडियाज़ 2002
बेस्ट ऑफ लक। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा
जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। जिस बेपदा होने खुद करे तो वो 70 खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी किया। माजी में अगर बात करें कि हमारा अलजरार है, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। Honorable Defense Minister, Excellencies, Assalamualaikum. It is a matter of time for me to extend a warm welcome to the Defense Minister, Federal State Minister, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, National Senior Serving and officers from our forces, our guests from national media, business group, and government companies. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing the occasion to formally launch International Defense Exhibition Seminar 2022. Better known by the acronym IDEA. Ladies and gentlemen, we entered into the National Defense Exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that Ahmed is here who was leading them and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our living. World in general and Pakistan in particular fought courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space state to date.
Needless to say, that Idea 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invite. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. I thought Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties and find solutions to the problems confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEA's 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General for Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. A very well organized event. Thank you to all the organizers. My name is Salim Jan Mahmood from Kenya. We import hospitality items from Pakistan. Very organized event and a very interesting one as well. The only plea I would make to the Pakistan government is to try and encourage Pakistani textiles into East Africa. The difficulty we're having is the challenge of much lower duties from the COMESA countries like Egypt, where bed linen is 50% for Pakistani product and 5% for Egyptian goods. Even though Pakistan imports so much of tea from Kenya, their duty rates into Kenya are far more than other countries. So please, if you can do something about this. Thank you very much. Bye-bye.
लेकिन जब ये कंसीव हुआ था आइडिया कि भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफ़र्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन public sector and private sector both for the defense equipment and defense industry, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज़ जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो ख़बरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इस तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज़ हैव स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, तो उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। Ideas 2024 bring together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2B, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of it will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अंबर खान फ्रॉम टाइम पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग डाटा बैंक मैनेजमेंट कंपनी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के A to Z तमाम बिजनेस सेक्टर्स को कवर करते हैं अपनी डायरेक्टरी में। और 3 वे मीडिया है हमारा, एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और ऑनलाइन। तो तीनों मीडिया में हम कवर करते हैं आपका डाटा भी और आपके एडवर्टाइजमेंट्स भी। तो अपनी अपडेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, हमारा फॉर्म फिल करके हमें भेज सकते हैं। इनवन आइडियाज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं, 4 साल के बाद ये आइडियाज़ हुई है। लास्ट वाली कोरोना की वजह से स्किप की गई थी, तो इस दफ़ा लोगों का रश और एक्साइटमेंट जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग यहाँ पे मिले हैं। क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा मिला है हमें यहाँ पे इस बार, और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा मिला था। और आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी प्रिंट मीडिया को, जो कि लोग कहते हैं आज के अब इसका वक्त जा रहा है, आइडियाज़ में हमें ये बात दोबारा से बताई जाती है कि नहीं, प्रिंट मीडिया ही अभी भी चाहिए हमें, क्योंकि तमाम जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रिंट वर्जन ही अपना दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वो लोग इतना यूज़ नहीं करते। तो हमारी हार्ड कॉपीज़ डायरेक्टरीज जो है वो उनके पास जारी होती हैं। बदर एक्सपो के साथ हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं एज अ मीडिया पार्टनर, और जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन भी सबसे ज़्यादा क्लोज करती है आपको, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस हैं हमारी इनके साथ। और बदर एक्सपो के तमाम इवेंट्स की तरह आइडियाज़ भी एक बेहतरीन इवेंट रहा है इस बार। थैंक यू सो मच।
name is Elena. I'm from Russia. I am looking for suppliers which can provide my company with good fabrics and materials. I'm the first time in Pakistan, the first time in this fair, and I'm really surprised because of quality, because of capacities of Pakistani factories. It's really amazing, and I'm very happy. Thank you very much. The atmosphere is fantastic, and really a lot of professional guys in textile, a lot of foreigners. Everybody's very kind, and everybody smiles, so that's nice. The management is okay. I participate in many international fairs, and I think that's in Pakistan it's a good level now. अस्सलाम एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से एक्सपो सेंटर कराची से मुखातिब है। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बचत एक्सपो 2024 आपके लिए सजाई गई है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से। उसमें जेडीसी का बहुत बड़ा रोल, उनके साथ साथ गवर्नर सिंध, कराची शहर की इंतज़ामिया, इन सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मकसद यही था कि कराची के शहरियों को सस्ता सामान भी प्रोवाइड किया जा सके, एट द सेम टाइम कोई हल्ला गुल्ला कोई एक्टिविटी भी तो हो। तो देखें आज मैं आपको स्टार्ट ही एक्टिविटी से लेता हूँ। इन बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देखें आप, ये तमाम के तमाम बच्चे यहाँ पर जंपिंग जैक भी मौजूद है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खिलौने भी आए हुए हैं जिसपे वो इंजॉय कर रहे हैं। टॉयज़ यहाँ पर कार्ड भी है बच्चों के लिए जिसको वो चलाते हैं और जाके भरपूर अंदाज से इंजॉय करते हैं। लेकिन जो मैं अब चीज़ खाने जा रहा हूँ, ज़रा इधर आइएगा, यहाँ आप देखेंगे तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खाने पीने से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है, क्योंकि रमज़ान के दिन है,
अफ्तार भी करनी है आपने, सहरी भी करनी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये तमाम के तमाम लोग आपको इस वक्त तकरीबन रात की पहर ऐसा हो रहा है कि सहरी का टाइम ही, और ये सब आपको सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर हम आएंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाते हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। खाने पीने की अशिया, स्नैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। और तो और यहाँ पे जिन लोगों ने पान खाना है तो पान भी यहाँ पर मौजूद है। और तो छोड़े आप, हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ रही है, विजिट कर रही है, खाना पीना इन सब का चल रहा है। डिफरेंट खाने आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको आइसक्रीम भी अवेलेबल है, फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल है। और अगर यहाँ से हम चलते हैं आगे तो ड्रिंक्स, हलीम और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर मैसर आएंगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, लोग आपको यहाँ दिखाएंगे तो सारे लोग आपको खाते पीते हुए, इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ बचत एक्सपो का विजिट भी किया और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा वो उठा सकते थे, तो ये फ़ायदा आपके लिए भी। आप भी आएँ, कल आखिरी दिन है, यहाँ ज़रूर विजिट करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको हलीम भी अवेलेबल होगा और यहाँ आपको रोस्ट भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ खाने आपको यहाँ मिल रहे हैं। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? लोग आ रहे हैं, चल रहा है मामला? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम सही है। मकसद है कि जिस मकसद से आए थे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सही है। ये देखिए आप, ये गर्मा गर्म आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं भाई आप? ये क्या है, क्या वैसे? फ्राइड राइस है। ये फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है यहाँ पे। लोगों को आप देख सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चिकन यहाँ पे मौजूद है, फ्राइज के डिफरेंट ब्रांड यहाँ पर हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे बंद कबाब भी आपको मिलेगा, गोलगप्पे, चाट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैसर है। बारबेक्यू खाने का, अगर आपको रोल खाने का मूड है तो KF हॉट रोल भी यहाँ पर मौजूद है। सर आप कैसा यहाँ पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा एटमॉस्फेयर है और बेहतरीन सब माशाल्लाह। इवन फैमिली के साथ आना चाहिए। फैमिली के साथ। और खास तौर पे आपने कुछ खरीदारी की? खरीदारी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, बस अब कुछ घर के जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनासिब रेटों में मिली हैं। चले तो यानी कि खुश होके जा रहे हैं बचत एक्सपो से अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये सब लोग यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोग खाते पीते हुए, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर भी चलते हैं, ज़रा वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। टपाल भी यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा ब्रांड है टपाल फैमिली मिक्सचर, और ये फैमिली गाला ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस जगह भी आप देखेंगे तो आपको फैमिलीज दिखाई देंगी। बचत एक्सपो 2024 का मकसद यही था कि अपनी लोगों को, फैमिलीज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। यहाँ आए तो फिर अंदाज़ आपको दिखाई देगा। अंदाज़ का ब्रांड खासा बड़ा ब्रांड, और ये अंदाज़ है बचत एक्सपो का भी। हम अपना एक अंदाज़ है बदर एक्सपो सोल्यूशंस का, और जितने भी लोग JDC ऑनरेबल गवर्नर सिंध सब लोग यहाँ पर जुड़े, सबका एक अंदाज दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है। और हालांकि अब टाइम ऐसा हुआ है कि तकरीबन ख़त्म होने का टाइम है, तो कल आखिरी दिन है, पहुँचे आप यहाँ पर एक्सपो से एक्सपोजर बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 के डे 2 से नसीम राजपूत आपसे चाहता है इजाज़त। आप ये कह कर के आप आएँ और आके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अल्लाह निगहबान।
IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform B2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also help facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The exhibition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDEA 2022. IDEAS जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज CCV लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first Kima Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq. We are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also launched the Fast Tasdeeq कि आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity production. We are manufacturing 33 cables, and also we are manufacturing grill conductor, जो कि हमने एक import substitution की है और हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडिया को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. Assalamualaikum. My name is Haider Mahbub Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of IDEAS 2022, and we are launching magazine, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in IDEAS, and we look forward to see you at our stall, number 5. Thank you very much. क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से. शायर मशरिक अल्लामा इकबाल. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा. शायर मशरिक अल्लामा इकबाल. आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं. शायर मशरिक अल्लामा इकबाल. फाउंडेशन के इस वक्त स्टॉल पे हम लोग मौजूद हैं और ASF फाउंडेशन की हाउसिंग स्कीम है
वो अगर 9 पे आप चले जाएं तो वन ऑफ दी बेस्ट। जिस अंदाज से ये लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है और उनकी टॉप मैनेजमेंट को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है और उनकी टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रिगेडियर इरफान अख्तर साहब। It's 1 p.m. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं एस JDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ पर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेनिटर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। हम अपने लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका फ़ोन लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल कासिम है और मैं CEO हूँ इंडस्ट्री लिंक। इंडस्ट्री लिंक हमारा एक नया वेंचर है, एक IT कंपनी है और हमारा वेंचर एक अमेरिकन कंपनी के साथ है, वेस्टिंग हाउस। वेस्टिंग हाउस किसी भी इंट्रोडक्शन का नाज नहीं है। वेस्टिंग हाउस सर्व कर रहा है फॉर मोर देन 100 ईयर्स और इस वेस्टिंग हाउस की काफी बड़ी रेंज है MP LP के अंदर, डाटा ट्रांसफार्मर्स, बस ट्रेस, तो उसकी काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। हम IEEE में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और IEEE में हम वेस्टिंग हाउस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और IEEE मैं पर्सनली समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल वेंडर्स आते हैं और मसलियत में तरक्की होती है। हम प्रीवियसली IEEE पे पार्टिसिपेट करते रहे हैं अपनी पुरानी कंपनी सोल्यूशन के साथ। इसका फीडबैक, इसका आउटकम बहुत आउट क्लास है और मैं स्पेशली यहाँ पे बदर एक्सपो वालों को भी जरूर नाम दूंगा कि वो डेट आउट काफी वर्किंग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जो है हमें विजिट करें। 10 सितंबर till 12 सितंबर तक ये एग्जीबिशन होगी। तो हम वहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वहाँ पे सर्व करना चाहते हैं और आपको अपनी साइड प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम जफ़र अहमद सैयद है। मैं मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग हूँ शान इंडस्ट्रीज के में। शान इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोई आज से 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टिंग से, और आज माशाल्लाह जो है हमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को हम सर्व कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज के हवाले से। हमने इस 30 साल के सफ़र के अंदर जो है एयर डिवाइसेस से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह AHU एयर हैंडलिंग यूनिट और एयर कूल्ड चिलर तक बना रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट इक्विपमेंट की सप्लाई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम गामजन रहें। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम आपका कॉपरेट हमारे साथ रहेगा और उस कॉपरेशन में शान इंडस्ट्रीज वक्त के साथ और ग्रो करेगी, और उसके अंदर जो है हम एक अच्छी सर्विसेज देने के मराइल में से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस, और बेसिकली ये जो आइडिया है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनी जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी, और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हियर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू। जी हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो बॉन्जो जूसर से आए हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास पेट बॉटल में जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक हमारे पास, नेक्टर जूसेस हैं, CSD हमारे पास कार्बोनेटेड जूसेस हैं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास पाकिस्तानी आजकल ब्रांड आप पता है कि काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पाकिस्तानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमारे पास कैचअप्स आ जाती हैं, टैटूस हमारे पास अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा है बदर एक्सपो का, जो लास्ट हमने एयर भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और अभी जो ये यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बचत बाज़ार की वजह से हमने लगाया हुआ है, और इसी बात है कि यहाँ पर जो आए हैं लोग उनको डिस्काउंट ही देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो लगभग अप टू 40% है, 30 to 40% का हमारा डिस्काउंट चला है मार्केट प्राइस से। तो थैंक यू बदर एक्सपो।
से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं, ये मुख्तलिफ जो हैं और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कंदकोट से आया हूँ। कंदकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखिए ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजामात आपके लिए जो किए गए, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया सब कुछ। जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त है। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कंदकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं। हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस आ रहे हैं, हर साल होने 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे ऐसा तगड़े ना, वो सारे तो अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पुणी सारा एक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी कम दी है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल ही आने किसी साल भी ना परेशानी नहीं होने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे, 11 महीने दे, अगले साल वास्ते पलाई पसंद। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं, अगे देखो आगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ जी, कराची वाले नहीं पंजाबी। ये जरा देखें अंदाज, जरा दिखाएं तो सही ना यार। ये जो काम हुआ हुआ यहाँ पे आप जानवर देख सकते हैं। किस आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं, आप मेरे साथ इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल, कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? जी जी भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है। कुछ बछड़ा देखो, आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे, वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसा अरेंजमेंट्स वगैरह, खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है।
आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें वीवीआईपी ब्लॉक भी है, वीआईपी ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीवीआईपी भी है, वीआईपी भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इस दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी की कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो फिर एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा रेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छुड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके आप अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम उमर है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो की तरफ से हमने स्टॉल लगाया पराठों का, और मार्केट रेट से हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मार्केट में 180 रुपये का और यहाँ पे हम 150 रुपये का देते। पैकेट में 6 पराठे हैं और ये तक फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनके साथ हमारा जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ट्राई करेंगे तो हमारा पराठा बहुत अच्छा है। ये इस वक्त कराची के अंदर जो कि लोग ज़्यादातर शहरी में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो ऑफिसेज़ वगैरह के जो लोग होते हैं, जो सुबह में कुछ जल्दी होती है नाश्ते की, जो जाके लाइनों में नहीं खड़े होते होटलों, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है पूरे कराची के अंदर ये बड़ी बड़ी बेकरीज और मिल्क शॉप पर दस्तयाब है। और बदर एक्सपो का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रमज़ान के मुबारक महीने में ये इतना बड़ा जो ना स्टॉल लगवाया, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के इधर कीमत भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मार्केट से। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बदर एक्सपो इंशाल्लाह हर साल हर महीने इसी तरीके से बचत बाज़ार लाते रहेंगे। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honorable delegates, exhibitors, and trade visitors who traveled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners, friends, while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition, the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious
conscious decision making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agriculture sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan gets to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developed world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international
financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institutional must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent a constituency in Parliament. My job, be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region
for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development, demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst a community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principled stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of a very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan. And I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है, बदर एक्सपो की तरफ से जो लगा है। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है। रिस्पांस पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बचत बाज़ार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के अंदर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है, तो बाहर आलू 3 किलो का आलू का बैग आपको, अगर 3 किलो आप आलू लेते हैं तो आपको बाहर से मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग आपको दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg। जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम एज अगर हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर kg हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत, ईद से पहले ईद आ चुकी है, तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, एंड थैंक यू सो मच बचत बाज़ार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं बेरिया फार्मेसी बेरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक़ है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना स्टॉल ये लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस दें कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो अवेयरनेस भी दें कि आप लोग जो है मेडिसन, मल्टीनेशनल मेडिसन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस रखता है, और इस पे है कि आवाम को जो है, हमारी आवाम को अपनी हेल्थ के बारे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी हैं। और बेरिया फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है ना, मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो।
आइडियाज़ 2020 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में उसको नहीं कंडक्ट करके तो ये अब 4 साल के बाद हुआ है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता। और हम इंशाल्लाह पूरी के लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जो कंडक्ट कराया गया था वज़ीर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा। हमारे हाई लेवल डेलीगेशन की कन्फर्मेशन आ चुकी जो कि पूरी दुनिया के तमाम बयानों से हमारे पास टिकट्स आ रहे हैं और एग्जिबिट भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े एग्जिबिटर्स एग्जिबिशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसने बहुत ज़्यादा जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में ले आएँ और उनको भी एक बुकलेट दें ताकि उनके सामने अपना जो प्रोडक्शन शोकेस कर सकें। इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बड़ा के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं वही उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं टाइम्स उनकी भी जॉइंट वेंचर हैं बाहर के मुल्कों कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा साइन है। इस लेवल का ये इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल सेगमेंट आप आए हैं, तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और जो लोग यहाँ पर आए वो लेके जाएंगे, पता चलेगा कि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा इवेंट आ सकता है और तमाम जो अल्लाह का बहुत हमारे साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार करवा रहे हैं जो बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। सेगमेंट 1 टियर है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसने कट किया जाएगा और उसके अंदर स्पीकर जो कि एक्सपर्ट्स होंगे इंटेलिजेंस के, और इसी तरह जो सेकंड टियर जो नेक्स्ट डे कंडक्ट करा जाएगा दैट इज सेकंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट हैं जो उन्होंने इस पर काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आके अपना काम प्रेजेंट करें और ये इन प्रेजेंट करने वालों के दोनों दिन हमने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया वो सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जोर से चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का आउटडोर एरिया है और एग्जिबिट हॉल्स का एरिया है, इसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। इंशाल्लाह हमने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट पहले ही कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा हम मिलती रही है, पास में भी मिली है और इस तरह भी आपने खुद देखा कि हमारी जो स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग्स वो हेल्ड एट सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको किया और वहाँ पर तमाम सिंध के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं मौजूद थे, उनको जिस तरीके से सीएम तरफ से मिली पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। बजट में बेसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का 100 का मरकज है क्योंकि M9 पे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इनकी ग्रीन स्ट्रीट जिस अंदाज से काम करें आप जाके जरूर देखें, आप शानदार और जिस नर्फ में और बचत में जिस बचत के साथ अगर यहाँ पर पा रहे होंगे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने कम पैसों के अंदर आपको अपना प्लॉट में आसान काम दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बहुत काम है। इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसल भाई इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए। अब फैसल भाई जो है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त फहद भाई के साहबजादे और डायरेक्टर होते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रैयान बिन एहसान में इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद है। रैयान फहद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम रैयान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नसीम भाई, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रैयान, जबरदस्त किस्म का काम आपका, लेकिन इस बचत एक्सपो में कैसा फीडबैक रहा बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए? मेरे ख्याल से एक तो पहले ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, मैं क्रेडिट्स देना चाहूंगा साहब को और हमारे गवर्नर साहब को, एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। उसके बाद जिस तरह का यहाँ के अवाम ने हमें रिस्पांस दिया, इकोनॉमिकल कंडीशन पॉलिटिकल कंडीशंस पर कंट्री की ऐसी थी कि इस तरह की एक इवेंट इसकी बहुत जरूरी हो गई थी, इस वजह से हमें बहुत रिस्पांस आ रहा है। हमने प्राइस जो है हमारी प्लॉट की वो आधे पे कर दिया, तो हम तक 50,000 का प्लॉट दे रहे थे, इस वक्त हम 595 का दे रहे हैं 120 का, तो मेरे ख्याल से लोग एक अच्छी ऑफर और बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। रमजान के हवाले से जो खासतौर पे आपका पैकेज है, तो कहीं ना कहीं आपने रमजान में लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस वक्त वो की जरूरत दिखाई देती है। कितने खुश होकर लोग यहाँ से गए रैयान? सर एक तो पहले भी आपको याद होगा कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो हम 2,40,000 से स्टार्ट हुए थे और आज उसकी कीमत तकरीबन 20 लाख स्टार्ट है। तो इसी तरह हमने रमजान में एक और पैकेज लोगों के लिए दो फायदा उठाने के लिए किया है और अल्हम्दुलिल्लाह में इतना अच्छा खाया, जितना हमारे क्लाइंट्स थे पुराने उन्होंने हमारे साथ री इन्वेस्ट किया, बहुत बुआएं और उन्हीं की वजह से बेनिसान आगे आ रहा है माशाल्लाह। सर माशाल्लाह बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं और उनके
डायरेक्टर अमीन भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अमीन भाई, कैसा रिस्पॉन्स रहा इस बचत एक्सपो में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन ये 3 दिन का एग्जीबिशन इन लगाया है बचत बाजार के हवाले से, और तकरीबन It's 2 p.m. As 2024 brings together stakeholders across diverse industries, the biggest platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint venture and investments in the service sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The edition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of network-centric warfare, its components and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the 3. What are the 5G key enablers that can be used for the 3? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields. And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom, no, please. Okay. The bottom line is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even there are cellular signals, some cases we cannot connect to the network. It's because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big case in the 5G will be massive machine type communications, which later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about physical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 general cases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare 5G with the 4G. 5G is much better in all the aspects. And then we can see also there are several KPIs of 5G, but I think it's quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance,
we have a very big possibilities to use it in various type of use cases for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI and also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small, but actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the FE, network function virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, hardware, and on network slicing, which is the set of pairs, can be very easily changed and done for different types of use cases. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI, and then cloud native, mobile edge computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So all those key enablers, we can see that there are many studies, research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by MT, and then Fibel, and so on and so on. Next. Okay, so this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The foremost is that it can be military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making. Then also for smart warehousing, and then for distribution control in the battlefield. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network, or for tactical communication. Tactical means in a battle using millimeter wave, so that we can use high frequency, high directivity, and very low latencies. So the proximity service, PROSI, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the intelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that this 5G can be used and has a big potential for the military applications. Next. However, we see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 25, and biggest contributions come from small cells. It is 1,600 times. So all these components is if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there.
Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked to each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is a decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, in the after 5G, beyond 5G, is not just decoupling but also orchestrated using AI. So this is most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I can skip one, and the next one. Next, the next one is of the use of the IP6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. So, that means that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts for the security aspects. Next, 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 next. Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cyber security approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G, but because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use 5G for military. Next slide, please. And the security threat is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, standard is just the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is the security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें, पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये है ट्राई सर्विसेज जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं और
कई सारे जॉइंट वेंचर माली में हो चुके हैं और अभी इसके इम्कान दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज 2020 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ की बात हो रही है, वही एक खास टॉपिक इस आइडिया 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक ब्रॉड सेमिनार का इनेकाद भी किया और खास तौर पर हम नौजवान नस्ल को इससे आई दी। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और सारी खास दिखाई देती है। साथ ही हमारे मुल्क की बड़ी शख्सियत के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ी और इस वक्त किन किन चीजों में हमारे लिए बहुत साबित हो सकता है। इंतहाई शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। एंड मैटर आर्किटेक्ट CEO बैकग्राउंड और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं जियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड मूलर एंड और इसके साथ साथ 10 की इमले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर। थैंक यू मुजम्मिल साहब। जबकि उनका बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ मुल्क में कोई लाती है वहाँ ईसा लैब बहुत आगे दिखती है। ईसा लैब फर ईसा साहब। थैंक यू फरहान भाई, बहुत बहुत। फरहान भाई शुरू करते हैं अल्लाह साहब से। जस्ट सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, मैं आम लोग बात रहा हूँ, हम बिल्कुल आम यहाँ बैठे में, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए हमारी जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें कि उस है वो बिल्कुल नहीं होती के तौर पे आप कहें कि उसको कि आपकी 65 से ऊपर है तो प्लीज कहें इनको ना लें इनसे। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जो आप एज पूछ के उसका देता है। मगर खिलाफ तो ये मतलब अभी जो हम अपनी जिंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते, मगर आप आम आदमी भी इस वक्त इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगे। आप फेसबुक पे जाते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड है, वो आइडेंटिफाई करता है कि टीम में कौन कौन लोग खड़े हैं आपके दोस्तों में और उनको ऑटोमेटिकली टैग करता है। अच्छा, अब ये सिंपल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर ले जाए। तो इसलिए आपको नए के प्रोग्राम लिखे तो जो पुराने प्रोग्राम में जो मोस्ट ऑफ द हम कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं होती, मगर जो नए किस्म के प्रोग्राम इनमें से इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, ज्यादातर लोग पता नहीं। अब इस तौर पर टेक्नोलॉजी के मैं जाना चाह रहा कि काम आदमी के, मगर इस तरह समझिए आप कि मैंने इंटेलिजेंस मैंने पहले तो था कि और अभी ये है कि हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेन मतलब है कि हम क्या करते हैं, उसको जैसे मेरी 10 वीडियो दिखाएंगे उसको, हम जिंदगी में मुझे कैसे पहले मुझे 2 से पहचानेंगे। अच्छा, कंप्यूटर भी अब इस तरह लगा है कि आपको लॉजिक नहीं पड़ती, तो आपने उसको काशवीरा ये है 10 दफा किया ना, तो वो ऐसे प्रोग्राम है जो उस मतलब निकाल लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कोई नई चीज दिखाए तो वो मुझे जानेंगे कि ये भी है। तो यहाँ के लिए आर्टिफिशियल में टेक्नोलॉजी पहुंची है, आप प्रोग्राम को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है वो है डेटा साइंस। तो आपको जैसे हमारे इसे बैठे हुए हैं, क्या होता था, ब्लड में डॉक्टर आधा क्या होगा और अभी और के पास भी हुआ होगा कि तस्वीर से डायग्नोज उसको तस्वीर खाते हैं, ट्रेन कर पड़ेगा, डेटा चाहिए और तस्वीरें देख के यार ये कैंसर है, फिर जब वो नया से लिखेगा तो फौरन पहचान जाए ये कैंसर है, जो कर सकते हैं भी कर सकती हैं। इंटेलिजेंस किस तरीके आप यूज करते हैं जिंदगी के अंदर KTX इसको ज्यादा और अगर मैं बात जियाउल्लाह साहब बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट इन IT सेक्टर, इस इंटेलिजेंस को किस तरीके सामने लाया जा सकता है? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले नज़िया साहब के साथ ये इनके साथ नहीं, मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि इन जो तारुफ है वो मुख्तसर तारुफ। इस वक्त ये के अंदर आर्टिफिशियल और प्रोग्राम अंदर समझ लिए इनके साथ मेरा कैसे ही है कि सूरज के सामने जो है आप चराग, तो इनके सामने ज़ाहिर है बहुत ही छोट नॉर बात कर सकता हूँ। बट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे वेलफेयर ट्रस्ट जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर IT एक्सपर्ट को बनाने का सबसे बड़ा काम ये प्रेसिडेंशियल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब के साथ कर रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक दो बहुत बड़ी शख्सियत ने अपने मुझे बिठा, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इंटेलिजेंस जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर हमने शुरू किया है, इन्होंने तवज्जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतारा कर रही है। इसमें दो है, एक जनरल आर्टिफिशियल है, एक नैरो इंटेलिजेंस है। इन चीज़ों के अंदर जिया ने बताया के अंदर जो मामूली नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती हैं और उसके बाद जो अंदर आगे चले आते हैं, जैसे एक तारीख में जो गूगल असिस्टेंस या अगर
आप अपने एप्पल की तो एआई के तौर पर सी को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन्स हैं और उसके साथ अलेक्सा है एंड्रॉइड के अंदर, तो ये डिफरेंट टाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली ज़्यादा जो पावर समझी जाती है, मैं गलत नहीं, उसके अंदर सिरी को जाता है। गूगल सर्विस बहरहाल सब फोकस है, उसके बाद सीरी जो वो अलेक्सा को कि अगर जो बड़ी चीज़ है वो ये कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कहाँ पहुंच चुके हैं, आपका फोन आपको आपसे बेहतर जानता है। इसकी चंद एक मिसालें आपके सामने रखूंगा। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन जगहों पर विजिट करते हैं, इसका डेटा आपके फ़ोन के अंदर महफूज हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ लैटिट्यूड के महफूज हो रहा है। जगह की फिर निशानी जो उसके पास पहले की जगह प्रोग्राम में सेव हो, तो वो निशानी कर कि आया जगह आपके कम जगह, वो जब टाइमिंग देखता है, सुबह आप जब दाखिल होते हैं 6-7 निकलते हैं, तो कहता है ये इसकी वर्क प्लेस। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, अगर आप अपने फ़ोन के जो जानने लोग हैं वो गूगल मैप से जाएंगे तो अगर वर्क प्लेस आपकी आ रही होगी, कभी ऐड नहीं किया उस प्लेस को। इसी तरह रात का टाइम ज़्यादातर आप घर के अंदर, मैं सहाफ़ी कर रहा हूँ लेकिन ये क्या जो ज़्यादा हो गए, चूंकि वो शाम से लेकर सुबह तक का वक्त घर पर गुजारते हैं, इस वजह से वो उनकी होम की कैटेगरी के अंदर नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से चूंकि संडे का दिन डेफिनेटली पर गुजारते हैं, तो वो इसी तरीके से आप अगर एक खास टाइम घर से निकलते हैं और तो उसको डिटेक्ट करती है मस्जिद जा रहा है, तो आपके बारे ये नंदी होती है। आप मस्जिद लें और दिन में कितनी दफा 5 वक्त नमाजी है, एक वक्त है जो पढ़ते हैं आप। इसके बाद फिर आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, एक शख्स है जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो आप उससे कहें आप हफ्ते में 1-2 दफा मिलते हैं या महीने में 2 दफा जाते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे में गेज होता है कि आया आप एक खिलाड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप एक इस्लामिक मिलने के लिए जाते हैं, आप डॉक्टर पास मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर किस फील्ड डॉक्टर है, बस वो सारा डेटा उस पर कभी बैकेट गूगल के ऊपर से, तो वो उस लिंकेजेस क्रिएट कर। आज की तारीख अगर आप बनाएं तो उनको सिर्फ इस जरूरत होती है कि फेसबुक आपकी गूगल की आपके पास मिल जाए, बाद आपके बारे में मुकम्मल मालूमात आप ज़्यादा बेहतर उनके पास आ जाती हैं और बुनियाद के ऊपर वो फैसले हैं कि आइदर आपको वीज़ा देना चाहिए या आपको नहीं देना चाहिए, आपके उनके मुल्क की ज़रूरत है, आपके उनके नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको मामूली मिसाल दी, जिस तरह जैसा कि वो जो तस्वीर, उस तस्वीर को अगर आप एक दिलचस्प बात यह, अगर आपके बचपन की तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों के ऊपर वो हर साल को उन साथ आपको दिखता है, और इसके लिए आप पर प्रोग्राम फीड करने की जरूरत गूगल ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर आगे कर रहा होता है कि तस्वीर की चेंजेस के 1 साल के बाद का अगर एक बच्चा लेट से या राबिया है, वो उसको डिटेक्ट करता है इसकी ये था कि 1 साल बाद ये गया, 2 साल के बाद और 15 साल बाद इस कंडीशन, तो पूरी तस्वीरों की सामने रख देता है। बात लंबी होगी लेकिन मैं एक्चुअली बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जिंदगी के अंदर इस लेवल तक शामिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है। उसको टैग के लिए आपके पास पड़ता है, जिससे हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, ये तो आपके शोबे में भी बराबर साबित हो सकती है डाटा वगैरह के हवाले, या अगर कौन से टेस्ट ज्यादा हो, किस वजह से हो रही, सीजन में हो रही, तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी कर सकती है। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ करना शुरू कर दी है, खासतौर पे रेडियोलॉजी जो एक्सरे अल्ट्रा सीटी स्कैन्स हैं उसकी हज़ारों, जिसने कहा वो उनकी और उनके रिजल्ट्स वो और कंटिन्यूसली डाटा को सिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी इसके अंदर हमारे 5000 इमेजेस थे और उसने देखा तो 5000 इमेजेस फीड करने के बाद हमें पता ये चला कि 25 इमेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें करी थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना किया कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी के हैं, सीटी स्कैन एमआरआई वो है, और नॉर्मल वाली जो है रेडियोलॉजिस्ट के पास। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे डेंगू आ रहा है और उसके दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है लिखे हैं, तो क्या कंपाइल होकर रिजल्ट चल के आते हैं। जैसे इस दफ़ा जो डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो वैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसले होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के सिम्टम है, तो हम लोग तो यार रूप दिया है। अच्छा, हम लोग ना बायो सेफ्टी की भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था उस एपिडेमियोलॉजिकल के, जैसे डेंगू जब इंडियन बॉर्डर पे आया था, हमने सर्विलेंस कर रहे होते और हमने कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा, जो आ गया। फिर दुनिया एक और बीमारी टाउन्स पे आई, हमने पहले से बताया कि कुछ भी यही है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीसी के साथ मिलकर भी हमने मिले काम किया, और आई थिंक मैं बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इस इदारे को। एनसीसी जो बना, जनरल महमूद उसको शेयर कर रहे थे और हुमायूं साहब कोर्टर कराची थे, इन दोनों कॉम्बिनेशन से हुआ और आज वो आइडियाज नहीं एक तरह से जो भी हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक चीज़ भी हुई कि जनरल हुमायूं साहब ने जो सबसे कम किया कि उन्हें इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट को, जो पहला यहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ की वजह से हुआ जी, और जी अभी है। और मैंने कल भी उनको मुबारकबाद, इनका जो एक्सपो सेंटर है उसके 2-3 बड़े पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को पाकिस्तान को आए, तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स उनकी
काम हो। आपको बताऊं वो रिकॉर्ड है, जनरल थे, यूसी जनरल अकील थे और ये शहजादे थे 25 के ज़माने में। इनकी बारे में जनरल ली मंजूम भी थे। उसमें हुआ ये कि एक नर्स, एक मेडिकल स्टाफ, एक वाला रेड जोन पे पेशेंट्स थे। मैं जो यहाँ पे हमारी ईसा लैब सर्विस दी पहले दिन से आखिर तक, एक शख्स उधर जो काम कर रहा था, एक को कोविड नहीं हुआ। इससे पूरी दुनिया इसमें सारे मैकेनिज्म इस्तेमाल। सेकंड चीज़ है डेथ रेट यहाँ पे बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ ना होने के बराबर था। डेवलप कंट्रीज के अंदर मरीज तो मरे ही, खासतौर पे इंडिया उनकी थे जीरो, और उनको तो पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए। और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ पर उनको भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस और ये जो आइडियाज़ हैं और आज यहाँ मौजूद हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये इंडेवर्स जो हैं जो कोविड में नज़र रिकॉर्ड बनाए पाकिस्तान ने, डेथ रेट, हार्ट की, आई थिंक कि ये हर जगह पे होगी। और पाकिस्तान जिस प्रोग्रेस कर रहा है, जितना हमारे आर्मी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से उन्होंने पहले दिन सेना में डाला। आपको बताऊँ, हम नॉट ओनली मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, इससे नेसेसिटी है, ये एक हैली है। और ये सर और भी कम होना चाहिए। हाईलाइट आइडियाज़ ने, आई थिंक इसने एक तहका चाहिए। मुबारकबाद हो इसको। आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ में आ गया वाली चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले सेक्टर में हम दिफाई नुमाइंदे, हमारा डिफेंस सेक्टर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सेक्टर में कितनी कारगर है? असल में हमें ये देखना चाहिए, आज हम कोई 10 इमेजिन करें वो दुनिया जहाँ पे अपनी फौज नहीं पड़े, बहुत स्वार दें। अब इमेजिन करें कि एक भी उल्टी हो, सब रोबोट्स हों, तो ये दुनिया का सही बदल जाएगा। और जो इदा नहीं होगा उस बेचारे की हालत सोच ले, वो तो इंसान, वो मेरे जैसा इंसान होगा, सिर्फ रोबोट होगा। रोबोट ने जीतना है और उसको फर्स्ट भी जीता, वो नया बना के जान नहीं जा रही। मैं तो होपफुली रिप्लेसेबल हूँ, रिप्लेसेबल है। अगर जो मशीनें, मसला नहीं है, अगर गलती भी होगी या तो कहने का है कि यहाँ आने वाले आज की आपसे मीटिंग से मैं इस तरह से पढ़ के भी देखें, ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक मुलाकात में खालिद साहब भी फौज में थे, जिस वक्त एक कोर चलती है, साथ उसके पूरी हजारों ट्रेन हैं, हजारों ट्रक उसका सामान मूव करने के लिए। जब ये गाड़ियां आ रही हैं तो जितना 1 लाख आदमी है तो 10 लाख आदमी सपोर्ट करने के लिए होता है, क्या कहते हैं। मगर अब क्या होगा, ये स्टेज में वाले काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम बनी है, तो इमेजिन करें कि जो सारा ये लॉजिस्टिक आर्मी का से पैर होगा वो होगा। फिर अब ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट, ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी कॉन्सेप्ट आया है। इसके थ्रू ट्रेनिंग को जो चीज नहीं, पायलट को एक्चुअल जहाज में की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रियलिटी में उसकी जा सकती है और इसी तरह एक जा सकती है। अच्छा देखें, बस एक ऐसा कॉन्टेक्ट ये आजकल किया है हमारे फेसबुक ने, और उनका नाम भी चेंज कर लिया है। हम क्या करते हैं कि अभी आप फिर ना आप इस पे फेसबुक, तो आप से बाहर हैं, आप बाहर से देखो। अब जैसे अभी कोई 15 दिन पे मेटा क्वेस्ट को VR ग्लास उसमें थोड़ा सा यार कौन किया है, VR की जो रेडी है, नहीं आज जब आए समझे उसमें माउंट एवरेस्ट कहीं देखी, तो मैंने पहला काम क्या किया है, माउंट एवरेस्ट के देखने शुरू किए वर्चुअलिटी में। तो मुझे आप बता सकता हूँ कि जीरो किधर है, क्या होता है, वो कैसे आता है। 50% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी एक कोलीग है हिरा, हमेशा कहती है कि मैं तो जब मेटावर्स को, जब आप मेटावर्स में खाना भी खा सकते भी तो वो तो दूर है कि ना खा सकें, मगर देखिए रहे हवा फील नहीं होगी अभी आप, क्योंकि हम अगर होते माउंट एवरेस्ट के नीचे तो हवा भी रही होती, तो नहीं है, सारी बात है। मगर जो आंखों से आता है और कानों से भी अभी कानों से आप महसूस, वो सब महसूस हो आपको, तो क्योंकि वो माइक्रो और उसके तो, और आप जैसे मिसाल के आप नॉर्मल देखें टीवी में खराबी कि आप वो कैमरा में दिखाना देख सकते, बहुत 360 डिग्री है। मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि फलमी का सामान जो सामने रहा है, मैं इक्विपमेंट में तो मैं इक्विपमेंट पे फोकस होगा, मैं बाकी चीज दूंगा। फर्ज करें कोई खास बाबर आजम का, तो बाबर आजम मैं देखना ही नहीं, मैं चाह रहा हूँ बाबर आजम कर रहा है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि वो कर रहा है, क्या करूंगा वहां करने से आपको सारा सेंस कर रहा है, जबकि आपका मुंह कैसे, पर ये कटेड है AI से, ये AI के बगैर जो दोनों टेक्नोलॉजी वो बहुत मेजर हाथ है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह आप क्या कहते हैं, बदल कर देगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिएटिव है, हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसीलिए आरएलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने आज 4 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू मास लेवल लोगों को ट्रेनिंग देने का। तो मैं ये कह, माँ बाप है अपने बनाए दुनिया के लिए अगर करेंगे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पाकिस्तान होगी और इन लोगों के लिए होगी। कितना लेट हम नहीं, अगर अभी देख इससे अंदाजा करें कि हमें ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर आखिर में तो दुनिया में कंपैरिजन नहीं होता है। इस इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है, हमारी 3 है, 150 में और तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर की अनएम्प्लॉयमेंट है।
ये भी सारा इससे मसला है। अच्छा अपडेटेड नहीं है, नहीं है, वो सारे खुद फेसबुक वाले रहे और आपका आप ज़्यादा अच्छा करोगे बल्कि आपको सिखाते हो काम उन्हीं से करवाने अच्छा आगे मसला क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और ट्रेनिंग भी हम एज कंज्यूमर तो कहें। देखिए फेसबुक जो पाकिस्तान को कम पाकिस्तान से और इन्हें कमा रही, मगर यूजर तो उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आगे चल के और मसला और ज्यादा मसला है। दवाओं की होती है, कांगो वाले से नहीं आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल कि इस जगह पे ये सिम पाए जाते हैं। कोई नया वायरस है वाला है, वो दुनिया के किस खिते को मुतासिर कर, इसकी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहे हैं। देखिए हम तो थोड़ा सा ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ पाता है ना इस मुल्क के अंदर तो वो हमारे आर्म फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिससे बात करी या चले बड़ा मुल्क ना, आप कैसे बड़ा मुल्क है तो इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से भी जो मुल्क है उसकी 4 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी। तो पहले ये है कि हम तो गुजारिश करते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल लोग जो हैं रूलर्स वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकें तो फिर करना छोड़ दें। ये चीज़ गुजारिश है। अगर आज को कंट्रोल हुआ, ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास अगर आप मेडिकल और इसकी बारे में बात करना, उसका एक चैलेंज को इसे जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट 18 से हुआ ये कि हेल्थ इवॉल्व के पास, तो जो पाकिस्तान कॉन्सेप्ट है कि नेशनल में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की बनाएगा, पंजाब की बनाएगा। गुजारिश करता हूँ इतना इम्पोर्टेंट करेंट है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, हेल्थ हो गया जैसे नेशनल पॉलिसी बनना जरूरी है और कोलैबोरेशन इंटरनेशनल के साथ होनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है अगर ये हो जाए तो यारी हो जाएंगी जी, क्योंकि फोर्सेस आए थे पूरे पाकिस्तान नहीं, ये तो एक और ई तो डैच कर रहे हैं आजकल हो कि हर मुल्क की एक सेंट्री होती है। पाकिस्तान की जो सेंटर है जिसने पाकिस्तान जोड़ के रखा हुआ है वो हमारे आर्म फोर्सेस है। पूछे बस हम कुछ और एग्जांपल देता हूँ। साउथ कोरिया की क्या है, साउथ कोरिया जो डेमोक्रेसी है, ईरान है नेशनल स्पिरिट, ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स टर्क्स और रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ग्रेविटी है और ये जो सेंटर ग्रेविटी हमारे मुल्क की है। आज देखें ये जो हमें डिफेंस का एक्सपोर्ट सेंटर लगा है आर्म्स फोर्स के शोबे से और एक्सपोर्ट करने के बाद कोलैबोरेशन डेवलप करने के लिए, इससे ज़रा मतलब आएगा, इससे एक इमेज बनी होती है आज दुनिया के जज और सारे स्टेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ जो ये डिफेंस में, तो आज वो पीस का एक मैसेज लेके जाए दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, माइंड होना और फोर्सेज लीड करेंगे, आर्मी नेवी एयर फोर्स, ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी हो सकती है। आज जो टॉपिक है वो भी आइडियाज़ नहीं लोगों ने उठाया है जो अखबारों की जीनत बढ़ाए थर्ड वर्किंग पे लगाया हुआ है इसने। अच्छा मैं खत्म थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए ये कि आज जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आज का हाइब्रिड वॉरफेयर से पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की, और आने वाले टाइमों के अंदर हम जर्म वॉरफेयर से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये ओपनिंग कर रहा है और इसके लिए सेफ्टी और बायोसिक्योरिटी बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा कोई आएगा जानबूझ के फैल जाती है और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये और लोगों को क्रिएट अवेयरनेस कि इसके अंदर लोग सिर्फ की नेशनल स्पिरिट बल्कि अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर आप आके कैसे बेहतरी ला सके, दुनिया चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। चीज़ भी जरूरी है, मिसाल के तौर पे जब कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके वो छुपाते थे कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं भिजवाना है। अब अगर जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको हम कहीं ना कहीं कोई यूज कर सकते हैं, इस को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है ताकि ये आवाम के लिए है, लोगों के लिए है, तो इसको पा नहीं सके बिल्कुल कह रहे हैं। और इसी वजह से जैसे बताया ना कि उसकी हमने वो जो भी हमने उसको जो ये जो अटैक किया कि कोविड के साथ जब एनसीओसी को रिपोर्ट किए थे उसकी वजह से फ़ायदा हुआ कि लॉकडाउन वो माइक्रो लेवल गए, पूरे शहर में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ के लॉकडाउन थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी जिम्मेदारी भी है, ये जो छुपाते हैं ना चीज़ ये भी बड़ी गलत है। ये चीज़ मैं ज़रूर बात को खत्म करते वैक्सीनेशन में बोलूँगा। ये जो हमने आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को थोड़ा सा सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए क्या बताऊँ कि मैं तो इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा वैक्सीन लगाने जहन तो मफनी हो जाएगा, आँखें अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें नहीं हो जाएंगी, मैं ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होएगा तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को यही परेशानी थी कि पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जब सिर्फ एजुकेशन से फैलेगा और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं ली और लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली ह्यूमन रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे और ये बड़ा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप और अपनी विजडम। बिल्कुल आप एक पैगाम यंगस्टर्स के लिए आ जाने चाहिए, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो क्लियर हुई, एक डिपेंड कोई एक शोबा है कि जहां हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत ना पड़े, सेक्टर अब ऐसा नहीं बने और बल्कि हम इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम उन काम और मज़ीद बेहतर बना। सर ये जो जवान नस्ल आपको उनके लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त
ना कि एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई, इंडिया की मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है। उसका रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत सारी बातें महंगात की, मगर मेन वजह ये राइज ऑफ द मिडिल क्लास एशिया। जो ये मिडिल क्लास के आई है, इनके ये सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर पैसा कमा रहे हैं। ये चाइना बैठ के एक बंदा लाख 1.5 लाख कमा लेता है, जो कि पहले दौर पे था मिडिल क्लास में, अब अपर मिडिल क्लास का है, तो वो भी खाएगा। अगर हमने अपने को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना भी हो जाएगा। और अभी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका, जो महंगात की एक वजह क्या है कि जो टेक्निकल लोग हैं, पैसा है, वो मार्केट से हमारे सामान, हम और आप जो कि पुरानी के जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस कीमत में खरीद सके। क्या होगा? भूखे मरेंगे, वो खाना खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा आप अपने लिए, अपने बच्चे लिए अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3, जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा देखिए, दूध पीना अलग चीज है, और सारे अमेरिका और इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो हमें वो दूध नहीं मिला, हमें वो छाछ की। तो अगर हमने अपने किया और अपने आप को ट्रेन किया, दूसरी बात सिर्फ मुझे नहीं है, बड़ी उम्र के भी खुद सीखा हूँ मैं, तो हर रोज आपको रिट्रेन करता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ बैठे हैं ये दोनों रखते अपने आप को, तो हम ही सोच रहे हैं हमारी उम्र जो है नए रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारे आयाज 22 शो के मेहमान BTV के, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर आप पैगाम कंप्लीट हो या कुछ अगर कहना चाहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर। देखें, ये हमारी आर्म फोर्सेस है, मैंने अभी पॉपुलेशन की बात था, हमारी आर्म फोर्सेस बात ये समझ रही। देखिए, एक वेल का प्रोडक्ट आया JF से, जो 4.5 शिफ्ट है। जब ये पहली दफा बना, बहुत सारे स्टूडेंट भी इसमें डेवलपमेंट में शामिल थे, तो मैं खुद भी हैरान जब मेरी बात होती थी कि ये मावर, मगर अब नया दौर है, 5th जनरेशन हेल्थ और इस टाइप के जनरेशन फाइटर में, 6th जनरेशन फाइटर, 7th जनरेशन में दुनिया के पायलट्स हैं। बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत थी। जो इस वक्त नए किस्म के जो 6 और एग्जैक्टली डिफाइन नहीं, मगर 6th और 7th फाइटर होंगे, वो रोबोट, वो ड्रोन होंगे, और ड्रोन्स की फाइट होगी, क्योंकि वो 9G ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्रोन तो 16 भी बर्दाश्त कर लेगा। तो ये हमारा एसेंशियल है, आज रहना है, ऑब्वियसली दिया आर्म्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। आजकल 17 और 16 में, मगर F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर की, तो हमें अगर आगे बढ़ना है हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। फरहानी साहब बहुत शुक्रिया। इस तरह फरहान ने बनाया कि कोर्सेज, और ये कल ही जब मैंने किया तो इसके ऊपर मैंने किया था, और वो इम्प्लीमेंट हमारी जो पूरी दुनिया मानी जाती हैं अपने जब्त के आधार से, अपनी कंट्रोलिंग के से, अपने काम से, तो कोई काम था हर चीज़ अंदर एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज है किसी भी शख्स के अंदर। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस की एक कैपेबिलिटीज है। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे ज़िया खान साहब सी शख्सियात हमारे मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस इसके आगे बढ़ाएं। अब J-17 तैयार पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, सुपर मशक तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं, जो इस वक्त हम बेशुमार मुल्कों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप, जो बस पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। के लिए काम करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात को आगे बढ़ के, यानी जैसे इदारों को, से इदारों को आगे इनके साथ काम का ब्रिज करना होगा, और इसके लिए एक पूरा अमल तैयार करना होगा, जिसकी बुनियाद पे ले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर एक्सपर्ट्स को पैदा कर सके, और पाकिस्तान को आई फील्ड के अंदर इस वक्त हम कह रहे हैं पीछे हैं, इसके अंदर आगे जाना हो। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि बात से कंट्रोलिंग से सिस्टम की बात से हम आर्म फोर्सेस को इसके अंदर रोल प्ले करना होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये आपने बात की, तो मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी जनरेशन है ना, जी जनरेशन, हम लोग सोचते हैं व्हाट्स इट फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में क्या फ़ायदा है। मैं सिर्फ गुजारिश करूँ कि हमने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत हमने दुनिया ट्रैवल है और बहुत दुनिया की है और रहे भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि 5 से अच्छा पूरी दुनिया में नहीं है। आजकल ये टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ये सारी एक्सपर्ट्स थी, अपने मुल्क से सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीयर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर बाहर भी जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर के लिए जाए तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से कमिट करें उसको करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा अंडर ओवर डिलीवर और पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू साहब, थैंक यू ज़िया, इट्स एन ऑनर चैट की। और आपके जो काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हमारे 3 को आपने लिया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आइडिया 2022 का अगर मैं ये कहूँ कि
चंद बड़े मकासद में मकसद है तो भेजा ना होगा। लेकिन इस बार ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत दिखाई देती। जो खान साहब ने एक जुमला किया, अगर हम अपने आप को, अबदारों को और इन तमाम चीज़ें जो हमें जिंदा रहने में मददगार होगी उनको ज़्यादा है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक खास फोकस हमें ज़रूर देना और हम सबको देना होगा कि किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं, हर शोबे की ज़रूरत दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में अगर इसका सहारा नहीं हुआ तो फिर हम सब बेसहारा हो। यहाँ नसीम राजा अपनी पूरी प्रोडक्शन की इस IAS 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते, मज़ीद गेस्ट आते रहेंगी तो होती रहेगी। मिल रहे हैं अल्लाह के बाद। My name is Habib Hussain and I'm founding editor of Defense Guardian International. We are the partners of Ideas Group and Long Magazine, which is successful defense magazine. We are giving all sorts of media solutions related to the defense industry. And I hope you're all having time in Ideas, and I look forward to see you at our stall in Hall 5. Thank you very much. Hello. My name is Ayhan Chik, and I do business development for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded in 1995, and our core experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground station, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeter satellite dishes, man-pack terminal, all the way up to 70 meter big rounds. So as I said, that's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a good software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan at an exhibition. It's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan. And it's a pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face with our contacts, our customers in Pakistan. So thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. मेरा नाम अलीना और मेरे का नाम है अलीवर और मैं स्कूल चुकी हूँ। इसमें आप स्कूल पर आकर कर सकें और अभी मैंने कहा पर बच्चे को सवाल लगा है तो उसमें आप मेरे पर ना किस प्राइस हर लेवल है आना चाहिए, जितने सारे लेवल जो लेना चाहेंगे सब आपको मिल जाएगा जिनके प्राइस के साथ। It's 3 p.m. Assalamualaikum. My name is Habib Hussain, and I am the founder editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are a magazine which is Pakistan's first defense magazine. We are giving all sorts of media solutions which is related to defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in Hall 5. Thank you very much.
bring better stakeholders across first defense histories. The platform B2G, B2G, B2G Russian, and business in the project. Strategic seminar also facilitated additional challenges within the defense edition of BC held from May 22 November 24 at Bachi Expo Center. The 2024 other stakeholders across first defense industries. The first platform G2G, B2G, B2G merchants, joint ventures and investments in the special sector. Australia will also held sessions on global challenge within the defense sector. Closure of BTV held from 19 to 20 November 2024 at Karachi Expo Center. Our Global Hub is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one-window support so that visitors don't have to visit again and again the same stall at this same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria, and by the grace of Allah we are very successfully running this global supply solution. In Pakistan, depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers, and for the Pakistan industry like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. For the depot and Badar Expo, I am very thankful they have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much. अस्सलाम, मेरा नाम नासिर है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इनोवेशन सेंटर को हेड करता हूँ।
हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है मोटिवेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, के साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा, ये AI बेस होगा, और इसके अलावा स्टोरी रहेगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा, और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफीक जो कि नेवल कमांडर हैं यहाँ में, तो हम इनके शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। मेरा मसला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस की काफी है। हम मीडियाज का 2007 से पार्ट है, और मैं जाती तौर पे तो सन 2000 एरियाज को देख रहा हूँ। उसके शुरू में 3 ऑल I was one of the first exhibitors in Idea City. We have had the honor के मैंने इसको देखा है, 2 करते रहे, तो भाई साहब तो पाकिस्तान के लिए एक मोमेंटस ओकेजन है, क्योंकि बहुत मैं देखा हूँ जहाँ से हमने सोचा, और आज इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे का पार्ट बन चुके हैं। इन्वाइटेड हो, और जो एग्जिबिटिंग चीज़ है 9 हॉल्स अगर एग्जिबिटिंग पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा चुकी हैं, लोकल और फॉरेन बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट भी है। मैं देखता हूँ कि डिफेंस एग्जिबिशन होते हैं फॉर कंट्री एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको दें जहाँ पे आप हर 2 साल बाद डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया नेटवर्किंग करने का, बाकी दुनिया को मौका मिलता है डेपो बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं करता हूँ कि अंडर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट can take this platform and evolution to new heights. So good luck to both of them. Thank you much. Pakistan Zindabad. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं GM हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आगे लिए जो जूते बना रहे हैं उनके अलावा हम लोग फोर्स लिए जूते बना रहे हैं कि कंप्लीट रहे हैं नेवी के, आर्मी के, फोर्स के लिए और पुलिस। इस अलावा सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में कुछ और भी बना रही है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लोग आर्मी के लिए चीन में जो इस्तेमाल किया जाता है के वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। हम लोग अल खालिद और अल जरा कुछ रबर पार्ट्स भी बना। रिसेंटली हमारा एक चाइना की एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में पहली ट्रक बस रेडियल के टायर मुतारफ करवाए गए हैं, वो सर्विस ग्रुप की तरफ से, सर्विस लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले ये टायर पाकिस्तान में पाकिस्तान में ट्रक बस रेडियल का 2 मिलियन के 1 साल में, और जो प्लान करके पाकिस्तान में ये लेके आए हैं हम शायद 3rd फेज में आज से 2 या बाद 2.4 मिलियन की कैपेसिटी साल की बना, और मार्च में हुआ है, और हम लोग अमेरिका को पाकिस्तान से बना के फख्र की बात। आइडियाज का बात होगा कि बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, और दुनिया में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर रहे हैं। नो डाउट एक अपॉर्चुनिटी एक भी है। Start with saying thanks, and I would also like to say members Admiral Shahid Bhima and members of the community all the way. Assalamu alaikum. Thank you for granting the audience. I'll be talking about the challenges of our industry from a private perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor increasingly that is heavily reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from energy, from coal. We do have in its local sources that are developing, and I hope it goes on, and a good percentage of our energy. As of yet, our nation imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our
Navy fleet to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important fact for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So first of all, I have to present the impact of inefficient energy supply chain, or the impact of high energy costs, let's say. So there are three components to the energy supply, broadly speaking. One is product. The product is in its place, is driven by markets. That's not something that is in control. The second, shipping costs, which is something we can control. But if our energy can be transported through the Pakistan National Company and its fleet, and we can manage shipping costs. I'll come and address that later in the presentation. The third part is the supply, the birds, the storage, the discharging methods, the lines, the connectivities. These three make up the energy supply, broadly speaking. So high energy bill fits into inflation, current deficit, we face devaluation, where we inflation because of devaluation, and adds to a certain sort of debt every now and then, and also indirect hoarding because it's an imminent shortage of more energy products and leads to a certain sector which holds the current inventories and adds the situation rather than helps it. So about the oil import, I'll be focusing on two products presentation. I don't want to go much on this Sunday morning, so try and keep it simple and dry. So I have chosen oil, and I have chosen to speak about coal to give an insight and holistic view about what can be done. Talk about oil import. We have to mainly that cater to both crude oil, furnace, petrol, diesel, all of them support custom and port. I'll talk Karachi Port. Karachi Port, number of berths. We have one OPU, DB1, DB, they all discharge petrochemical cargoes. So we have it over there. And you most of the time find that there are idle KT for distinct oil and related products. However, the storages are slightly ancient. They haven't been developed. Infrastructure, the pipeline activities has not been last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Qasim, Port Qasim has efficient storages. It is a little away from pipeline up Punjab. It has good storages. It only has one berth to discharge all oil cargoes. So you see how KP has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one berth and multiple storage. So the problem and the solution are in the same sense that if we can ports, if there was some connectivity between both the ports, they could benefit of that. They could benefit of that. Port Qasim does not need to make more storage, and KP does not need to make berths. Collaboration, synergy, a little bit of discussions between both ports will resolve problems. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that is an example of how we can go about it. Just to give you a little insight, there are vessels that along Port Qasim. There's 80 storages at Port Qasim available, but due to just one berth, which is at a time, we have 5 to 10 vessels for the berth in current numbers, up to the tune of $100,000 sometimes her, to build up to 10 vessels majors. And obviously, for a country, his working on its foreign reserve, situation can be avoided, should be avoided. There is another berth, which is not away from Port Qasim, there's multiple berths. All we do is connect them both, so we can charge for 5, 6 at one time. We can store our energy, we can be more energy efficient. Talk about coal a little bit. We are developing coal, and I think that is a very initiative. That is something that go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not rely on imported coal. Something we should all prefer. The reality as it is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne routes, and it is expected that added power plant capacity expansion of the cement, this will go up 25 million tons over the next 2 years. That 16 million tons translates to 290 vessels per approximately. That's 24 vessels per month. And during proceedings of Green Court in 2008, decision was where all coal imports were destined to a single purpose custom terminal, which is fine. However, the terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that terminal was built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now, with 16 million tons a year, the capacity is not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur, again, which is up to $100 and $150 per annum, per vessel per day. I'm sorry. And that increases our import bill. And at the same time, another port, KT, which is an hour away from Port Qasim, has berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done that the discharging from the vessel to the land and forward to the factory is much more efficient. And we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to put over here, I'm going to give a dissected bird's eye view that we have the capacity in the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner.
So inefficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy the capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another act that we need to focus on is the act of PNSC, Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet, that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on all crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be out to procure second-hand vessels, should be exempt from PEPRA rules, so that it is able to increase its fleet and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PK. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Although, if we are efficient and we build synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember when COVID went down to $20, coal went down to $40, China and other countries who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them and they benefited off them when prices are high. We've seen the same issue with LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of energy, sharing the flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share views, help give a holistic view, a bird's eye, rather than working in small pockets. We can share information, we can share the data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector. And in the sector, or I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization. And the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, G2G direction, ventures and investments in defense production. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The two activities will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmad Askari. I am business head of Dynamic Engineering Automation. You can see, देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे we are a company जो alternate gas solution पाकिस्तान में आपको पता है आजकल के जिससे है वो पाकिस्तान में ना पाई है, उसी को सामने रखते हुए हम पिछले 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम alternate solution दे रहे हैं। ये एनर्जी नेचुरल गैस को रिप्लेस करते हैं एलपीजी बेस्ड सिस्टम से। अब तक हम तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं, जहाँ पर सीएनजी होती है, वहाँ पर हम एलपी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं, जो कि दूसरी तरह से गैस पाइप ट्रैवल करती है, जिस तरह गैस ट्रैवल करती है, और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है। इसमें सब तक प्रोजेक्ट हम एसडीसी के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट हमारे जो लगे हुए एसएनजी पे लग रहे हैं। 17 प्रोजेक्ट हमारा एसएनजी पे लगा रही है गिलगित के लिए, पूरे गिलगित है हम ये एसएनजी का सुविधा है। और अभी रिसेंटली अच्छी हमने जो प्रोजेक्ट 8 घरों के लिए वो बैरियर टाउन में है, पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन की गैस मिलेगी और मीटर से जरिए वो बिलिंग की जाएगी। वो बैरियर का प्राइवेट प्रोजेक्ट है, जो गिलगित का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। साइड में भी इस्लामाबाद नेशनल एग्जीबिशन है, वहाँ पर हम लोग से बैठे हम यूएई में और अफ्रीका में काम कर रहे हैं। Today will be about artificial intelligence and its ability to defense. If we can have the slide.
So in the meantime, on this day, I could propose you might heard word Industry 4.0. And the manufacturing industry, for example, or in raw sense world works, is actually before like science related way. The most recent one, the Industry 4 era, actually it comes from Industry 3.0 robotics. And one current era, which is post 2013, is about applications of artificial intelligence with all sorts of devices. We hear stuff like Internet of Things, for instance, or data, for example. We keep hearing security, we keep hearing about those areas. And at the back of all this, how artificial intelligence doesn't actually work, because with what we do with all the data that we connect with IoT, for instance, if there is no AI behind it to actually process the data and take intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science, there's research back in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example. With normal learning, a lot of complex problems are actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world today is perceived as, most of the applications we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make some data, and we're extracting some information, and like presenting it in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually blend time in the real world, and that is like most of the consequence products. For example, we all know about the Robinson project, for example, which the UAE has. For instance, you know that they have all succeeded in flying that scene autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on wingman flying with a real pilot, and the plane totally pilotless. And a lot of the decisions we take by Loyal Wingman basically depend upon the data. They are real-time decisions which have elements of all sorts. AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and it can come, some aspects of it can come from the machining algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply, what sort of a problem in what way. For this reason, what usually is the AI is as good as the behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind is actually writing the artificial intelligence code, that actually gives the manifestation of how an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being lent, my being able to talk to you, I can tell you a little about the AI seminar, which is a big effort with C4I and with Depo, it's had several legs. So it has two components. One component today, another component is tomorrow. So the first one, which is today, is with keynote speakers, two of them who have actually made time to Pakistan, and like also Dr. Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we'll have a presentation from it's a competition-like format in which papers and project ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed in these projects. So it's 103 submissions. From there we came down to 70 evaluations. After 70, the next stage of evaluation went down to 16. After 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented. So great effort done by the with some in from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or we could say technologies which are useful, in the form of important, including emerging technology. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors that will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around like for a long time. I think there are some examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you see that there are a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced. Artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market dynamics, and trend analysis. Next slide, please. Okay, a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade, started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the department AI and robotics back in 2009 at NUST after my PhD from. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually into the real world. For example, don't see on your left and right. These are the human robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my favorite projects in the media a lot. And it's about 6 robots on one side, 6 robots on the other side, and they're completely playing with each other autonomously without human intervention, without even into a computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their goals. There are technologies for rehabilitation which we've made for Sakura wheelchairs of Japan, and there are other projects for this prosthetic hand which we work with AFM. And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on 2 of these, like soft grasping and hand projects, we won best awards in London and Sydney as well.
So the prosthetic leg you see, this is also FIRM actually. So this is an adaptive leg which actually adapts to the walking speed of the person. So another is just live sort of this we do. Next please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a companion grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2006, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of the work, they awarded funding to 9 labs in Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competence select, which one person lead the whole center. Right now, I'm leading the center as artificial intelligence. 9 labs are there. And we've also awarded 12 projects in different domains of artificial intelligence. We've applied, we actually met AI and deployed in the world as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance, we see that financial impact of artificial intelligence, this thing from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.7 trillion to GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications in industries like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par to solve the evolution of electricity in the 20th century. This is the reason why everybody is saying AI is significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another saying, whoever leads in AI to the world. So all this is on artificial intelligence. What's so special about it, and why is this? And then how does that defense? Next. So let me share with you more quote that I actually extracted from one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons threaten to end the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms. We made armed conflict be fought at a scale greater than and at times faster than human comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of war and also the speed of the war will be, completely beyond the way we've been fighting wars for. And with complete autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between with Israel and its neighbor, Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence bases are real systems in real life now. There are other examples. We've got the Loyal Wingman project, autonomous flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't go into details here, but there are autonomous ships. There are submerged vehicles. So there are helicopters. This one, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is the project Elias. So there are like land machines also. This Mars project, for instance, this Black Myth, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the war strategy, and they actually also not just this, also at the tactical level that in the next slides. So at the tactical level also that all things integrate together. And there is a technical framework as well, which you can actually, using the AI governance work, you can actually apply artificial intelligence towards the war as well. Next, please. So there are, of course, one example in which artificial intelligence has been applied extensively, and there are so many examples of of course, several of them are teleoperated. The real manifestation of drone technology is when actually autonomously, right? This is the application areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI drones. Please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machine autonomously within the field, but AI goes well beyond actually, some of which we see as in the papers presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific aerial robots. The pictures I've shown you. There are unmanned aircraft. There is the formulation of governance, artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks, UAV. There are like multi-aircraft ignition and control technology. Then there are autonomous underwater service systems, and of course, main service systems in general, and autonomous lab skills and mine detectors. So this is just like one of the aspects of artificial intelligence. AI extends well beyond. For example, what we are doing not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we do that using artificial intelligence, right? So AI is beyond these are the core areas in which there are options. Next. So if we look at statistics, if you look at numbers, because there are some analytics involved as well, the market share defense, particularly for the defense AI market, because this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an annual growth rate of 4% annually. So this is according to the and this market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires computational capabilities developed at the same time as, and now for a lot of this is probably one of the major applications in the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13% growth, the compound annual CAGR expected for the hardware itself. So if you look at the global market share, so like it's like 28.8% of growth revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is so far the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes, a very famous article in January 2019, which compared math capability with the and switching is better where, right? Particularly for artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please.
There are the statistics as well. For example, in case of global news, they say that the growth is not going to be 13%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which are not included in this presentation, but for North America, for example, certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%. Right? So it's like really huge growth wherever people are, applying artificial industry. So huge rates are expected there. So this is what I'm talking about. That that's the development of autonomous and weapon systems. It is the efficient information, you could say, deployment of sensor and the information which is coming, back to you. The raw intelligence comes from the real world data, and also the automated multi-sensor data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. And so then you can to the technical level, right? So integration of land, air, and naval assets into a battlefield management system to leverage technically. So this is also something which will be worked on by artificial intelligence, developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works, we have at the bottom level, we have to do very much. That the way that this AI works is that at the bottom level, this like this is hardware as well as the software infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be through artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require this can be mobile, can be cloud, this can be internet. The things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top you've got cognitive systems, and then on top of it you've got applications. So the good thing, a lot of applications are like, for example, applications that may be particular to defense don't need entirely different kind of things. Like, for example, if something is worked on in the civilian domain, it also much applicable domain itself. So for example, if you want to do object recognition or you have to do connectivity recognition, the algorithm behind that activity recognition will be the same, though it is applied to the military application as well. So we leverage a lot of things like this for learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario, and actually the reason why game kind of scenarios are generated when multi-agents cooperate each other, and we actually want to use this scenario like machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air to actually cooperate together, share information with each other, and actually fight in real world scenario. So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided, and the fact which from different areas, right now 9.6% firms are investing in the data science area. 0.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, errors in defense industry. So this is particularly related to defense industry. Otherwise, applications of defense are in all, for computer vision. So many applications are in this industry. So natural language processing, entertainment, and the list on. I could put whole day just on this. Next, please. So the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we're doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civil side, and of course, of them have applications for the defense side as well. So we have been able to generate product concepts that generated are, 224. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed to reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first financial release is 2019. So you can imagine just 3 years that we are actually displaying before you. Next. So one major projects, for instance, was collaboration with Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military as well. So for instance, one is that digitized data from the 70 years of Pakistan. Whenever a new case, for example, you can enter some facts about that case system, and relevant cases from the from 70 years to Pakistan database, they actually are. And even if it's just data stuff like AI, of course, the right system AI does just judgment. So even in that case, for example, relevant cases coming from the judge can help judge a more informed decision, right? So I'll just go closely with Pakistan for establishment of the CENTAIC, and we have close collaboration. Next, please. Next. So one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition, and this is a medium AI. It's a company from there. This actually looks at all the media channels simultaneously. It's actually not just in the battlefield but in the home, right? With the digital devices and television, everything coming into everybody's hands. And this is being 10% who's saying what, and all the content that's behind it, giving you a clear summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies now spun off into the last one. And this, for example, is a system where we will take various vehicles, some of the applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one, for example, like how many suspicious vehicles or persons would any human possibly remember. This is AI-based system which is actually reading the numbers, actually looking at the make and model of the car, and based on that can extract which kind of, for example, needs to be stopped. A suspicious vehicle comes in, it can relate back with the data and stop that vehicle right there. Next. So this is a system, for example, you can detect weapons. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left right, you can see activity recognition. So for example, a person is crossing in a different rate, not walking the direction where everybody else going. So this is statistically dominant motion in the scene. So we can actually predict a lot of accuracy whenever somebody is doing different from the crowd. So mob analytics. Please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons fighting with each other, for example, a gun is pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? That can mean a lot. Something being done with the weapon means something, right? So this is why, for example, this activity recognition, and when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please.
So this is like a glimpse from the lost and found system that we've been able to develop the Punjab Safe City Authority, and I'm happy to share with you that in the recent past year, in one of the major events that's taking place, we are actually able to some of the miscreants using the artificial intelligence face recognition technology, using our completely home web systems. Actually, so these are medical applications. One system we developed for thalassemia detection, and another one for breast cancer. Next, please. So this is a further system. BrainBase is a very per system for brain like tumor detection and cancer detection, lifespan prediction, and also tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually yesterday, our system has been deployed to the PIMS in Islamabad. So another initiative you all know about the AI first petition that we organize. So this is initiative we move forward with ideas, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February inshallah. So if you want to, for example, you want to sponsor a prize money of ₹1 million for the winner, and if some company wants to, for example, a particular challenge, they want to entice people to develop a product of this sort, you want to offer a prize money, you want to develop product, you want to contribute this. Otherwise, next please. Like to address the need of the defense market, and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithm, professional level human manpower, which is required. The artificial intelligence program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop expertise, it's a 4-month long course in which they can develop this. Dr. Lanitz. Already finished, sir. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I'm going to, so this I really hurried up the things. Thank you very much. I hope you enjoy the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff. Thank you. मैं इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो खत्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दूर से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी बेसर पे जाए। मैं उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडिया का नहीं था, बैकेंड पर के काम करते थे, बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस, एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड इंटरनेशनली बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम अली शेख है। हमें यहाँ लिबास स्टूडियो है, हमारे ब्रांड पे जो होती हैं, जो अन्य स्टेज कपड़ों को मिल सकती है, जैसे लव सूट मिल सकता है, उसमें कोई शर्ट भी मिल सकती है, कैजुअल जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्राउजर, टी शर्ट, लेडीज भी ब्रांड है, आपको अवेलेबल सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। जी हमारा डी मार्ट यानी कन्फेक्शनरी ग्रोसरी स्टोर बेसिकली सोल्जर बाजार से है। यहाँ एक्सटेंडर अपॉर्चुनिटी भी हमने अवेल। हमारे पास यहाँ ऑयल, सर्फ, लॉन्ड्री लिक्विड, हैंड वॉश, इस तमाम चीज़ें यहाँ सॉफ्टनर वगैरह मौजूद हैं। एक तरह के जो है वो इवेंट्स होने चाहिए इसके अंदर। आज जो मार्केट चल रही है, जिस तेज़ी से यहाँ महंगाई हुई है, तो उसके लिहाज से यहाँ बचत के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। बचत जो कि आप जिस नाम सुना कि एक्सपो सेंटर में एक दफा पाकिस्तान की तारीख में एक बचत एक्सपो लगाई गई, पार्टिसिपेंट्स रह गए, फेज भी होना चाहिए, जो कि इंशाअल्लाह इसे 25 जून के अंदर इसका ऐलान किया है। तो ये अपील है तमाम ही होलसेलर्स पार्टिसिपेट करें एक्सपो का। अस्सलाम वालेकुम, सैयद खावर है। मैं QNN फ्लेवर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। QNN फ्लेवर जो बेसिकली ड्रीमबल फूड है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जिम की पूरी रेंज आप लोग देख रहे हैं, जैम, गोल्डन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल जैम है। इसी तरीके से नहीं है, हमारे पास सॉसेस हैं, मैक्सिकल है, और की पूरी रेंज है जिसमें जिंजर गार्लिक की रेंज है, रेड चिली, ग्रीन चिली, पपाया वगैरह तमाम वगैरह है। केचप भी है हमारे पास, और रेड चिली भी है, सिरप भी है। इस वक्त हम यहाँ पे 4 PM
Greetings. I'm Badar. I'm director at Powerhouse Private Limited. We are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which is organized here in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe that IEEE platform is a great platform which benefit the industry, and it gives us a opportunity to interact with B2B customers and foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all commercial entities to participate and exhibit their products so that we can benefit, and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE organizing such a great exhibition, as they always do. We see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going in this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you. है कंपटीशन के साथ जो निशानाबाज उनके लिए हम जो नए शूटर्स हैं उनके लिए हम ये प्रोफेशनल इवेंट या डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, हमारी टीम बाहर के मुल्कों में ये खेलने के लिए, तो हमने जो चीज़ें बाहर होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और हम उसको फर्स्ट टाइम अरेंज करें। इसकी सबसे बात यह है कि जितने भी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर्मी, रेंजर्स है, एफ है, या इवन जो बाकी जितनी भी पुलिस है, कमांडोज हैं, इन सब ने इन्वाइट किया है अपने स्किल से जो अपने उनके प्रोफेसर्स हैं वो आके इसमें हिस्सा लें और अपने को सामने हुए इसमें सपन चैलेंज किया है। कुछ इसमें खास इनाम रखे हैं, सर्टिफिकेट रखे हैं। और जब हम ये अरेंज करते थे तो यूनिफॉर्म पर्सन को शूट करते रहे, तो इसलिए जो थे कि जो बेहतर शूटर्स उनकी तरफ से रिक्वायर किया अभी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। हमने सिविलियन कैटेगरी रखी है कि वो जितने भी सिविलियंस है, क्राइसिस वेपन है, वो आके अपने जो स्किल्स है वो और इसमें एक कंपटीशन में हिस्सा। फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट हमारी 50+ हमारी वुमेन आबादी, तो खवातीन हमने स्पेशल कैटेगरी की है। इन्हें जो भी खवातीन शूटर्स जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है, जिनको लाइसेंस वेपन, वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी अपनी जो स्किल्स उसको आजमाएं। हमने इनिशियल 6 सितंबर को डिफे रखा था, मगर एलएम का मौका इसमें तमाम हमारे प्रूफ हैं, तो हमने 9 सितंबर पर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कॉम्पिटिशन जा रहा है, जिसमें तमाम नेशनल इंस्टीट्यूट हिस्सा लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे पाकिस्तान इमेज है वो बाहर जाए और हम दिखाएंगे कि पीसफुली लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ कैसे करें। तो ये मेरी और सिंध पुलिस की, सिंध गवर्नमेंट की, उनकी सपोर्ट के साथ हम इसको करें और इसमें जितने भी लोग हैं सबको मैं इन्वाइट करता हूँ कि इसमें आए और अपने स्किल्स इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ इसको वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और इसको हम एक प्रोफेशनल से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको, और ये जब हम प्रोजेक्ट करें बेहतर तौर पर हम पाकिस्तान को आगे रख सकें। थैंक यू। ये बताइए कितनी रोजा ये कॉम्पिटिशनशिप है, कितने में जो शूटर शिरकत करेंगे? वन कॉम्पिटिशन है, सुबह से शुरू होगा, शाम 5 बजे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस जो लोग के जो हिस्सा लेने के साथ आएंगे उनके लिए हमने ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त है, जिसपे पाकिस्तान और सूबों के खाने हम आप लोग लिए जो आप दोस्त आएंगे, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, गेस्ट आएंगे, उनके लिए वो रखा है ताकि एक डिजिटल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये मेहमान नवाजी वाली तरफ से सिंध गवर्नमेंट से उन लोगों के लिए जो इसमें लेंगे और जो देखने आए, तो ये भी एक इमेज है जो कि हम पेश दुनिया के आगे कंपटीशन हो रहा है, बल्कि सिंध की रिवायत कैसे हम उनको मेहमानों तरीके से किया हुआ उनके खाने पे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 10+ लोगों ने रजिस्टर है, तमाम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, और ये वो हैं जो कि यूनिफॉर्म, उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी के टोटल जो रजिस्ट्रेशन है 140 लोग हैं इसको अपने आप को रजिस्टर है। प्राइस हमने उसमें रखा कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस 50,000, प्राइस 30,000। इसके अलावा हम उनको मेडल्स और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। पिस्तौल की गोलियां वो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें खुद खेल रहा होता है उसकी तरफ से होती हैं,
उसके लिए हमने POF वाह को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना लगाए, वहीं से बुलेट ले सकेंगे और वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिकली हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें, मैच पे कोई उनको नया सलाम दे। तो ये सब की हमने एक ही जैसा स्टैंड है ताकि सब अपनी जो है काम को आजमा सके। जो पाकिस्तान में फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि काउंसलेट काम कर रहे हैं, सब हमारे उसमें मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन दी तो जो कौंस में सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं वो आएंगे, जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करेंगे, इंडियन है वो सिविल कैटेगरी। तो जितने भी काउंस हैं दे आर आल्सो इनवाइटेड और वो लोग इसमें हिस्सा लें। अच्छा सर, ये बेस्ट इवेंट करने का मकसद जो है वो जरा मकसद ये कि हमारे लड़के, आप ये शूटिंग टीम का खड़े हो, हमारी शूटिंग के कैप्टन है और इसके अलावा एक शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, ये वो जो अपने शौक से इस स्किल को सीखा और मैं वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स लिया। तो वो वहाँ पे देख के आए, सीखा, उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इन कर रहे हैं। नॉर्मली बाहर पाकिस्तान का जो नेगेटिव मीडिया इमेज है कि पता नहीं यहाँ होता है, सेफ नहीं है, तो ये उनकी मैसेज है कि यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे बाहर में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी यहाँ पे करते हैं। हम तमाम जितने भी फोर्स उसके बीच में रिलेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन के लिए जब हर जगह से लोग आएंगे, एक दिन एक साथ गुजारेंगे शिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है। शूटर या वो जो टीम लेके जाती है और सेम के मेहमान हमसे मुस्तफीद है उसको एंजॉय करेंगे। तो पॉजिटिव इमेज है जो ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए हम दे रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं और हम भी वही यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकें कि दुनिया में किसी और जगह होती है। नो एज लिमिट, आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए या फिर आपको यूनिफॉर्म पर, ये 2 कंडीशन है। और उसकी रिसेंटली हमने कि जब शहर में क्राइम बढ़ा था तो आपसे एक्टिव फोर्सेस भी बनाई गई थी, अब वायलेंस ज्यादा हो क्राइम में, तो अब क्या प्लान कर रहा है हो रहा है या नहीं हो? अभी रिसेंटली आपने 15 जो गेट काउंट आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? वो SSU ऑपरेट कर, SSU की टीम वहाँ पे है। ये स्ट्रीट क्राइम है हमारा फर्स्ट से जाते हैं तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या तो हम उसमें पेट्रोलिंग भी निभाते हैं, मगर उसके अलावा जो 5 की जो सर्विस है रन बाय द SSU के लोगों से और हम उनकी मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट की वजह से एक कॉन्फिडेंस शहरों में 5 पे कॉल करते हैं, टाइम से पुलिस आ जाती है और ये डेटरेंस क्रिमिनल्स के लिए वो रोकने का बायस बनता है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं कर रहे हैं और आइंदा इसी तरीके से करते हैं। वो बिल्कुल बनाई थी। रिंग फोर्स का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ जैसे स्टेडियम में वुमेन टीम हुई है, अब जब यहाँ पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे लोगों की हेल्प करने के लिए जेटिंग फोर्स का था कि अंदर जहाँ पे गाड़ी या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हमने लिमिटेड 20 लोगों की जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम उसको भेजते हैं। मगर मैच को हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अभी आप देखेंगे जब उनकी मैचेस होंगे, खवातीन आएंगी तो आपकी कमांडोज को भी स्केटिंग में उनकी लोगों की हेल्प कर साइड करते हुए और हमारे मेल कमांडोज देंगे, तो दैट इज फॉर इवेंट्स ओनली। कहीं कमांडो की द्वारा जो पेट्रोलिंग है वो नहीं देती है, जिसकी तक आपको बताया कि मुकाबला किया और हमने रिस्पांस किया, वो बनता है अलग से जैसे कि अपने कमांडो हॉटस्पॉट से खड़े होते थे। एक दो दफा जो ग्रीन शायद की गई थी बात ये नहीं कराची की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड हम उसको रिप्लाई करते हैं। अब जो 15 स्पिन की है वो SSU विंडो से की है, तभी इस वजह है कि 3 शिफ्टों 24/7 काम कर रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह उसी तरीके से कवर करेंगे, उससे लोगों की मदद रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई भी जो आप उसी से हम उनका जो खर्चा निकालेंगे प्लस इस जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हम 2 रखी है फॉर यू 5,000 फॉर सिंगल पर्सन, फीमेल कैटेगरी की भी 2,000। अच्छा सर, ये पूरी यहाँ में जो छोटी इदारे हैं वो ऐसे को फॉलो कर रहे हैं और SSU की जो इवेंट है उनको आगे बढ़ने की वो बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान के लिए बायस के हम में एक ऐसा इदारा है जिसमें एग्जाम्पल को पेश कर सकते हैं जिसको से उसको प्रोटेक्ट आगे लोगों के लिए भी उम्मीद की तरह के SSU बेहतर हो सकते हैं उनकी पुलिस को। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा इकदाम इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2% तो 2% बेहतर हो गया, 98% पुलिस का बेहतर बनता है। इस तरीके से अगर लोगों की खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सेंस ऑफ दे सकें तो जो पब्लिक ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर हो सकेगा। ये हमारा चौकंडी में SSU हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज और वहीं पे हम सारा कुछ सारा कुछ वहाँ पे हम बनाया हो जाएगा। ना टाइम लगेगा, चीज़ों को सिस्टम में जनरेशन होती है। एक उसकी तरफ में देखें कि मोटरवे पुलिस में कितना बेहतर होगा, उसी पुलिस के वहाँ पे काम करते हैं
तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और उससे मुतमईन होती है कि SSU की एक थोड़ी सी टाइम लगेगा इन चीज़ों में, एक बेहतरी की तरफ हम चल रहे हैं, आएगा कि सारे लोग इससे बेहतर तौर पे काम करें। हम ये सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लैस वेपन है उनका आपस में है, उनके स्पेशल टारगेट रखें, अपने वेपन्स के साथ हैं, उससे फ्री ऑफ चार्ज है, अपने स्किल्स के वेब के साथ हैं, वहीं आपस में मुकाबला करें, ऐसी कैटेगरी अलग से करा दें, उसमें आप उस सर और बहुत जल्दी काम भी एक्चुअली होने जा रहा है, तो उसमें ना क्या आपके लिए फीलिंग इस हवाले से ये भी सामने आ रही थी कि आपने कोई प्रपोज की एनटीसी को दे दिया गया क्योंकि आप लोग लेकर आ रहे थे, तो आई साहब ने जो एनटीसी की उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि तरफ से बेस्ट पुट करें, एक्स करें या वाई करें या जेड करें। हमने हमारी कई फायदा हुआ कि हमने इसमें प्राइस लॉक कर दी, वो मार्जिन्स खा दिए जो लोगों के इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्ट की का ऑफ करके हमने 200 मिलियन की कॉस्ट 100 मिलियन में कर दी, 100 मिलियन पे ही लॉक, चाहे वो ए टीम या बी टीम करे, उसका हुआ कि हमने डायरेक्शन दी, हमने चीजें किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल पे एक पूरा सिस्टम बाहर लगा दिया हुआ है, इसको फॉलो करें, तो इशारा उसी गाइड लगेंगे, और इसमें जब मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर, यहाँ के आवाम के लिए होगा, तो इस चीज से इंशाल्लाह होपफुल है कि आगे भी चीजें बेहतर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल है और मैं मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे में है एसेसरीज हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, वो हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम, क्योंकि हम सकते हैं यहाँ पे पूरे सब अपनी मशीन्स को लेके आए हैं, क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाइए, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। इसी तरह मेरे सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एप्लीकेट है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि बोन के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करें, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो क्वालिटी के ऊपर नहीं करते। हम इस तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, होल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट हमारे पास उसमें। सेम तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ आपके सामने फ्री लगी में हमने डेमो पे लगाई हैं। मैं सब एक्सपो सेंटर वालों में बताता हूँ, मैं खुद लाहौर में हूँ, और मैं ये अच्छी लगी, सपोर्टिव है, और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन उसको फैसिलिटी उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोग डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, जो सोर्स पे आ रहे हैं। इवन जेडी वाले भी आए हैं हमारे पास, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में फाउंडेशन है, तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर से भी बात किया है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
I shall be touch on the sales and local defensive support promotion and ideas. Later upon the and organization by itself. And then we will have a document related to the learning and activities of high. In case 2000, I'm George Staff Headquarters was later placed in New York in 2002. This depot is working at MOD. They also promote project activities in defense and for leadership. All those functions are from the corporate model with no function to sector. During it was been spent for the debris as a national platform export to defense manufacturing, service sector, and export through promotion, facilitation, and for the same growth of defense exports of Pakistan. Post this vision, the debris undertakes promotion, facilitation, and coordination of business opportunities and networking with the defense industry. It organizes defense exhibitions both inland and abroad, including event of the IAS, steps Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, we established 10 to 14 pavilions annually across the globe in different countries for our own production enterprises. We also unique honor of organizing country exhibition in Canada, which was mentioned a little while ago. With our national exhibitions, the depot has been organizing 2 editions of Lions and Vendor Defense Exhibition at Lahore, entered with the Chamber of Commerce Law. 2 editions of the Defense Exhibition at the Double Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber and the Defense Port Turkey at Lahore. The idea has been a flagship event which is conducted annually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these subjects, the depot also maintains National Science Space Center at Islamabad. We have built up an extensive map of the defense industry wherein our potential buyers across the globe are directly interlinked with public as well as the private defense manufacturers. Our company, the defense catalog has been prepared, which is not available online, but has always also been for foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, it also conducts sales other than the main part during ITRs. Briefly, on the centerpiece of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry, and then the private sector is facilitated for international participation. It is true that 8 private companies participate in World Defense Showcase without the support. However, this participation increased manifold with the government in future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national and international exhibitions. And we are focused on the suppliers, vendors and the small scale manufacturers basically to link them with the large scale manufacturers and our private and public large scale production enterprises. Coming over to the flagship ideas, as you know, the flagship event of international stature for Pakistan, which is the sought after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared form, both global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflect deeply embedded mutually beneficial relations. Then the main objectives which are desired to be a true of the ideas in provision of the best opportunity for the defense industry, both for the national exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the exhibitors, demonstrate operational skills and increase defense exports, image of the country, promulgate Pakistan's point of view internationally, and reinforce direct efforts in the defense diplomacy. Now, with this gentleman, brief introduction, I shall now take you through a documentary which will show you both the whatever I have spent about ideas in the depot, how did it actually reach to this destination. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आइडिया है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल जो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपो को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड
जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सकें, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकें। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इग्लू पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को इस वक्त यहाँ पे रिप्रेजेंट कर इग्लू पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हमने अपनी इग्लू आइसक्रीम और हमारी होम की रेंज है वो कंप्लीट हमने यहाँ एक्सपो जो कि बदर एक्सपो लगाया गया एक्सपो कराची में। तो हम इस वक्त हॉल नंबर 3 में मौजूद हैं। आप लोग विजिट करें और अपनी फैमिलीज को लेकर आएँ। और इस बचत बाजार में डिफरेंट स्टॉल्स ने डिफरेंट जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं तो आप लोग आएँ और ये डिस्काउंट्स जो है वो अवेल करें और इग्लू का स्टॉल विजिट करें। और हमने जो है अपनी आइसक्रीम्स के ऊपर और अपनी होम पराठा रेंज के ऊपर डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर किए हुए हैं। आप आएँ और अवेल डिस्काउंट्स। बात में और वहाँ पे बचत एक्सपो में और ये इसके ऑर्गेनाइजर एक्सपो हमारी आइसक्रीम का नाम है केटी आइसक्रीम, जो कि हमें अच्छी है, जो कि 19 स्कूप्स में 100 का यहाँ पे चल रहा है। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك تخلف الميعاد. अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कम होने वाली नमाज के तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में माया मकाम, फजीलत और दर्जा फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद फैज फरमा जिसका तूने उनसे वारमाया है। क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा, बेशक तू अकेला नहीं फरमाता। मैं 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से इवेंट हैज़ अप एंड नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर पार्टिसिपेशन। लास्ट टाइम हो सका पूरी दुनिया के अंदर को भी ऐसे इफेक्ट हुआ इसके अंदर, बिकॉज जहाँ भी ग्रुप्स और इन्वॉल्वमेंट होती थी वो कम हो गई। बट अगेन बैक वी टाइम के ऊपर हमें अपनी टिप इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और पड़ेगा क्या दोबारा सी डबल या उससे उस वक्त और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था आइडियाज़। पहली बार जब ये आए तो एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक पर काम करते, बट देन with the time they have become too good for us. MashaAllah, इतने के अंदर improved a lot and internationally now the exhibition is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम खान है, चीफ दुनिया टीवी 11वीं आइडिया के हवाले से आज ब्रीफिंग और हमें जिस तरह के तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज्यादा मालिक हैं जो यहाँ इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडिया तक पहुंचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ममालिक भी हमारे साथ हमारे जो ब्रदर खाते हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे जो हमारा तैयारा है बहुत से ममालिक में माजी में हम बात करें हमारा बहुत से मुल्क में दिलचस्पी रखते थे और हम जो इंटेलिजेंस उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत ब्रीफिंग बहुत हौसला हमारी है कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह से नहीं है। हम पैमाइश अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद कामयाबी के झंडे गाड़ी मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश मालूम होगा कि हम किस हद तक आगे बढ़। हमारी जो कौम है वो भी बाइस से इत्मीनान है कि मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तैयार किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो गए। आइडियाज़ और बस जो क्लाइनियल इवेंट है हर 2 के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब हम इसको नहीं कंडक्ट करें तो 4 साल की बात हो रहा है। उस वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह से करें और हम उम्मीद करें कि 2018 तरह कंडक्ट कराया गया तो बेहतर हो और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। यहाँ हाई लेवल डेलीगेशन की कंफर्मेशन आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम रियाज़मों से हमारे पास टिकट हैं और एग्जिबिट हमारे पास यूरोप हर तरह से बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस सेशन में आ रहे हैं। और साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक जो चीज़ किया है वो ये न सिर्फ हम अपनी पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री उसके साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री उसको भी इसके लोग आए और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सकें। क्योंकि इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर नेशनल लोग भी आए हुए हैं, लोकल इंडस्ट्री मौजूद है, तो इसमें एक बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ यहाँ के जो मुल्कों से आए हुए लोग हैं, हमारे लोकल लोग हैं कि वो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनी है OEMs हैं इंटरेक्ट करें साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़े। साथ साथ जो हमारे लोग हैं एट टाइम्स उनके भी वेंडर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की न्यू के साथ डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करें और हमारी जो इंडस्ट्री भी अच्छा है। इसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल में आप बताया आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ जब एक पाकिस्तान उसका इनका तो इसका ज़बरदस्त और पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे लेके जाएंगे। उनको पता पाकिस्तान भी इस लेवल का एक इवेंट करा सकता है। तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे साथ वो से चीज़ नहीं हुआ करते थे और इस तरह की चीज़ हुई और आजकल जो फ्लड के बाद जो हालात हैं वो साथ इस तरह का इवेंट कंडक्ट होना ये इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह फायदा होगा। अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम रखते हुए आ रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में इसका सेगमेंट 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले याद किया जाएगा और 4 स्पीकर्स जो एक्सपर्ट्स होंगे और इसी तरह नेक्स्ट डे पे कंडक्ट होगा टू सेकंड डे ऑफ आइडिया। उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आगे अपना काम करें और ये इन्वेंट करने वालों के अलावा
हमने परसों और उसको भी इन्वाइट किया हुआ, डेफिनेटली क्रूशियल से सीख रहे हैं हम पूरे जोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ की जो विनिंग स्टूडेंट उससे बाहर की कोई हो, कराची उसके अंदर का जो आउटडोर है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही मीट कर लेंगे। गवर्नमेंट में मैं ये कहूँगा कि उनकी पेट हमेशा मिलती रही, पास में भी मिली है। और इस दफ़ा आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टेडियम कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट सी हाउस, काइंड ऑफ उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हेड मौजूद थे। उन तरीके से सीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली, बड़ा पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट, जब सिंध गवर्नमेंट अपना साथ हमें दिया तो उस वक्त हमारे लिए आसान है। Assalamualaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I'm VP Sales at Shivli, Pakistan's only manufacturer of thermal images. Idea's third time given regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of industry and we can what sort of careers we can export and assist the armies of the world with. I would also like to thank Badar Expo Solutions because Badar Expo is basically organizing the whole event and they're doing a very good job. We have launched 2 models, SUA MP and SUA Mini at Ideas, which are binoculars with the LRF. We have this is SUA MP mounted over here, which is a LRF based SUA binocular that can be used in time or night time to give forces image with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड की वजह से जब 2000 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये साल के बाद हो रहा है, तो उसकी अभी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि 2018 में जो कंडक्ट कराया गया था उससे बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई लेवल इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम वजहों से हमारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पर एशिया तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिशन में आ रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस दफ़ा हमने बहुत चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो ये है सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ अपने जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है उसके रूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी हो, यहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री हो जाए तो इसमें एक बहुत एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे वहाँ के जो से आए हुए लोग हैं या हमारे लोकल लोग हैं कि वो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज OEMs हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ जो हमारी कंपनीज हैं एट टाइम्स उनकी जॉइंट वेंचर्स होते हैं मुल्कों की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेट ये हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा सा है। ये इवेंट है जो दुनिया से लोग आ रहे हैं बहुत लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में उसका इनकार किया जाए तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है, लोग यहाँ पर लेके जाएंगे, उनको पता चला कि पाकिस्तान भी इस लेवल का इवेंट करा सकता है। तमाम तर जो अल्लाह बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चेक नहीं है जो हुआ करते और इस तरीके की चीज़ होगी और आजकल फ्लड के भी जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक होना ही हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे होगा। इसके अंदर हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स का, जिसका सेगमेंट टियर 1 जो है वो आइडियाज़ वाले दिन उसका इनेकाद किया जाएगा। उसके अंदर 4 स्पीकर्स के एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी तरह जो सेकंड या जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट वुड सेकंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे और इन प्रेजेंट करने वालों दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स भी इनवाइट किया हुआ, वो सुनेंगे कुछ इनसे सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे शो से चाहे वो अच्छी की सकें हों, आइडियाज़ जो वेन्यू है कराची एक्सपो के बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट करेंगे। बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिली रही है, पास्ट में मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टेडियम मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड CM हाउस
CM साहब की काइंड ऑफ फेम उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हेड्स मौजूद थे, तो जिस तरीके से CM के इंस्ट्रक्शन दिए वो उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना सामने दिया तो उससे चीज़ें बड़ी आसान हुई। जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है और 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आपको समझ सके शो का साइज़ और चीज़ें जो है वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डायलेंस पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का काम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है दफा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर में होगा, आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनोवेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बनाएं और शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को लेती है और इसके साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंस के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम देते हैं, तो उसमें मकसद यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे दुनिया से डेलीगेशन की पार्टिसिपेशन आती है ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिज जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने हमारे जितने डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उनके बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम मतलब ये मिलकर एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करी है और इसमें जितना कॉम्पिटिशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं कितना एक पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया, ये चीज़ नहीं कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 70 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये सारे आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर चेक किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है, इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। मेरा नाम असद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। जीआईडी पाकिस्तान की लार्जेस्ट है कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से इसको देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हुआ थे, आई वाज द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। आई हैव द ऑनर के मैंने इसको देखा है करते हुए। 2022 है, हमारे 9 हॉल्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में। बहुत सारे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस हैं और एग्जिबिटर हैं जो इस इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। अभी स्टैंड पे 50 से ज़्यादा डेलीगेशन हैं, इससे भी ज़्यादा मार्केट होंगी। और जो एग्जिबिटिंग है 9 हॉल्स हैं लैटिन्स के एग्जिबिटिंग का जो पाकिस्तान में है वो भी बहुत बढ़ चुकी हैं। वेल और फॉरेन बहुत सारे और मुल्कों का इंटरव्यू है। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस सेशन होते हैं फॉर पाकिस्तान ये बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिला है दुनिया से नेटवर्किंग करने का। दुनिया को मौका मिलता है डेपो एंड बदर ऑल बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट
they can take this platform and exhibition to new heights. So good to both of them. Thank you very much. Pakistan up. I'm Kuratulain, I'm brand manager of Popular Day और यहाँ पर बदर एक्सपो पे हम कल से और यहाँ पर फुटबॉल है, लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हमने हमारा प्रोडक्ट है पॉपुलर का फ्लेवर्ड मिलकर इसके लिए भी हमने बड़ी अच्छी स्कीम लगा के रखी हुई है। वैसे इस पे 5 रुपये ऑफ है, लेकिन अगर आप इसको 500 तक की परचेज करते हैं तो आपको इस पे 2 पैक्स फ्री भी मिलवा। It's 5 p.m. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 85 मुल्कों के लिए शोकेस कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं तो आपस में मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन पर काम करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोविड गुजरने के बाद आइड हो रहा है और बड़े धूमधाम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाल चीज़ साबित हो जाएगा। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर डिफेंस एग्जीबिशन। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, और जहाँ पर भी ग्रुप्स और इन्वॉल्वमेंट होती है वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान लिए अगेन बैक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट ये हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे, इससे बेहतर लेवल पे जा सकें। तो उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक के काम करते थे। बट देन because of time they have become too good for this event. Mashallah, इतने अरसे के अंदर they have improved a lot, and internationally Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chiefs, the Chairman, Joint Chief of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as Ideas 2022. I'm very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors and trade visitors who travelled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, coalition government has been engaged to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our
economy. We inherited an economic catastrophe. Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the UT government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of the economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world, that cause economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan is not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision making. It was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making self-delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in a third of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impact of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population thrust below the poverty line. Given the mass scale of destruction, we have been back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction, rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We do share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP7, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the of the Global South climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to we have been successful, and is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP7 agenda, in addition to mitigation, adaptation, but the concept of loss and damage. Because after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss of our GDP, that it became to us that there's no international financing mechanism for devastation, for loss and damage
of this scale, and after our own experience joined the countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people to Pakistan to benefit the lack of such institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The spirit of rising global food and energy prices is putting a strain on national unity, thus deep internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that's demanded and required, ensure rule of law, and put people at the center of policy. This requires a much needed reset in thinking, as well as the way we conduct business with state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to President in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all of Pakistan can be represented. Our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, new technologies led by the revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In mind, the responsible use of technology can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is all committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interest, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations and the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement with regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and social economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to the establishment of sustainability in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and ability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Pakistan is exporting some high-tech defense products to more than 60 countries. Volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. Crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export
activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and the involvement of R&D organizations which entail competitiveness of certain aspects of this industry. In order to achieve objective, I will stress upon the integration of private industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be adopted with public defense industry. Potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated in the defense industry for more efficiency as well as volume production export. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the development industry. The unity government is also to deliver industrial strategy that contributes to and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands in the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Instructions formulation of a clear policy work to integrate the potential of Pakistan defense in distinguished guests. When we talk about the defense industry, International Defense and Seminar, in iconic form, showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, is the regional gateway for international and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates like Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international community, I would say that ideas and vision for global peace, stability, harmony amongst the community of nations. The ideas slogan, Arms for Peace, truly reflect Pakistan's stance in the regard. Ladies and gentlemen, before I want to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Export Promotion Organization for successfully a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud continuous support of federal and provincial ministers, Pakistan Armed Forces, law agencies, and government for the conduct of this mega event. I'm very pleased to know that the Pakistan Postal Service has issued a commemorative postage stamp to comment the holding of this special edition of ID 2022 in the 75th year of independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. Thank you all. Pakistan Zindabad. Professor Dr. Syed Irfan here, distinguished panel members, General RF, DG Defense Export Promotion Organization, world delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to stand here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some comments which I will now be sharing with you. One point that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So the combination which is there in the intelligence, which distills from the animals, we're trying to put through algorithm to the IT system. So the Turing test is far away. So I think we are not at the danger of being eliminated by the computer or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said, in use of any technology. It can't be perceived for everything. And also, we have to understand that AI use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over board of 64 pieces, 32 pieces, 62, 64. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no net. It's just data crunching and associating with the happenings around the globe, how are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a depth of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need exercise to understand. For a normal mind, it will need, okay, if the flood has come in a certain area, how does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI
being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs can reach that level where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two puzzles to the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are rules. It's not on chessboard, it's play life. And in case the things that are discussed are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what human being can do. Those of us who are in practitioner of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decision by a general with 5 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. Similarly, giving AI a data, one that is not available right now, the warfare data. Every war has different mix, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought process on the both sides. The man of 1945 Second World War, his way of thinking, and then of 2022, the different thing. So war cannot totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, having the will of opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that their advantage, and that is what brought us into the domain of force. Where I see more scope for AI, some part which was discussed here, it is shaping the minds of your opponents and making them calculate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through ethnic, or any other kind of warfare entity. So I think that particular act of AI is all in play, and we're not yet fully aware of it, but it is being played by the players at various levels. And if we look at it, we are also being subject to it. Recently, there was a discovery that Indian were creating fake sites and generating fake news to belie Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think, from what I gather from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which sap the energy of decision maker, like the logical calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one to another, and so many mundane plans. Those can be utilized and automated with help of AI with a fair degree of certainty, and of course some breaks in between for variables which you don't understand. But end of the day, the major decision that you make will remain you, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of the information which human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, not be a good predict something which may go very suddenly, and we may find that sometime in the future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing is certain, that artificial intelligence can never compensate for natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought, and sure, all the people attending here benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Defense Minister, State Ministers, Secretaries, High Commissioners, Legacy of certified officers from our guests from National Business Group and companies. Grateful to the Honorable Committee to launch National Defense Mission Seminar 2022, when we examine 5 Minister
the National Defence Industry, organizing the first year in year 2000 at Expo Karachi, with 35 international exhibits and 150 foreign. During the last decade, ISA is based volume, exhibitor, and products. In the society, we had a participation of 524 exhibitors and 201 representing 4 countries. And the number was the DG then, and we had a record participation across the world. The ability to accelerate the idea got adversity when 2020 has rescheduled due to the COVID, which was one of the worst tests of our living. World in general and Pakistan in particular fought with determination. COVID is still not over, but we have learned how to deal with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the edition of Ideas from 18 November 2020, the year of 70th edition of Independence of Pakistan. What a moment. Despite the gap years, we have received okay, 7% of the space rate today. Needless to say, IDEA 2022 will be much bigger in size and richer than ever before, inshallah. We are also in the process of execution to the delegation of around 85 countries and expect to receive a response from the other worlds. IDEA established it as an ethic and grand foundation for both future trust, friendship, and cooperation. In short, defense industry of great opportunity to defense industry of the world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan industry the outfit world by showcasing Pakistan defense capability in conventional gap, aimed at expanding the partnership in defense production to joint outsourcing and cooperation. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to share the idea twofold. On one hand, it aimed at the leading space for joint relations between Pakistan and into with the region and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity for friends of countries within Pakistan sit together, interact each other, collaborate, cooperate, and find solutions from the region and the world. I wish to special mention of Congress as the Great Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Metro Center Karachi as a venue for the Ideas 2020. I would also like to thank the Communication and Director General Post for recording portions of related post stamp on 14th of August 2022, saying holding up national idea in the 50th year of celebration of independence of Pakistan. Not to mention that Government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Solution, event organizer, for his unique funding efforts and host. Ladies and gentlemen, in the end, I would thank all the worthy guests for accepting the invitation and this ceremony. Honorable Defence Minister, we are especially grateful for your presence of it. I love you, gentlemen. Pakistan and Pakistan.
I will briefly touch on names and overview of defense industry and ideas, mainly directing on the objective and what the organization guides. I think we will have a tutorial which will take you through the daily and activities of IDEA. In 2000, the results of the bodies which were in under production in 2002. Since then, there was work on it. The basic aim was to project Pakistan industrial commerce and defense protection. The core functions of the corporate body with no function to next time. This statement was designed for the devils as a platform to provide defense manufacturing, service sector, and the through promotion, precision, and reporting for sustained growth of the force of Pakistan. For each region, the devils can be undertaken promotion, selection, and promotion of business opportunities for the defense industry. Defense is both inland and not including the of the ideas. Pakistan Pavilion Globe. Even in this regard, DECO establishes 12 Pakistan pavilions across the globe in different countries for our own defense production enterprise. We also had the of a single country exhibition because actually 1 year ago. With the United Nations, the DECO has instrumented in organizing 2 supplies and vendor defense exhibition at Lahore, insert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the exhibition at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port at Islamabad. The idea is a flagship event which started by me since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as size. Other than these core subjects, it also maintains international activity here at Islamabad. We have an extensive map of defence industry where are the potential lines across the globe are interfaced with as well as the private defence factories. A comprehensive defense catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to the foreign missions and presented to all the dignitaries. In addition, the DECO conducts seminars other than the main seminar during ITS. Primarily, just a brief on the centerpiece of efforts of the DECO, which is basically focused on advertising of the defense industry, wherein the private sector is facilitated for international participation. Happy to note that private companies participate in the defense showcase without the government support. However, this participation can increase manifold with the support in the future. We also focused on integrating and participating with the along with performers in our defense, national as well as international missions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors, and the small manufacturers, basically link them with large-scale manufacturers and public large-scale just production process. Now coming over to the flagship of ideas. As you know, the ideas is the flagship event international stage for fun, which is a sort of rendezvous for peace and knowledge sharing. With synergistic influence of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually desired to be out of the idea include promote the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximums of the domestic as international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense force. Image building option. Promulgate Pakistan's point of view nationally. And reinforce dramatic efforts in the defense division. With this gentleman brief introduction, I shall now take you documentary which will show you both the whatever I have spelled out of ideas and DECO. It actually reaches where we are standing today. Thank you very much. It is indeed a matter of great pleasure to see the International Defence Exhibition and STAR, more popularly known as IDEAS, gaining strength with every past year. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years, and I feel inspired to see Pakistan's achievements in a very new ground for us. Over the years, IDEAS has become a great meeting place for defence critics, high-level defense delegates, analysts, and trade visitors from all over the world. This rendezvous of ideas provides excellent opportunity to develop understanding and friendship, networking of the defense industry, trade and joint ventures, and more importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges we faced
by the defense industry. Today I am about the progress which IDEA has made and which is evident by overwhelmingly participation of traders, exhibitors, delegates and visitors in last 5 years held in year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed Forces of Pakistan are battle and known for their professionalism the world over. Our contribution towards the UN peace missions and our forces around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop a harmony potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defense products are now gaining market shares at the national level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-tech light crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to enforce its products on a competitive basis to responsible arms trade. Honorable guests, holding of India is a reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures. In addition to indigenous production, having on the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are in business with zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of IDEAS 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense states and visitors to IDEAS 2022 to be held in the world this year after years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community media houses who have did the mega event of international review for participation and stream. Thank you all. Pakistan. मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जी, वेलकम। और 75th हमारी एनिवर्सरी भी है और इसके ऊपर बिल्कुल आइडियाज़ 2022 होना चाहिए और भरपूर जोश और जज्बे के साथ होना चाहिए। ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है जी। हमारा माशाल्लाह टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप देखें कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं फुली इक्विप्ड हैं और माशाल्लाह से हम नई टेक्नोलॉजीज़ में जो है हम बहुत आगे हैं और उस लिहाज से पाकिस्तान का इमेज जो है और जो है वो हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है।
Mr. Slaudin, as outreach manager from SPR. We have a stall here in Ideas 22. It's a हिलाल publication. सभी जानते हैं कि हिलाल publications जो है वो 1948 से publish हो रहा है। अभी Ideas में अपने जो है वो magazines और कुछ डिस्प्ले करने के लिए आया है Armed Forces magazine, और हमारा जो business है वो यहाँ पे अपनी जो है Armed Forces में जो हमारी magazines release हो रही है, इसका motive जिसमें हम global politics को discuss करें, Ideas को हम specially जो है वो अपने magazines में highlight कर रहे हैं. It's available here and हम उसमें additionally जो है Ideas के ऊपर specific जो है हमारी special reports भी हैं इसमें. So it will be a really great opportunity for publications. That will be a great opportunity कि हम यहाँ पे अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें. My name is Özgür Canka. I am the Vice President in Meteksan Defense. Meteksan Defense is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan Pakistan sector for 3 years. We are the supplier of the Yakamos sonar, which will be used in the Milgem ship, which will be delivered by Asad. So today we are in the expo presenting our sonar systems, including Yakamos. More than that, we are also supplying submarine sonar systems. We are promoting our newest products, which we have already delivered to the Turkish Navy. And I think all these will support the Pakistan Armed Forces, the Navy, and the Air Forces in that sense. ये कुरेशी का स्टॉल है जहाँ हम खड़े हुए हैं कुरेशी गारमेंट्स की तरफ से बचत एक्सपो में आप लोगों को बहुत मुनासिब प्राइस पर बेबी फ्रॉक्स वगैरह जा रही हैं. इसी तरीके से मेंस की टी शर्ट्स हैं, रिजनेबल प्राइस है, एक्सपोर्ट ही है. आप लोग आइए और ज़रूर धमाकेदार ऑफर फ़ायदा उठाइए. अगर आप लोग चाहे प्राइस का थोड़ा सा आगे कर दें, ये 400 टी शर्ट राउंड की 1500 की 4 दे रहे हैं. इसी तरीके से 600 ईच 1000 की 2 दे रहे हैं. इसी तरीके से हर एक शर्ट पर टी शर्ट पर कोई ऑफर लगी है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलम है और मैं ओसाका लाइटिंग का एम्प्लॉई हूँ. और हमने यहाँ पे बचत एग्जीबिशन एक्सपो 2nd एडिशन में यहाँ पे इंस्टॉल लगाया है और यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आ कस्टमर का. के अलावा एक्सपो तो अच्छा लगा. पहला एडिशन था, उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया लोगों ने. लोगों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और हमारे भी काफ़ी पब्लिसिटी भी हुई थी, लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे. और इसके अलावा बाहर मंडी भी इन्होंने लगाई है बचत वालों ने दफ़ा. ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मंडी भी लगी है इस तरह के लोगों को कम से कम अच्छी चीज़ मिल सके. और यहाँ पे रिव्यू वगैरह सही है, बंदे हैं आते हैं. और इसके अलावा हम यहाँ आते हैं, लोगों को कम से कम में अच्छी चीज़ पहुँच. It's 6 p.m. So we went through the nitty-gritty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit and put the discussion in the context which is very important. Personally, I am a computer science person, technology person, and too afraid of technology. You can imagine how afraid I stopped using PowerPoint technology for the last 3 years now. I'm much better at distracting.
So this is distracting what I was doing. And you can actually see those PowerPoint slides were distracting actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, it was made for some other context. And my advice to all the students basically is I'm not quite able to end the PowerPoint slides from the classroom. But basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert will be able to make that meat into a beautiful piece of something eatable. And that same knife in a nincompoop like me who don't know how to use the knife will simply spoil it. That is as true the technology, such as a simple knife. It is as true with the more sophisticated technology like a PowerPoint slide, and even more sophisticated technology like the graphics. So these graphics help, but they help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G to be replaced with 4G to be replaced with 5G to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us. So we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Norvig and Noam Chomsky. The basic issue today where we are using data, I think that example is well put. We have all the data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We have been taking those readings for the last, say, 20 years, and we have a massive database which can precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data sources we have is of course efficient, is of course speedy, it of course skills up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of the major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool that has to be used, but it has to be used in a sparing fashion. We just saw what the soft power of USA versus the hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for the time, it happens, and it is an essential part, but we must not lose sight of the greater picture of our life. So the technology is as good as the people using it. If the people aren't good, I don't know what will happen. As this is pointed out, that in most of cases, we are using the same password that was given by the manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of the cases, even in Pakistan also. So, and this was also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in all the viruses that one wants, and the machine, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It was really an nincompoop of the manufacturer not to put when to shut down that machine, getting such signal. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not a panacea. It's good for solving specific problems, direct problems, and solving particular issues
very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the humans will have to take and shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and repetitive attacks that are and require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or will be useful for us, and context in which it will not be. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up their loyalty to an extent where it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in the countries, and it can and is happening around us also. We need to be aware of that, and we need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just a fake news or a fake alarm. So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussions, and we need to be aware about their philosophical understandings also, just not believing in the technology as a panacea for all. I would like to thank the speakers over here for taking time out and doing an interest and a wonderful discussion, a great learning exercise, and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation under the patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan and managed by Badar Expo Solutions is organising the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G and B2B interactions, ventures and investment in defence production sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition, in which speakers, both public and private sectors, will share their view on artificial intelligence defence market. Ideas will be held from 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नेमत, फजीलत और बुलंद दर्जा तमा और उन्हें उस मकाम महबर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे फरमाया है। क़यामत के दिन में उनकी शिफात न फरमा, बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। My name is Nadeem. I am Regional Business Manager at Cables Limited. Today we are on second ID22. आइडियाज जो है एक बड़े गैप हो रहा है 22 में, 4 साल पहले हुआ। इट्स अ गुड ओकेजन वेयर इंडस्ट्रीज कैन इंट्रोड्यूस लोकली। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कर रही है, जो उससे रेलेवेंट चीज़ हैं जो बड़े आर्म्स को सर्व रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ मौजूद हैं। पार्टिसिपेट किया। फास्ट इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सिंक टेक्नोलॉजी। उसके अलावा वी हैव एलुमिनाई प्लांट. We are the first schema certified here in Pakistan, and we have launched the Fast Tasdeeq, and first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से अपनी प्रोडक्ट घर बैठे बाई कर सकते। We also launched the Fast Tasdeeq कि आप फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। We claim that Fast serves you with a real quality, and we are manufacturer who highest capacity option. We are manufacturing kV, and also we are manufacturing green, जो कि हमने की सब्स्टिट्यूशन की है और उसके जरिए अपने नेशनल्स को और जितने हमारे बड़े मैक्स हैं उसको एनालिसिस करें। सो सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रखे हैं वो आई को जरूर विजिट करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि रियल फेस पाकिस्तान का। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Nadeem. I am Regional Business in Fast Cables Limited. Today here on second day of year 22. आज जो है बड़े गैप के बाद हो रहा है 22 में, इसे 4 साल पहले हुआ। इट्स अ गुड ओकेजन वेयर इंडस्ट्रीज कैन इंट्रोड्यूस जो लोकली हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कर रही है, जो उससे रेलेवेंट चीज़ें जो आर्म्स को सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही, तो वो ये सब मौजूद हैं। फास्ट केबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। फास्ट केबल फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्युमिनियम अलॉय प्लांट। वी आर द गोल्ड सर्टिफाइड पाकिस्तान, एंड वी आल हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट फास्ट तस्दीक, एंड वी आर द फर्स्ट वन हु लॉन्च्ड ऐप इन पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाई कर सकते हैं। वी आल्सो लॉन्च तस्दीक कि आप जब फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें आप रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। That Fast serves you real quality, and we are the who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 cables, and also we are manufacturing green. हमने की सब्स्टिट्यूशन की है और हम उसके जरिए नेशनल ग्रिड्स को और जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। सो आप लोग जो इंडस्ट्री के या रेलेवेंट हैं वो आइडिया जरूर विजिट करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि रियल फेस पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। क्यों and 20 of stakeholders across diverse defense industries. The Vision offers platform G2G, to the region, joint ventures and investments in benefit. Streaming seminar also facilitate discussions focused from the defense. 12 ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo. Obviously, ideas
जिस तरह आपने बोला कि एक ऐसा इवेंट है कि जो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री विद ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक बड़ा ब्रिज का काम करता है। तो कोविड में पूरी दुनिया लॉकडाउन था, वैसे वाला इम्पैरल, लेकिन दिस ईयर डूइंग इट एंड आई थिंक वी विल कैच अप टू, वी हैव मिस्ड आउट, बट येट अगेन आइडियाज़ का सक्सेशन में होना इस मुल्क के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इसमें ग्लोबल परसेप्शन के, क्योंकि आप देखते हैं इसमें दुनिया की मिलिट्रीज आती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे लाने में आइडियाज़ का बहुत बड़ा रोल है। एक लेवल का ये इवेंट है, जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन होती है, ये अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स, एक तो टॉप क्लास होल्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान मिलिट्री हो गई, हो गया, बदर एक्सपो हो गया, यहाँ लोकल अब जितने बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म्स हैं, तो दिस इज़ वन इम्पैक्ट। और कराची खुशकिस्मत है कि हर साल कराची में तो थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसी होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो कंपेयर पुटिंग पावर ऑन ग्लोबल स्केल इन डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन आवर रिक्वायरमेंट्स इज व्हाट इज पिच्ड रियली वेल इन दिस। IDEAS 2020 the stakeholders across the first industries, the platform for G2G, B2G, B2B Russians joint venture investments in the construction sector. A street seminar will also help discuss on challenges within the events. The edition of IDEA will be held from 22 November 2024 at Karachi X Center. Particular stakeholders across diverse defense industries. The base platform for G2G, B2E, and B2B venture and investment in the production sector. A trip seminar will also help to facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024, Karachi Expo Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to give information about the development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about details, the KPI, the use cases, the standardization about mapping on, and then from topic 2 until 4 about military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have time, you can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3 and so on. And then the next one, the bottom left. No, previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, some cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in 5G, this kind of problems is solved
So one use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these three generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor tooling, 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is show how we can compare 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can also in there several KPIs of the 5G, but I think for you to read. But here I just want to show you that all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in a very type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated calls, real-time telematics, and so on and so on. And of course, 5G is to AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release Gs, release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. 2020, 2022, so release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And countries have launched the 5G. I think Pakistan is there, but countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $20,000 million US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how it can be used for the defense? There are several key elements. I don't know. You can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, network function virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. Again, software-defined network, the network will be defined using software, not hardware. And on network slicing, which is the set of parameters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. You see this one is using AI, and then cloud native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next. So all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is a few examples. One done by MT, and then final, and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, then for distributed command control in the battlefield. Even some studies are investigating about the use of 5G for NTA, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields using millimeter wave, so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latency. Also the proximity service, PROSI, 5G for the AR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some
some pictures showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20. And the contributions comes from the smaller cells, 1,006. So all these components, if it is there, then it's very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked together. Most of them are not open. Okay. And then in the 5G, there is also decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And post 5G, in the after 5G, it is not just decoupling but also orchestrated using the AI. So this is most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one. And then next one. The next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impact for the security aspect. Next. Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of attacks. So that's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. Of course, the security standard is still ongoing. Now, next. Problem is this one. Even if standard is there, okay, the standard is just the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then other security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for military, but there are so many challenges. Technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. We need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next, that will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideas 2024 together stakeholders across diverse defense industries. The 4A division offers a platform for G2G, 2G, and 2P imagines joint ventures and investments in the defense production sector. A seminar will also help facilitate discussion on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telecom cables, that is optic fibers, copper telephone cables, duct pipe and jointing material. We are here today ideas to exhibit our new products to the home, fiber to the room, and a lot of other new varieties are demonstrated here. Inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for the development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रजा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। आइडियाज़ का आइडिया ही बड़ा यूनिक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा शिरकत कर रहे हैं। माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ न सिर्फ इसमें हमारी जो आर्म इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलती है, बल्कि शहरियों के लिए भी ये दिलचस्पी का बायस होती है। इसलिए 3-4 दिन भी ये एग्जीबिशन होती है। शहरी भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है कि भी ऑर्गेनाइजर्स ये इवेंट बड़ा कामयाब, और ये पाकिस्तान की 15वीं सालगिरह के मौके पर इवेंट हो रहा है। तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारकबाद दूं सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की। Identify particular stakeholders across the defense industries. The full platform for G2G, 2G, and 2 mentions joint ventures and investments in the sector. A joint seminar will also facilitate discussions global challenges within defense sector. The delegates will be held from 19 to 22 November 2024 at Karai Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Bhutto Zari, Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal Provincial Ministers, Joint Chief of Committee, Services Chiefs, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Executive of National and International Defense Sectors, teams, Excellencies, Kenya, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defense Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for gracing this occasion of 11th edition of International Defense Exhibition and Seminar Ideas 2022. I am grateful to the worthy guests and dignitaries from participating countries, foreign exhibitors, OEMs, trade visitors, and diplomats for their healthy presence to make 2022 a great success. I also warmly welcome all those who have joined us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I assure you that it is you who make this event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry always a strategic interest of any nation. Today, it is regarded as one of the major business in the world, alone accounting for approximately 2.2% of global GDP. On hand, globalization of defense industry has also changed the geography of innovation with new players, markets, partners, and opportunities. New strategic alliances ranging from Russia to joint ventures have become the norm of the day, both in the domestic and foreign industry. In the regional context, prevailing politico-military realities have asserted our desire to develop an agile and innovative defense industry
not only as an instrument of peace and stability, but also for its rightful contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has the potential to emerge as a global platform for defense, research, scientific growth, manufacturing, and joint ventures in order to strengthen our defense capabilities and support developments as well as exports in this sector. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industries today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resource, and infrastructure, not only to meet its own defense requirements, but also export to international defense markets. While major defense products are manufactured by the government-owned defense production establishment, private defense industry is also instrumental in producing high-quality supportive equipment and services. Joint development and production of main battle tanks, Khalid and Al-Zarar, aircrafts, JF-17, K-8, Super Mashal, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, fast attack missile crafts, different variants of APCs, air launch munitions, small arms, and high explosive mentioned in this regard. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clear approaches for protecting and defending Pakistan defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with its efforts, regularity, and have led to improved defense manufacturing and quality services. Resultantly, Pakistan's defense exports are steadily growing, and today it is touching the figure of 382 million US dollars. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also key to our mutually rewarding relations with international fraternity. Today, we are the real export partner of more than 60 countries. Through mutual partnerships and joint ventures, Pakistan Industries effort offers a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the significant role of the private sector in our industry. It is a fact that enhanced collaboration of private sector in defense manufacturing will not only increase production, but also provide the much needed support to public sector defense enterprises. The growing sophistication of private sector is an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capabilities through partnership, involvement in R&D, manufacturing, marketing, and defense products at home and abroad. Ladies and gentlemen, while many of defense products fully committed to enhance the production of internal defense exhibition and seminar ideas is our grand initiative to project defense production potential of Pakistan at par with international standards. Indeed, Ideas 22 aim to serve as a bridge between defense industry entrepreneur, traders, R&D specialists, financial experts, and policymakers for capability enhancement, cost-effective business. The other significance of the event is holding a strategic seminar on artificial intelligence in defense, paradigm shift, military strategy, and national security. During Ideas 2022, the discourse during the seminar will certainly help government to optimize the defense policies and priorities of Pakistan. I am certain that participants will accrue maximum benefits from this event. I congratulate DEPO for organizing this event of national significance and playing their part in promoting growth of Pakistan's defense industry. DEPO has surely been successful in providing such and rewarding platform to a large number of friends and partners from across the globe. Besides conducting ideas, it acts as a one-window national platform for promotion, facilitation,
and coordination of export and defense-related products from Pakistan. Through this opportunity, I encourage all stakeholders to make use of DEPO's platform for enhancing defense exports. My special gratitude for federal and provincial ministers, Pakistan's armed forces, law enforcement agencies, Karachi Metropolitan Corporation, and governments who rendered their all out to make this event a great success. Also, we appreciate the effort of our event organizer, Badar Solutions, who utterly marketed Ideas 22 worldwide and very passionately organized this show. In the end, I would like to thank Honorable Foreign Minister, all guests for gracing this occasion with their presence. I thank all for passing in the word. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. In Pakistan, for a European manufacturing for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodi, Fax, Matador, Hoist, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's an ingenious product. This is a 13-liter can of oxygen. So you can see it weighs just half kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing house. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grids, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's liquid oxygen tanks installed in a hospital, and hospital doesn't realize at what level inside and when do they need to replenish it. मैं इंटीग्रेट को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मैनेजर हूँ, और हमने इंस्टॉल यहाँ लगाया है, और हमारी भी तकरीबन 3 जगह इंटीग्रेट को, और हम कराची को काफ़ी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। हम हाइब्रिड काम रहे हैं, इस वक्त में सबसे बेहतरीन ब्लेड बना रहे हैं जो कि गवर्नमेंट पे तैयार की जाती है और सिस्टम के तहत तैयार की जाती है। इस वक्त अच्छी ब्रेड कोई भी नहीं बना के हमने रंगीन में एक प्लांट है जिसमें हम की तमाम वैराइटीज़ को दे रहे हैं, और उस पर काम एक्सपो में हमारा ये एक्सपीरियंस हमने लाल पे यहाँ पर स्टॉल लगाया था और आया था, उसी देखते हुए उसी को देखते हुए जो है दोबारा यहाँ पे कोशिश की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों की फीडबैक भी बहुत अच्छी आ रही है। जो पब्लिक जो हमारे एंड यूजर मार्केट में जहाँ पर उनको भी बहुत प्रोडक्ट्स पसंद भी आ रही हैं, और एक्सपो के काम करने में ये होता है कि यहाँ पे वर्किंग करने से जो यूजर्स को नहीं मालूम आते हैं और वो इसको ट्राई करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि हम एक्सपो के साथ यहाँ पर वर्किंग कर बदर एक्सपो के बारे में कहूँगा कि उन्होंने जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और जितना वो कोऑपरेट करते हैं, हर मतलब हमें ऐसा लगा कि वाकई हम यहाँ परेशान नहीं हो रहे हैं, तो उनकी एक काबिल सताइश है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका कोऑपरेट जो है हमें आसान नहीं दे रहा है, बहुत से उनसे कुछ कह रहे हैं तो सपोर्ट करते हैं। आपका 7 p.m.
देखिए, जब ये ऐसी हुआ था आइडिया के भी आइडियाज करना है, तो उस वक्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को कि जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोज बनाए, आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडिया आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान कितनी ताकत है, सिवर है, कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल में बड़ी डिमांड है। को तो सपोर्ट करते मगर जो आइडियाज़ है ये ओवर आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत मैटर है, इस बढ़ता है। लोग जो बाहर से बहुत से डेलीगेशन हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाजा होता है कि ये बड़ा पीसफुल अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं, जब वो खबरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए, मगर जब आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज स्टार्ट। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज जो है दोनों आप समझें कि एक से जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है, और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर हो, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज, टू पुट आइडियाज ऑन अ वेरी हायर लिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। I briefly touched on this sport promotion and the rating upon the objectives and what the organization has faced. And then after the tutorial document for the beginning of the activity idea. It was really hard and the launch started with the latest insurance production in 2002 system that was working at the end of the meeting. This was the possible industry and potential. All portions of the corporate market with no financial burden on the During statement, which has been selected for the release as a national platform, provides support to the defense manufacturing service sector and support chain through promotion, facilitation, and coordination of sustained growth of defense exports of Pakistan. Which is reading, the DEPO basically undertakes promotion, facilitation, and coordination of business opportunities for the defense industry. It organizes exhibitions both in and including the people to the ideas, establishes parks across the globe. Gentlemen and Sudan, DEPO establishes 12 to 14 participants annually across the globe in different countries for our own production crisis. We also unique honor of organizing a single country exhibition like Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to exhibitions, the DEPO has been instrumental in organizing 2 editions of the Supply Defense Exhibition at Law in concert with the Chamber of Commerce Law, 2 editions of the Defense Exhibition at Global Expo at Rawalpindi in concert with the Chamber of Commerce and the Defense Port at Islamabad. The idea has been a flagship event which is conducted by since 2000 and it has grown over a period of time both in stature and in size. Other than these projects, it also maintains an international standard display center here at Islamabad. We've done an extensive mapping of the private defense industry wherein the potential buyers across the world are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive catalog has brought the paid, which is not only online, but also be targeted to all our foreigners and is present all visiting countries. In addition, they also conduct seminars other than main seminar during class. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent times of the basically focused on monetizing of the private defense industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private participated in World Defense KSA without the government support. However, participation can be manifold the government support in future.
We focus on integrating and participate along the Chamber of Commerce in our defense, national and international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers and the small manufacturers, basically take them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defense production prices. Now over to the flagship unit of ideas. As you're aware, IDEA flagship unit of infrastructure for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Gentlemen, the main objectives that actually designed to be accrued out of ideas include provision of business opportunity for this industry, both for the global international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizational skills, increase in the defense exports, image building of the country, promote Pakistan's point of view internationally, and reinforce diplomatic efforts in the defense diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you through a commentary which will actually show you whatever I discussed about ideas and how they actually reached to this where we are today. Thank you very much. I'm Prabya Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good news of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. The team Pakistan, who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. अस्सलामुअलैकुम, मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक का और वॉल्स का, ये जी कनेक्शन का कोई काम हो हमारा केमिकल उसमें आता है। और 2 साल की हमारी ड्यूटी होती है, तो प्रॉपर काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा ट्रेंड, हम उसके थ्रू ये काम हमारा हो सकता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है।
जब ये कंसीव हुआ था आइडिया के भी आइडियाज़ करना है, उस वक्त मकसद यही था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एपो, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान पे गया है, और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत से डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान देखते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, वो खबरों में देखते हैं तो एक ज़माने में चले गए हैं, हम यहाँ आते हैं, नाइस रोड्स बनी हुई, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके मॉल हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना हमारा जो है वो पॉलिसी तरह लोगों को बताते हैं, और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज स्टार्टेड। एंड बदर एक्सपो जो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है, और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर है, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज ऑन वेरी हाई पेडिस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। defensive promotion organization and the arrange upon the objectives of the organization, and there I have a total document which will be the beginning of the appointment ideas. The appointment was raised in 2000 and the started by its related in Ministry of Production in 2002. The appointment is working on MOD. The basic aim was to promote and protect arteries, industrial process and support potential. One functions of the depot are performed at corporate model with no functional nature. We presented with the depot as a national platform to support the defense manufacturing service sector and export chain through promotion, facilitation and coordination for the growth of defense sector Pakistan. The depot is under promotion, facilitation and coordination of business activities and networking for the government. It organizes defense exhibitions in and abroad, including the flagship keyword ideas, such as Pakistan Pavilion across the globe. The depot establishes 2015 Pakistan Pavilions across the globe in different countries for our own production enterprises. We also had a unique order of organizing a single country exhibition, which was actually mentioned by. Regarding national exhibition, the depot has been instrumental in organizing exhibitions of these large events exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the defense exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port in Islamabad. The ideas in the flagship event, which is conducted by since 2000, it has grown over a time both in stature and in size. Other than these core subjects, the depot also maintains an international standard space center here at Islamabad. We have extensive mapping of the private defense industry, wherein our national buyers across the globe are directly interfaced with public as well as the private manufacturers. Comprehensive defense product has been prepared, which is not only available online, but has also been provided by foreign nations. It is presented to all the visiting dignitaries. In addition, they also conduct seminars and make seminar opportunities. Well, just briefly on the centerpiece of the research of the depot, which is basically focused on the private defense industry, and where the private sector is facilitated for international participation. It's hard to note that 8 private companies participate in World Defense Showcase without the sport. However, this participation can increase manifold with the government in the future. We are also focused on getting and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense national exhibition.
Besides, we are on displays vendors and small-scale manufacturers basically to link them with the large manufacturers and private and public large defense production enterprises. Moving over to the flagship of ideas. As you know, the IDEA is the flagship event of international stage of Pakistan, which is not after round for business and knowledge. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Some of the main objectives which are actually desired to be about the ideas include provision of business opportunity for the defense industry, both for the global and national exhibitors and domestic exhibitors. Maximum numbers of domestic as well as international exhibitors. Demonstrate organizations, increase in the defense force, image building of the country, promulgate point of view internationally, and reinforce diplomatic efforts in of defense diplomacy. Now, with this entry document with a brief introduction, I now take you through a commentary which will actually show you whatever I have spelled out about ideas and how did it actually reach this where we stand today. Thank you very much. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيد محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमायां काम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तू उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन में उनकी शिफा नसीब फरमा, बेशक दे के खिलाफ नहीं फरमाता. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen. It changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases. And we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good firm to exhibit what Pakistan is doing. And as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. So in COVID days, and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days. Pakistan was going through very difficult times. Pakistan imported a European manufacturer of electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zodian, Matador, 47, 48. Nowadays when people are running after oxygen and weren't finding it anywhere, then we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. It's a 13-liter can of oxygen, which is, you can see, it weighs just half kg, and it allows 205 puffs. So it was very much demand in COVID days when people weren't finding oxygen. Keep it at home. And has been importing this product for many years. Now we are manufacturing completely. This is basically, it is installed on the tanks, storage tanks. It could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, gives you the real data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when they need to replenish it. अस्सलामुअलैकुम, मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता हूँ। हमारा काम ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, टैंक का और वॉल्स का। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हमारा केमिकल उसमें आता है, और 2 साल की हमारी वारंटी हुई है, तो प्रॉपर हमारा काम होता है और पूरा हमारा ट्रेंड अमला उसके लिए काम करता है। हर वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा आता है और कंस्ट्रक्शन का तकरीबन ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम चला है, तो ये हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। मैं 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पहला प्रोजेक्ट जो है वो है हंट 01। ये एक कंप्यूटर है और सबसे है कि फॉर एग्जांपल किसी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन आपको विजिट कर रहे हैं, आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको स्टॉप करते हैं, तो आप विद इन 7 किलोमीटर की रेंज में आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम होता है कि जो जीपीएस कनेक्शन बनता है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं, तो ड्रोन डोंट नो कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं करता जब तक उसको जीपीएस स्टेशन का पाना हो। हमारे थॉट्स एंड इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है मेरा, जो हम लोगों ने बनाया है, हमारी लैब में है। उसकी मुख्तलिफ मैं बात बता सकता हूँ, 120 मीटर सेकंड स्पीड से वो उड़ सकता है। जो है यहाँ का एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, एंड इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर अटेंडेड। जितने मैंने अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेशन हाई रैंक ऑफिसर्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं
और मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं, सब लोग इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अल्फाज कहूँ तो एक बहुत बड़ा लगा हुआ है, और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से के पूरे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से आए हुए हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes place every 2 years, after every 2 years, and I would suggest all engineers and technocrats to must visit this expo. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Honorable Foreign Minister of Pakistan, Muhammad Israr Tariq, Federal Minister of Defense Production, Federal Minister, Naval Staff Pakistan, represented armed forces, ladies, exhibitors, LMCs, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good. On behalf of this Export Promotion Nation, it is indeed an honor and pleasure to welcome the parents of 11th Nations Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a special day for us to host guests from 7 countries. Honorable Minister, your presence is great, immense for us. The grace is Sukayan as the chief guest. Your presence will reflect your keen presence to our first amazing ideas, and it's a source of inspiration for us. Distinguished Pakistan Defence Industry only force behind our armed forces, but also a student of national security and important social component of the country. Its successive evolution has opened the new era of technological advancement into international market products. Through mutual partnership, joint venture, Pakistan Industry, today's offer wires of cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of the Government of Pakistan, the support of defence industry and serves through promotion, facilitation and nation. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defence is the vital role of the private sector of small and medium enterprises called as SMEs. According to estimate, 9% of the business and half or more of the export is because of the private industry called SMEs, and it generates employment opportunities for approximately 7% of labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, RIs operating in defense production possesses tremendous potential which, if capitalized, can generate rich revenue in the country. Ladies and gentlemen, International Defense Exhibition and Seminar, the flagship event of which is RIs biennially for the latest technological demonstration of the national and international defense industry. The exhibition is noted as one of the national rendezvous for enterprise, research development specialists, finance experts, top makers to promote cooperation, knowledge sharing, and more venture in the field of protection and security. Ladies and gentlemen, India is a leading event of Pakistan that brings together the global defense industry for synergetic business. The innovation and excellence exhibited here is meant the way of international defense collaboration among the friends and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous success story since year 2000. I am glad to share that IDEA 2022 passed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from that Karachi Expo Center has been booked to its full capacity with more than 300 exhibitors from 32 countries. Besides trade, we are also hosting more than 300 delegates from 50 countries, representing almost all parts. Besides this, the initiative of IDEAS 2022 includes the creation of X Space by establishing the newest stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international exhibitors. IDEA show is specifically organized for the people of Pakistan Seaview. Pakistan Postal Service has issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA Independence of Pakistan. The hospitality, warmth of Pakistani culture will be demonstrated during various research in the honor of dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support that Pakistan is providing to private sector and industry for their enhanced participation in IDEAS 22. Ladies and gentlemen, last but not the least, let me acknowledge the organization whose support and was the key in organizing this memorable event. I would like to thank the Ministry of Defense Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters 5 Corps, Chief Minister of Sindh, Trade Development Authority of Pakistan, the industry, the Sindhs, Karachi Police, Chief Metropolitan Corporation, their vivid support and contribution toward creating an enabling environment for the successful achievement. I would also like to pay special tribute to the people of Karachi for their support and hospitality. Thanks and appreciation are also due to our event Badar Expo
putting a very professional show, fielding a competent team, and effectively marketing across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and traveled to Pakistan for participating in this event. I thank you all. Pakistan Zindabad. मैं अमीन फारूकी, मैनेजर ताल्लुकात आमा कराची फोकस, आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है वो जो बर्थिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं, और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोर्ड समझते हैं, ड्रेजर्स यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवाम उन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है और हम केपीटी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडिया वाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जैसा बताया गया है कि तकरीबन 29 पार्टिसिपेंट के 100 से ज्यादा ममालिक हैं जो यहाँ पर शिरकत करेंगे। पहले आइडिया से अब यहाँ तक पहुंचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, अदफाई ताल्लुकात। और मैं आपको बताऊं कि हमारा तैयारा है जेफ अंडर 17, बहुत से ममालिक ने खरीदारी किया। माजी में बात करें कि हमारा अलजराल टैग बहुत से उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम आगे मजमूई तौर पर ब्रीफिंग बहुत हमारे लिए पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश हम बात करें वो त्याग शानदार रही और मैं उम्मीद हूँ कि ये जो दिन नुमाइश है ये मजीद जो कामयाबी का झंडे गाड़े की मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम उसके लिए भी ये बात मैंने कि उसकी जो मुसल्लह है वो पूरी तरह तैयार है। किसी दुश्मन की जरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्राई ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ। हमारा काम ये है कि हम वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, छतों का, वाटर टैंक और वॉल्स का, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन का कोई काम हमारा कंपनी में किया है और 2 साल की हमारी वारंटी हुई है। ऊपर हमारा काम होता है और पूरा एक अमला है हमारा, ट्रेंड अमला, उसको ये काम हमारा होता है। हाल वक्त तकरीबन पाकिस्तान में हमारा गया है और कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन में हमारी ज़्यादातर डिफेंस साइड में हमारा काम ये चल रहा है, तो ये हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ईगल हंट 1। ये एक कमर्शियल ड्रोन जैमर है और उसका बेसिक पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल किसी लैंड एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन्स आपको विजिट करें जो आपके लिए इनसिक्योर है और आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप विद इन 7 मीटर की रेंज में आप ड्रोन को जैम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जीपीएस कनेक्शन बताया है ड्रोन का, उसको आप जैम कर देते हैं। सो ड्रोन डोंट नो एनीमोर कि वो किस लोकेशन पे है और वो मूव नहीं कर जब तक उसको जीपीएस लोकेशन का पता ना हो। जब तक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन होगी उसके बाद हाईस्ट टारगेट ड्रोन है मेरा जो हमने बनाया, हमारी लैब ने बनाया। उसकी मुख्तलिफ स्पेक्स हैं, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। 120 सेकंड की स्पीड से वो उड़ता है। एलिमेंट जो है ये एक्सपो का काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर अटेंडेड। जितने भी मैंने अटेंड किए हैं उसमें से बेहतरीन एक ये है। और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स और हाई रैंक ऑफिसर्स जो है यहाँ आ रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स को विजिट कर सब लोग इंटरेस्ट के साथ रहे हैं। और टेक्नोलॉजीज़ का मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और पूरी दुनिया से और सान से
कि पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर से लोग आए और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी हियर. आई वुड सजेस्ट एवरीबडी that this expo takes every 2 years after every, and I would suggest all engineers and trades to must this expo. Mr. Bilawal Bhutto Zarari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic Pakistan, Muhammad Israr Tari, Federal Minister for Gun Production, Federal Minister, Chief of Pakistan Navy, Representative of Forces, Exhibitors, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, very good morning. On behalf of Defence Sport Organization, it is indeed an honor and pleasure to welcome the participants of 11th International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. Today is a very special day for us to host our esteemed guests from 50 countries. Honorable Foreign Minister, your presence is of immense value for us that you are based as the chief guest. Your presence indeed reflects your key pledge to our efforts in organizing ideas and it's of inspiration for us. Invest defense industry not only force behind our armed forces, but also of national security and important economic component of the country. Its progression has opened a new era of technological advancement, resulting in national market for quality products. Through mutual partnership, joint venture, Pakistan industry today offer wide area cooperation and collaboration. In this regard, I will proudly say that with the continuous assistance of Government of Pakistan, efforts for export of defence industry and services through promotion, education and coordination. Ladies and gentlemen, the other aspect of the development of defence industry is the vital role of the private sector of small and medium enterprises called as SMEs. According to one estimate, 90% of the business and half or more of the export of the private called SMEs, and it generates opportunity for roughly 70% of the labor force. Hence, it is no surprise that globally SMEs are an indispensable part of the major industrial sectors. In this regard, SMEs operating in fashion possess tremendous potential, which, if capitalized, can generate rich dividend for the country. Ladies and gentlemen, International Defence Exhibition and Seminar is a achievement of the DAO, which is organized by for the late technological demonstration of the national defence industry. The exhibition is now regarded as one of the national rendezvous for enterprise, research and development specialists, financial experts, top policymakers to promote cooperation, knowledge sharing, and support in the field of defence production and security. Ladies and gentlemen, indeed, as a leading event of Pakistan brings together global defence industry for synergetic business. The innovation and excellency exhibited is meant to pave the way of international defence collaboration among the and partners. Distinguished guests, IDEA is a continuous story since 2000. I have to share that IDEA's 2022 has surpassed all previous landmarks in terms of space booking, exhibitor, and visiting delegates to Pakistan. It is evident from the fact that Karachi Expo Center has been booked with full capacity with more than 300 exhibitors from 30 countries. Trade visitors, we are also hosting more than 300 delegates from 50 countries that almost all out of the globe. Besides this, the initiative of IDEA 2022 includes creation of extra space by establishing the new stalls to accommodate overwhelming participation from the national and international sector. IDEA's show is specifically for people of Karachi, Nishane, Pakistan, Sea View. Pakistan Postal Service issued an elegant commemorative postage stamp on 14th of August 2022, specially marking the holding of 11th edition of IDEA as the 5th year of independence of Pakistan. The hospitality, culture, warmth of Sunni culture will be demonstrated during various sessions in the year of the dignitaries who are visiting Pakistan. Honorable Foreign Minister, I would like to particularly mention the financial assistance and support the government of Pakistan is providing to the private sector of defence industry for enhanced participation in IDEA's 2022. Ladies and gentlemen, last but not the least, let me acknowledge the organization whose support and cooperation was the key in organizing this event. I would like to thank the Ministry of Defence Production, Armed Forces of Pakistan, especially the Headquarters 5, Chiefs of Sindh, Development Authority of Pakistan, Defence Industry, the Sindh Rangers, Karachi Police, Karachi Metropolitan Corporation for their web support and contribution towards creating an enabling environment for the successful of this event. I would also like to pay tribute to the Karachi for their all-out support and hospitality. Thanks and appreciation are also due
Government Manager, Badar Expo, for putting up a very professional show, fielding a competent team and effective marketing idea across the globe. I would again like to express my sincere gratitude to the Foreign Minister and all our noteworthy guests who have participated and to Pakistan participating in this event. I thank you all. Pakistan Paindabad. मैं शारिक अमीन फारूकी, मैनेजर तालुका जामा कराची फोकस, आपसे मुखातिब हूँ और हमने इस आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया है और अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करने कि हम किस किस किस्म की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हम जो है जो वर्किंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं और टाइप्स ऑफ कार्गो जो हम हैंडल कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लोटिला वगैरह है, जो हम बोर्ड साइन करते हैं, एजेंट्स यूज करते हैं, इन तमाम चीज़ों को मुतारिफ कराने के लिए और अवाम उन्नास को बताने के लिए हमने इस आइडियाज़ में हिस्सा लिया है। हम केपी की सर्विसेज को रिलीज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11 आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस बताया गया है कि तकरीबन 32 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडिया हम यहाँ तक कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आए जिनके साथ हमारे जो बिना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है जेफ थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी रखी। माजी में अगर हम बात करें, हमारा अलजरार टैंक बहुत से मुल्क की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजाई हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतजार आ रही है और मैं उम्मीद करता हूँ जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद कामयाबी के झंडा की मजीद कामयाब हो और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसे भी बायस इत्मीनान है, उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी दुश्मन की जाहिरिया मुकाबला करने के हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। Assalamualaikum. My name is Ahmet Özkan from Turkey, Aselsan company. Aselsan is a leading defense industry in Turkey, mainly involved in coordination, weapon sites, electronic warfare systems, closing weapon systems. We are here for promote our business with Pakistan Army as well as Air Force and Navy. We already engaged several projects here, and our main idea is to share our technology and our capabilities with our brother country Pakistan. And my office established in Islamabad. I am the area manager of this company, and we are very close to the headquarters, Air Force, Navy, and GHQ. We expect in this exhibition several opportunities, which are also very new designs available with us. This one is Gökdeniz project, which is engaged with Pakistan Navy to increase their defense capability in Pakistan. This was my brief information about my company. Thank you very much and wish you Pakistan Zindabad. मैं फातिमा और आज जो है मैं बचत एक्सपो में आई हूँ, एक्सपो सेंटर में। तो यहाँ जो है काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ग्रॉसरी के स्टॉल्स हैं, फूड आइटम के स्टॉल्स हैं, कॉस्मेटिक है और कपड़े वगैरह हैं। तो काफ़ी अच्छी एक्सपो लगी हुई है और इवन के यहाँ पे 50% ऑफ भी दे रहे हैं हर चीज़ों पे। तो ये जो है ईद भी करीब है, तो आप लोग आएँ, विजिट करें और डिफरेंट स्टॉल्स को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ईद करीब है, इसकी वजह से भी लोग जो हैं उनको चाहिए वो आएँ और यहाँ से ख़रीदारी करें और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो देख रही हूँ बहुत सारे स्टॉल्स पे जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और बहुत चीज़ जो है ना वो एग्जीबिशन लगी हुई है। थैंक यू। पहला एक्सपीरियंस है जी, कैसा रहा? जी नहीं अच्छा है।
फायदा हुआ? हाँ फायदा होगा, प्याज आलू वगैरह सब्जी में फल फूल में बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में आपको फायदा हुआ है। ये आप कहेंगे होगा ये बात? ये बात और एक चीज़ का ख्याल रखा कि जो एक लोग हैं उससे आप जुड़ो तो ये मुझे क्या पसंद। It's 8 p.m. My name is Cengiz Kahraman, Marketing Manager of Menatech Defense Technologies. Menatech Defense Technologies is leading a supply chain manager of Turkey and region. It's almost 30 companies. We manufacture sub-assemblies of trucks and vehicles. We have been delivered 150,000 components on compromising quality standard to NATO and USA countries. For almost 30 years, grounds of half century of experience. We are going to look to future with our R&D center. We are investing in different companies with different sectors. As an example, electromobility. As an example, we try to turn to Turkey the giant factory that is another subject, another project, more than 3,000 suppliers, and with 150,000 parts. As Menatech, we sigh for your priorities. Tech, measuring defense industry. Trade Sport of Moin Khan Academy 5 of Karachi Premier League Season 3 going to be the table toppers Malin Malangs up against North Nawabs. Earlier we Malangs have won the toss and decided to parrot EA and tail up against North Nawabs, who are fighting hard to secure the spot in the semi-finals. All set here in DJ Sports Moin Academy. Second game of the day. Asif Pathan has got the ball in his position. Plays a call from the umpire. Straight away, big wicket, open the start. DK, first ball, offside, comfortable catch behind the stumps. But DK walked out when troubling the scorers, just not fun. Offside could be out, easy one, gone. Goodness me. Mimran follows DK. 2 down here and just 4 on the board. Mimran also came back after scoring just 2. It's 4 for 2. Here comes the first big shot. And here comes the boundary. Full toss. Straight over the ball's head for the boundary. It was a gift for the new batter. Full toss again, smashed away, much bigger, much longer. Half a dozen. Once again asking to hit another full toss. This time he got plenty on it, Aziz. हमने क्रिकेट के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान में. कभी आपने सोचा भी था कि टेबल क्रिकेट किस लेवल पे हो रही होगी और लेवल एग्जीक्यूट करने पर केटीपीएल में कितनी तारीफ बनी है. Big shot on the right. It left, not quite comfortably taken, well within the boundary. And Patan continues to impress. Shadi walks back after scoring 2. It's 22 for 3. So delivery picked up. It's in the air. And this handball has gone over the boundary ropes. He goes for it once again. And gets plenty on as well. Once again, ball has landed beyond the boundary ropes. और हार्ड बॉल की क्रिकेट बिल्कुल उस तरीके से टेप बॉल जैसे कि बराबर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात हो रही है. मुझे लगता था आपने कुछ सालों पहले तक सोचा भी था कि टेप बॉल इस लेवल पे हो रहा होगा ना. पाकिस्तान में दुनिया भर में हो रहा है. एक विकेट भी इस दौरान गिर गई है. अजीज आउट होकर अब वापस पवले लौट रहे हैं. जिस तरीके से देखी जा रही है और तैमूर मिर्जा जैसे लोग हमारे साथ खेल रहे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है, तो जिस तरीके से और इस दफा पीएल को 34 कंट्रीज के अंदर 84 टेस्ट पर देखा जा रहा है. अरब की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसके लेवल के बराबर एक पैरेलल अंदर अलग क्रिकेट शुरू होने वाली है. सो डेफिनेटली बदर एक्सपो को जाएगा और जोहेर नसीर को जाएगा. A decision has been referred upstairs. It was a very good throw towards the bowler. Looks touch and go, Falak. There you see the red light information. It's gone back after scoring just 2. It's 43 for 5. Down the next in the air. There's a fielder out there who misjudges it. I think the ball has gone past the boundary ropes as well. Could have been another wicket for Irshad, but not to be. Hits that away on the offside over extra cup. All the way for 6. Probably the shot of the innings so far by Ubaid. By giving away 16 innings over. Once again hits that on the offside. It's up in the air. His time is well enough. I think he has. There was a fielder at long off who was trying to get around it. The all of the on-field umpire. Insane time by Kaleem.
Once again, he has gone big. He has gone straight. It's up in the air. Turns to the fielder, who takes it this time. It's Ali Afridi down there at long off, who makes absolutely no mistake. Team is removed at the score of 25, 62 for 6. Last ball of the innings, a low full toss that has been just hit away on the side. Are going to be looking to come back for the second one. There is a throw at the wicket keepers there. He couldn't collect it, the wicket captain. So they're going to collect a couple of the last ball of the innings. That means Mali Malangs are finish off at 66 for 6 after their 6 overs. A job well done by North Nawabs. All set for second innings. Majid Goli starting things from the far end. Down the leg side. And it went away into the offside. He's working really hard. This is going to be 4 runs. He's slowing down but still has enough legs to carry over the line. You got enough amount of bat on that. He didn't like the... And this time Hafiz Bola has trumped that with little disdain. Wow. He swings this away and swings this away beautifully for yet another 6. Full toss, got that away and got away. What a magnificent shot. Beauty Hafiz Bola. In the air, who's going to take it? And it is scored. So Hafiz Bola shows is over. He played really well for his 22 of 10, 1 for 28 on the board, North Nawabs. And this time around, batsman has given that go. And this is going to go all the way at mid-wicket boundary for 6. Zain has gone down, Trump. Absolutely smoked that away. Wow, what a good shot. Absolutely. गेंद करने वाले तेज बॉलर और उनकी पहली गेंद को उठा दिया है फील्डर के लिए यहां पर कोई मौका नहीं होगा 8 रन अब भी पीछे हैं पहली इनिंग में मलीर मलंग और इस बार बोल्ड कर दिया तो बहुत जल्दी हिसाब चुकता किया है फजल ने 12 रन बनाकर ये आउट हुए 8 पे 2 आउट एक दौर फजल आई इस बार शमी ने गेंद को उठा दिया है थोड़ा कुछ डिफरेंट एक्शन है लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं खेले टेबल क्रिकेट में इस गेंद पर जोरदार तरीके से बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौके बुलंद उबाला शॉट को कैच में तब्दील कर दिया और सर शफी जो है वो आउट होकर और सिर्फ 1 रन बनाया और 65 पे 3 खेले आउट इसी दौरान जोरदार तरीके से जहन खेले और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छेड़ जहन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है और इस बार नो बॉल ये होगी कनेक्ट उन्होंने जरूर किया है हासिल किए हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि मलीर मलंग को ये नो बॉल मिल गई है फजल और कोशिश यही होगी फील्ड की वो कम से कम यहां पर इनको बढ़तरी हासिल करने दें लेकिन ये एक और छक्का इसको कहते हैं कि मुंह में बॉल उन्होंने और बैट्समैन है जो जिन है उन्होंने सब भरपूर फायदा उठाया ऊंचा खेले इस गेंद को और गेंद फील्डर के पास पहुंची है कुछ एक आध टप्पा खाकर और ये बैट्समैन 3 रन के लिए दौड़ रहे हैं और पहुंच गए नहीं देखना होगा अंपायर ने कहा जी हाँ पहुंचे एक यहां पर हासिल कर ली है मलीर मलंग की टीम ने 96 रन किए हैं 3 विकेट के नुकसान पर उनकी बढ़तरी पहली इनिंग में 30 रन की यूबीएल अमीन कराची फुटबॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का 25th मैच नसीम राजपूत पाकिस्तान के पैस स्पोर्ट्स पर और जहां जहां हमारी नशरियात जारी है आप तमाम लोगों को डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में अकेडमी से खुशामदीद है 25वां मैच जहां नॉर्थ नवाब और मलीर मलंग्स की टीम मध्य मुकाबले हैं आप मेरे साथ 2 इंपॉर्टेंट है यहां कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गिरा खदर खिदमत अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब और उनके साथ हमारे लिविंग द वन एंड ओनली ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी मारिया मियादाद जो हमारी विंग को अब देखना शुरू हुई कायनात इम्तियाज और काम शुरू कर दिया यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट और फाइनल है उससे पहले
KTPL वुमेन्स प्रीमियर लीग लॉन्चिंग होने जा रही है। आप इसको भी बहुत फोकस करने वाली है। और हारून भाई आपको वेलकम करते हैं। हमने आपको किसी इवेंट में उस तरीके से देखा नहीं। इस बार पावर कनेक्शन फर्स्ट बार गेंद गई बाउंड्री के बाहर। हमने इससे पहले किसी और इवेंट के साथ आपको नहीं देखा जिस तरीके से आप कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़ी हैं। उन बच्चियों के साथ मिला के जो कुछ नई बच्चियां होंगी वो खेलें। मैं चाहूंगा कि जितनी फैमिलीज हैं उस पर्टिकुलर डे फाइनल के लिए एक आउट हो गए, ऊंचा शॉट खेला था और डी के जो हैं वो दाऊद खान पठान वो आई थिंक अगर ये देखा जाए तो बड़ा नॉर्थ अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं हम सुनने चाहेंगे ये खबर तो हारून भाई भी सुनने के लिए बैठे हैं। जबरदस्त फर्स्ट सेकंड के बाद इन बाउंड्री के बाहर गई कलीम का अच्छा स्ट्रोक इरशाद की गेंद पर। इशू है कि हमारी बच्चियां हैं एट द यंग एज से अबाउट 14, 15, 16 और ये इस दफ़ा ऊंचा शॉट खेल जो है वो आउट लाइन से बाहर 6 रन के लिए 6 रन का इजाफा किया कलीम ने बहुत ही अच्छा। I think that was more important to do rather than trying to prove कि I can be as good as my father because I can't be a legend. इस बार इमरान का छक्का यहाँ पर जबरदस्त हिट आसिफ की गेंद पर। लेजेंडरी जावेद नियादत की बेटी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगी। इनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। एक और छक्का मारा है और स्क्वायर लेग के ऊपर खेल दिया था PW और 30 से 34 ओवर का खेल चल रहा है। फिर एक और ऊंचा शॉट और ये गेंद जो है वो आउट लाइन बाहर गिरी। इमरान और करीम दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको यहाँ पर इस हवाले से भी जानते होंगे। और जबरदस्त हिट कलीम पकड़े गए इस बार। शॉट बाउंड्री क्रॉस नहीं करा सका बल्कि सीधा हाथों में गया और इस तरीके से ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर मलीर मलंग्स को। एडमिट लगाना चाह रहे हैं खासतौर पर वुमेन, तो यहाँ से वो प्लेटफॉर्म इनको मिल सकता है अगर बच्चियाँ अच्छी खेलेंगी। लेकिन एक और विकेट गिरी है और इस तरह मलीर मलंग्स को एक और नुकसान हुआ। एक और अच्छा प्लेयर मुख्तियार आउट होकर वापस गई। They knocked him out inside edge, rattled onto stumps, and have a look at that victorious bowler enjoying his victory. Imran goes for 14, 50 for 4 on the board. Maleen Malangs. Shorter one he gets and he really nails it over mid wicket for a huge hit. That one went out of the ground. And this time it's a high one. It's hit high enough. Doesn't have distance. No, it doesn't. And a very good catch is taken by Bola. An important catch here by Durman. Cameo is over. Just fixed with him. Full toss. Oh, you betcha. That's all the way. That's a biggie. What a sweet connection. What a blow that is. Full toss. Put over mid wicket for 6. एनवायरनमेंट नहीं होता, क्रिकेट का रुझान नहीं होता, लेकिन इस तरह की लीग्स होंगी और ये लाइव चलेंगी पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में एक मिनट जरा आप तो क्रिकेटर क्या बताना पड़ेगा। यहाँ विकेट गई है जी मलंग्स की टीम कहीं ना कहीं कुछ कमबैक करने में जरूर कामयाब हुई है इस मैच में। नॉर्थ नवाब का पलड़ा भी बहुत भारी। Oh, that's a very good delivery. Slow answer to finish things off. 6 done, 71 for 6. Effectively, they are 41, and it's going to be a target of 42 for North Nawabs to chase down when they come out to bat. इस गेंद को ऊंचा खेल दिया बैट्समैन ने और गेंद वाइड बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में ऑलमोस्ट मिड ऑन पर कैच कर ली गई और इस लेन में यहाँ पर कामयाब हो गई है टीम। यहाँ पर मलीर मलंग्स की और हाफिज पोला लौट रहे हैं आउट होकर। दोनों इनके कोचेज हैं उनको भी दे रहे हैं और जो हमारे वो हैं मोहम्मद समी साहब उनके लिए भी प्लॉट का उन्होंने ऐलान कर दिया अगर फाइनल जीतते हैं। ये प्लॉट नया सिलसिला शुरू हो गया ज़ुहैर भाई, ये तो बहुत ही बड़ा आगाज है और जनरली हम पूरे साल इन लोगों को सपोर्ट है। तो KTPL असल ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इस अंदर इन सारे लड़कों को इंशाल्लाह पूरे साल अपने साथ एंगेज रहेंगे। इसके जो टॉप होंगे वो फिर दुनिया के जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम आगे लेके चलें। जफर अब्बास भाई एक और चीज़ भी KTPL वुमेन लीग का भी आगाज होने जा रहा है, उसकी भी लॉन्चिंग होने जा रही है और जितनी आपकी इन्वॉल्व हमने देखी इमरान अली रोशन आपकी देखी DK की देखी सारे ऑनर्स मुजम्मिल अतहर सब लोग जुड़े हुए दिखाई दिए, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। क्रिकेट लीग जो सपोर्ट करेंगे बल्कि ज़ुहैर भाई ने कहा हम जेट्स को फिर ऐसा है तो मैं कराची से अच्छा टैलेंट लाऊंगा उनको यहाँ खिलाएंगे उनको नेशनल लेवल पे उतार करेंगे क्योंकि कराची जिस तरह से कराची ग्राउंड बर्बाद हुए हैं अब दोबारा से आबाद है तो सेशन में मैं शामिल रहूंगा इंशाल्लाह। ये बॉल के अंदर लड़कियां जो है वो हार्ड बॉल से काफी डरती हैं, तो उसमें अब ये कि इंशाल्लाह टेप बॉल से जब वो खेलेंगी तो उनका एक जो एक डर है वो होगा और वो हमारे नेशनल क्रिकेट के लिए उनकी एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी। प्लस
जो उन फैमिलीज के लिए, वो फैमिलीज जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए, जो हमारा एनवायरनमेंट है कि वो ऐसे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इंशाल्लाह हम एक ज़बरदस्त किस्म का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चियाँ आएँ, खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ये भी पारो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे छक्का। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और एक बार फिर अंपायर का इशारा कि ये छक्का। एबी पारो अब चाहेंगे कि इसी ओवर में खेल तमाम किया जाए। दो गेंद फील्डर हैं, जंप किया, क्या अपने आप को संभालने में कामयाब रहे हैं, बल्कि नहीं, वो गए हैं लेकिन कैच शायद उन्होंने अंदर फेंका है, क्योंकि हम देख रहे हैं और अब हम रिप्ले में मजीद अंदाजा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैचेस होगा ये यकीनन अपना तवाज़ो बिल्कुल खो चुके थे और तवाज़ुन होने से ठीक पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया अपने हाथों से। बिल्कुल ये कैच करार दिया गया है, रेड लाइट्स रॉन हुई और जितनी तारीफ की जाए फील्डर की वो कम है और इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बिला शुबा। एबी पारो रन बनाकर आउट हुए। यहाँ पर उठा के खेल दिया है कि हवा में देखना पड़ेगा फील्ड गेंद के नीचे और आसान सा कैच लेकर विकेट कर ली है और मुरसलीन को यहाँ ठिकाने लिया है उबैद ने, तो 30 विकेट हासिल कर ली उबैदुर रहमान ने 17 रन देकर। चौथा ओवर दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरी अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ से निकाला है डीप स्क्वायर लेग की जानिब, फील्डर मौजूद है, एक रन हासिल किया और इसी के साथ फतह हासिल करी नॉर्थ नवाब की टीम ने। नाम कर लिया है नॉर्थ नवाब की टीम ने। मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले और शूज़ के हवाले से पैदा जा रहा है। हम लोग आम लोग जो जूते बना रहे हैं के अलावा हम लोग फोर्स के लिए जूते बना रहे हैं जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, रेंजर्स के और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में और चीज़ें भी बना रही है बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सीन में जो शूज़ इस्तेमाल जाता है के शूज़ बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है। इसके अलावा हम लोग अल-ज़रार के लिए पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जो है चाइना की एक कंपनी मार्च के साथ और पाकिस्तान में पहली दफा बस रेडियल के जो टायर करवाए गए हैं वो सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए, सर्विस लॉन्ग मार्च की से। पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। में मार्केट साइज रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब एक साल में, और जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2-3 साल बाद 2 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बने होंगे और मार्च में ये नकू है और इस हम लोग अमेरिका ये पाकिस्तान से पाकिस्तान के लिए एक फखरी बात। आइडिया के हवाले ये बात करना बहुत अच्छी आइडिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुल्क से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स बारे में पता चलता है और दुनिया को ये जानकारी होती है कि पाकिस्तान की बहुत सी चीजें में मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं। नो डाउट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बोर्ड के लिए। Hello, my name is Ayhan Shenturk and I'm the business development manager for Program Defense Technologies. We're a Turkish company. The company was founded back in 1995. And our expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations. And those are the main products that we're promoting at this exhibition. We can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up 7.3 meter big dishes. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. We're an engineering company. We do systems integration. We have a good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition.
and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're happy about it. During the COVID periods, we've been having a lot of online meetings, or telephone meetings with our contact in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you for everything, for your hospitality. It's an honor to be here, and we look forward to improving relations with Pakistan. Thank you. My name is Abdul Basir, and we are exhibiting ideas from the platform K Electric. K Electric has recently launched a new company with the name of K Solar, and from the platform K Solar we are offering solutions to our commercial industrial users. In these solutions, we have several models for our industrial and commercial users with power purchase agreement. In the solution, assets belongs and we are going to deploy on the premises of a user, of our industrial user or commercial user. Solution. The customer don't have to pay any upfront costs. They only have to pay the monthly energy bill, which will be generated at the end of the month by using solar energy. So this is the solution we are offering to our industrial and commercial users. And secondly, for the second solution we are offering is of DPC payment. This is one of the viable options. The client doesn't have to pay upfront cost for the system. They have to pay the capital cost in terms of an installment for the defined period of time. And the third solution we are offering is the upfront cost, which will be paid by the consumer and at the time of installation. So these are three options available for our users. And in all of our solutions, we are committed to quality, and we are not compromised in quality. If the users are getting solution from K Solar, so what we are offering is one new solution for our users from survey till the commissioning the system. Only you have to contact K Solar. We will gonna give one window solution. You don't have to go anywhere for any other services. We're going to do the survey, we're going to do the designing, installation and commissioning, as well as we're going to do all preparation related application, and we will help our user to get the generation license. And once the license is right, then we will going to all the energy which is done by our other department of networking department. So I welcome all our users to please come to K Solar and have a good experience from us, and please try us. And last, I just want to thank the exhibition, the organizers, are really big to work, and I wish them a good luck. मेरा नाम फातिमा है, मैं जीएम में और एफडीओ का यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने 4 मेजर कंपोनेंट्स जो आप में एक मेगा कंस्ट्रक्शन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन हम मिशन के अलावा कुछ और काम भी करते हैं जिनको यहाँ पे आज रिप्रेजेंट है। सबसे पहले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और एनालिटिक इंस्टीट्यूट का एक सबसे अहम जो है काम है, और उसके लिए हम यहाँ पे डिजिटल कंस्ट्रक्शन जितने पैरामीटर्स हैं उनको रहते हुए डिजिटली कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे देखा था कि कोविड के हॉस्पिटल है वो प्रिपेयर किया था, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिस्टम को किया गया था ताकि वो डिजिटल कंस्ट्रक्शन जो है वो जा सके। का एक इदारा जो CTI यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे अहमियत का है जिसमें हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्निकल प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज मेरा ताल्लुका है तो IT की साइड से पाकिस्तान की तमाम वेज के ऊपर जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसकी वजह से लाइव अपना मॉनिटर है वो उसको हम डिस्प्ले आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान ने FWO ने पानी लिए टेलीकम्युनिकेशन इनके लिए ऑल ऑफ एक नया लॉ है जो है वो फाइबर का, और फ्रॉम कराची टू कंप्लीट हो जाएगा अगले साल के शुरू, और फिर तमाम जो है वो कनेक्टेड होंगी और आप पेशावर चलेंगे और सदा बगैर किसी जगह के आप टॉल पेमेंट जो है वो ऐड हो जाएगी। और जब इंशाल्लाह से हैदराबाद तक की मोटर चलेगी तो पेशावर से कराची तक आप कॉलिंग के ऊपर और सिंगल पर जो है वो कर सकते हैं। Assalamualaikum.
It is a matter of data to meet that reform that the First Minister has considered studies, analysis, hypervision, just study and entire cost analysis. The best function of this group of parties. We are grateful to monitor the basic million on March National Defense and 322 Badar Exam. Ladies and gentlemen, the National Defense Agency organized the first identity call at the Karachi with 105 national exhibits and 150 delegates. In the last 2 decades, IT has been steady in space, volume, access, and fund delegates. In ITES only, we had record participation, 524 visitors and 210 delegates representing 4 countries. And we are in the same with the region, and we have record participation across the world. The community created the idea what adversely affected when I-20 has to be researched due to the COVID, which was one of the worst of our living. The journal, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still over, but we have out with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that 11th edition is scheduled from 15 November 2022, the 75th celebration of independent Pakistan. What a proud moment. Despite of 4 years, we received more than 70% of the available space. Say that idea 2022 will be much bigger in size and stature than before, inshallah. We are also sending invitation to the delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invitees. I has established itself as an and contribute to both mutual understanding, trust, friendship, and cooperation. In that regard, Pakistan's film industry and film industry offer a great opportunity to the industry of the world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's industry to the outside world, showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm. Aimed at creating a means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing, and ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of idea, which is twofold. On one hand, aimed at increasing space for joint operations between public and private enterprises with the regional and global partners. While on the other hand, it aimed to enhance the abilities of public-private partnership, providing a unique opportunity for friendly countries within Pakistan sit together, interact with each other, cooperate with defense and find solutions to problems confronting the region and the world. I wish to make explanation of this year of Congress as well as the of the country of Pakistan for their support and availability of Acto Center Karachi as a venue of the ideas 22. I would also like to thank Chief Communication and Director General Pakistan Post for according for his commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the hold of 11th edition of ideas in the 6th year of celebration of independence Pakistan. I also mentioned that the government of India and Karachi Railway Station have always coming and very supportive of holding this event in. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and collaboration. Ladies and gentlemen, again, I would like to thank all the worthies for accepting the invitation to attend the ceremony. Honourable Defence Minister, I am personally grateful for your presence on this occasion. I thank all ladies and gentlemen, Pakistan very much. जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को
प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को वो हम सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिले और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिलकर ये एक बंदे का काम नहीं है, सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम करी है और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक पीक टाइम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स मैनेज करती है, तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडिया के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी था कि हमने एक स्टेम आई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये होगा। I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases. And we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hard good needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing. And as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which happened in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. For company in Pakistan who has imported European manufacturing plant for electrodes, are a very renowned brand. They comprise of Zorian, Matador, Poise. In COVID days when people were running after and weren't finding it anywhere, that time we looked this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, but you can see it weighs just half kg. It allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people finding oxygen, they would take it at home. And has been importing this product for many years. Now we are manufacturing completely. So basically it is installed on the tanks. The storage tanks, they could be liquid storage tanks or grains, whatever. So yes, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is in a hospital, and hospital doesn't realize that what inside is and when they need to replenish. आइडियाज़ जो कि वैसे एक बाइनी इवेंट 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से 2020 में हम इसको कंडक्ट करा सके तो 4 साल के बाद हो रहा है, तो उसकी वजह से अवार्ड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इस कार हैं और हम उम्मीद हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट करता है उससे मज़ीद बेहतर और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हो। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई डेलीगेशंस की कन्फर्मेंस आ चुकी हैं। पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों के पास डिग्नेटरीज हैं और एग्जिबिट हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बड़े लेवल के इस एग्जीबिशन है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि इस दफ़े बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ है, तो ये है कि न हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री उसको भी इसके लूप में लेके आए, तो भी एक ताकि दुनिया के सामने अपना जो
प्रोडक्शन है उसके इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनल लोग भी आए हुए हैं, लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो उसमें एक बहुत बड़ा उनकी अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों की कंपनीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट होते हैं बाहर के मुल्कों के साथ, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को भी करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। ये एक इवेंट है जो दुनिया से लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेका किया जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज जो लोग वो लेके जाएंगे, पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो छोटा कि अब हमारे साथ वो चैलेंजेस नहीं है जो हुआ करते थे, और इस तरीके की चीज़ और फ्लड बाद जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार रखा जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट होगा। इसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है आइडियाज़ के पहले दिन उसका इनेकाद किया और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इस सेकंड टियर का जो नेक्स्ट स्टेप पे रखा जाएगा दैट विल बी सेट ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके हम प्रेजेंट करेंगे, और ये प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने फ्रेंड्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इन्वाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीखेंगे। हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है चेक सेंटर, उससे बाहर कोई जगह हो, कराची एको सेंटर के अंदर का एरिया और जो एग्जीबिशन हॉल का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा मिली है, पास्ट में भी मिली और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, दे वर हेल्ड एट सीएम हाउस। सीएम साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने शेयर किया, और वहाँ पर कौन से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे, जिस तरीके से उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली बड़ा पॉजिटिव हमने देखा कि जब से उन्होंने अपना में गया तो उससे चीज़ें बहुत बड़ी आसान हुई। लेकिन ये कंसीव हुआ था आइडिया कि आइडियाज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त मकसद यही था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो उजागर किया जाए, और उसी को लेके जितनी भी एफर्ट्स हुई, जितनी हमने लोगोज बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्री, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ होप, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान की है, और लोगों को पता चला कि पाकिस्तान कितनी ताकत है, पावर है कि वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है, बिजनेस से बढ़ता है। लोग जो बाहर से बहुत से डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान आते हैं, वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज जो उनके कॉन्सेप्ट होता है पता नहीं, जब वो खबर में देखते हैं तो कोई गार ज़माने में चले गए हैं, मगर यहाँ आते हैं, नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं। और मेरा ख्याल है कि इट हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस द टाइम आइडियाज हैज स्टार्टेड, एंड वो है वो और आइडियाज़ जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान की इमेज को भी उजागर है, और इस चीज़ को देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे होगा, उसी हिसाब से फिर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। तो बदर एक बहुत कंट्रीब्यूशन है to highlight ideas, to put ideas on very higher pedestal. Alhamdulillah. It is one of the stakeholders across the 6 industries. The FIC platform for G2G, 2G, and 2G vendors and investments. A seminar will also be held 6 sessions on global challenges within the defense. 12th edition of IEC for 2022 number 2024 at Karachi X Center.
the other stakeholders across the defense industry. The exhibition for G2G, B2G, joint ventures and investments in the beverage sector. A speaking seminar will also discuss global challenges within the defense. The discussion of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. It was really visiting all the things related to many countries here. My father is also in army. We are proud to be daughters of a person who's in army. We love Pakistan and it was really a great experience. Really proud to be Pakistani. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी तरफ से हूँ और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें फिटिंग दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं और मेहंदी का आप देख सकते हैं सेटअप है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बदर एक्स में और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। खास कराची में हमारी जनरेशन को, हमारी फीमेल्स को खास बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेकर। थैंक यू बदर एक्सपो की इस तरह का उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। 2024 other stakeholders across diverse defense industries. The exhibition of the platform G2G, B2E, B2B joint ventures and investments in the A strategic seminar will also focus on discussion of challenges within the defense sector. The discussion of ideas will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center. Hello everyone, this is Sun from Naranko, China North Industries Corporation. Our corporation is an international defense company, and today we expected our most advanced defense product like BTV main battle tank and SH-15 howitzer. We are very honored and delighted to exhibit here. Thank you all. अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर ये कुछ बेहतर है बचत एक्सपो।
कुछ बेहतर है, इसीलिए ना सेल करी है। सही बात है। अच्छा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, माहौल है, होना चाहिए ऐसा लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। असल मकसद इसका यही है कि बचत होनी चाहिए लोगों को। होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही बचत होनी चाहिए लोगों के लिए, रिलीफ मिलता है इससे लोगों को। तो आप लोग को रिलीफ तो मिला ना? जी बिल्कुल रिलीफ मिला, इनकार नहीं करें इस बात का, बिल्कुल मिला है, अच्छा रिलीफ मिला है। जी, यानी कि आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होके जा रहे हैं यहाँ से। और ऐसे पर एक ब्रांड है उसके ऊपर जो है डिस्काउंट है, कैसी बात है ना। 12 महीने लगनी चाहिए, हर महीने में एक दफ़ा तो लगनी चाहिए एग्जीबिशन, ताकि हम जैसों को आराम मिले, सुकून है। जूस कर लिए। तो ये जूस और फ्रूट पे आपको डिस्काउंट मिला? जी मैं बाय 1 गेट 1 था जूस पे। और फ्रूट में भी मिला? फ्रूट भी आधी कीमत पे बाहर मिल रहा है 120-100 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये मिला तरबूज। तो ये अच्छा मकसद है कि रैंडम फ्रूट आप यहाँ से खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही बात है। आपको माहौल था जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने आपको प्रोवाइड किया, माहौल ठीक था? जी माहौल ठीक है, लोग आने जाने ज़्यादा ना कोई शान कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी फ़र्क है चीज़ों में जो चीज़ें परचेस की हैं। It's 9 p.m. IDEA 2020 brings together stakeholders across diverse events industries. The event also platform G2G, B2G, BTV, joint ventures and investments in the defense sector. A strategic seminar will also held to facilitate sessions on global challenges within the defense sector. The Fellowship Ideas will be held from May 20 to November 2024 at Karachi Expo Center. मेरा नाम डॉक्टर नीता है। मैं एज ए में पैथोलॉजिस्ट करती हूँ। मेरे साथ पढ़ा लिया ये मेरे साथ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही है। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव बदर वालों की तरफ से, बहुत अच्छा मतलब डिफरेंट से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के। हम अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोग की लैब इसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसको लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। IDEA brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day active platform for G2G, G and 2 actions, joint ventures and investments in the infrastructure sector. A team seminar will also facilitate discussions on challenges within the defense sector. The edition of Ideas will be held from 9 to 20 November 2024 at Karachi Expo Center. The Eastport Tool brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition platform for G2G, 2G, 2 actions, joint venture and investments in the sector. A speak seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense sector. 12th edition of Ideas will be held on 19 to 22 November 2024, Karachi Expo Center. पूल से या मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देखें कि ये जो तमाम के तमाम जानवर ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर कर रहे हैं? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक? जल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो काम हुआ है तो फिर देखिए ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए खरीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजाम आपके लिए जो किए गए खुश हैं?
जी अलहमदिल्ला ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया, सब कुछ जो हम पहले ही उतरे, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रंगी सिक्योरिटी दे दिया, उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिए सिक्योरिटी। चले सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत महीन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम बहुत जबरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी में, जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं, हर जगह पे आप देखते हो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या जबरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाजा कि पंजाब से जानवर पहुंचे हैं, वहाँ आपने कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा, कैसा अरेंजमेंट वगैरह कुछ बेहतरीन मजा आ रहा है यहाँ पे? बस मजा आ रहा है, हर साल 16-17 साल आ रहे हैं। अच्छा हर साल आते हैं, तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? 80 जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। अरे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं। अरे इधर ऐसा तगड़े ना वो सारे तोड़ अपने आप। अरे आपके आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आप क्या आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा, ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये 3 घंटे मुतमईन है आप सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं, सोल्डी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने सारा देख जाते हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके तामन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई सानू परेशानी नहीं किसी कम दी है। आज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी हर साल ही होया, किसी साल भी ना परेशानी नहीं आती। अच्छा किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा हाँ जी 1 साल के बच्चे, ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई वास्ते आंदे ने। क्या आपने तैयार किए हैं यार 10 महीने में, क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ कोई कराची वाले ये तो देखिए अंदाज जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे, आप जानवर देख सकते हैं। किस आइए आइए जरा, तो इधर आए आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है? आप भी पहलवानी है? पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल कौन सी है ये साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा को आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई, जो ना अपना मजा आया। और लोग भी बताएं पंजाब के शेर आपने देखे, वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने, जरा देखे जरा अंदाज अपना बताए। आप ही शेर ने कहा पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP भी खुले हैं, पानी का जो इंतजाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा तमाम लोग खास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूँ तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देख ये पूरा रकबा पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर 1000 एकड़ पर कायम किया, ये छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें VIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुंचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, जिसमें VVIP भी है, VIP भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको व्यापारियों को यहाँ पे फराहम की गई है कि आए और उसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत बेहतर अंदाज से करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फीस, फी गाय और फी ऊँट 4250 है, जबकि फी बकरी की कीमत 2000 रुपये
रखी गई है। तो एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके, हम देखोगे बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नस्लियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ, बहुत सारी ख़वातीन आना चाहिए बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने, जो कह रहे हैं उन साइल को दूर किया जाए। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जो भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोज़ वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारी से भी सुन चुकें, लोग से भी सुन चुकें, तो तमाम लोग मुतमईन हैं, सब इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ खरीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी खरीद करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त पास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं 15-20 दिन हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहता है, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज मैं एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हम अमली जामा पहनाया हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा, ये AI बेस होगा, और इसके अलावा स्टोरीज रहेगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई का, और बहुत सारे और टीचिंग भी मदद देगा। शुरू में हमने ये सिर्फ ऑटिस्ट बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाद हसन है और मैं यहाँ पे हेल्प टेक्नोलॉजी की तरफ से हूँ, और हम यहाँ पे हेल्प की तरफ से फीमेल्स के लिए सलून शॉर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिसमें हम ट्रिम दे रहे हैं, नेल पॉलिश दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं सेटअप है, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इधर एक्सपो ने। और इस तरह की जो है वो एक्सपोज होने चाहिए, ख़ासतौर पर कराची में हमारी हमारी फीमेल्स को खासतौर पर रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, इस वक्त काफ़ी रश है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को लेके। थैंक यू बदर एक्सपो की, इसका उन्होंने हमें चांस दिया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़े। थैंक यू। ये बदर एक्सपो की तरफ एग्जीबिशन लगी है बचत बाजार की, उसमें इनोवेटिव की तरफ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारा ये जितने शॉप हैं साथ में क्वालिटी लगा हुआ मार्केट में हमारा चल रहा है। इस पर हम टोटल जो अपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो फ्लैट 20% दे रहे हैं मार्केट के। मार्केट में एक चीज़ 240 रुपये की है, हम वो 200 रुपये की ऑफर कर रहे हैं, और ये मार्केट में जो प्राइस है ये 200 का है, हम 150 का यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। बदर एक्सपो का अच्छा एक इवेंट है, और पिछले साल भी हमने लगाया है, इस साल भी हम लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है, वो जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और हम भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनपुट डाल रहे हैं।
मवैशी में इंतजाम का आगाज हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स अभी खासे दिन बाकी हैं, इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। It is one of the stakeholders across diverse defense industries. The board platform for B2G and joint ventures and investments in the defense sector. A strategic seminar will also facilitate discussions on challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद मेरा नाम है, बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। ये हमारा बेस स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का। ये अलबशीर ग्रुप है जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप है, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉर्ड की डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज वेरिएंट्स हैं और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है। ये जिन गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल, मोम, जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं। और इसके अलावा हम सर्टिफाइड भी हैं, सर्टिफिकेशन भी हमारे पास ISO सर्टिफिकेशन भी है हम। और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हमारे पास, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा कंप्लीट सलून ऑन व्हील प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोयोटा हाईएस हो, आपके पास कोई ट्रक या किसी भी किस्म की गाड़ी है, उसमें आपने कुछ भी ना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हैं, ये आप देख रहे हैं, हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट मॉडल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ के ऊपर बाइक लेके जा सकते हैं भी हैं। और छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। मैं फूड इंडस्ट्री का CEO लोग मुकादम हूँ। आज हमने यहाँ पर उधर एक्सपो की ऐसे जो यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, उसके हवाले से हमने डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लॉन्च किए हैं यहाँ पर और हम तकरीबन 15-20% तक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग जी के ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने प्रिंगल्स का सब्स्टिट्यूट भी लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस बहुत रिजनेबल रेट्स पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे और रहे हैं। इस तरह हमने और मजीद इम्पोर्टेड के भी हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हमने मार्केट के भी रखे हैं और लोग आ सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। और मैं आखिर में बदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म किया और मैं लोगों को चाहता हूँ कि इसको आके अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। हमारे मवेशी मंडी सुबह से जस्ट हमने लेफ्ट टर्न लिया है। अगर आपने देखी होगी सब्जी मंडी के बाद फौरन एक बड़ा फेमस अल हबीब होटल आता है, उसके फौरन बाद नॉर्थ बाईपास का रास्ता है जो रास्ता कोयटा को भी जाता है, उससे मुड़े और अगर हम वहाँ से मुड़ते हैं तो फिर आप गूगल मैप में जरूर देखें कि 8 मिनट का रास्ता, तकरीबन 1 मिनट और जाए तो 9 मिनट का रास्ता है जहाँ से हम मुड़े हैं नॉर्दर्न बाईपास है। और आप देख सकते हैं ये रोड जिस तरीके का है, बेहतरीन किस्म का रोड बना हुआ है, तमाम की तमाम सहूलतें यहाँ पर की रही हैं। और ये नॉर्दर्न बाईपास से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर चलेंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर। तो ये नॉर्दर्न बाईपास का रोड आप देखें, यहाँ सुपर हाईवे से हम लोग आए हैं यहाँ और यहाँ आने के बाद लतीफ़ ग्रीन सिटी के नाम आपको ये पीछे बोर्ड दिखाई देगा, ये इलाका लतीफ़ ग्रीन सिटी की जानिब जा रहा है। और यहाँ आप वैसे भी देख सकते हैं मवेशी मंडी कैटल मंडी का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर सुपर हाईवे के बाद यहाँ दस्तयाब होगा। और उसके बाद आप लतीफ़ ग्रीन सिटी को जो रास्ता जा रहा है आप इसके लिए चलेंगे, आप जिस जाने देखेंगे तो फिर आपको मेरे पीछे इधर देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी खड़ी दिखाई देगी। और अगर आप मेरे इस जानिब भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर सिक्योरिटी खड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए ताकि आप बेहतर अंदाज से आके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें।
मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ माशी बहरहाल अपने अरूज पर है और लोग बेमददार इंतज़ार में हैं, लेकिन एक और मुझे समझ नहीं आती कि हम तो जानते बूझते अनजाने में गरीबों को ये एहसास दें कि आप गरीब हैं। यानी आप ऐसी लाइनों में जहाँ गुर्बत का एहसास, मैं गवर्नमेंट साइड में NGOs तो जो अपना काम कर रही हैं उनको तहसीन पेश करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये अपने उन लोगों से कहूँ जो इस अंदाज से लोगों को रिलीफ दें कि उसे वक्त का 100% यकीन हो जाए कि वो गरीब है। यानी हमें खुशी होती है कि हम बड़े बैनर लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि रिलीफ बाजार है, ये बाजार है, यहाँ गरीबों के लिए डिस्काउंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना। हमें उनके इस्तेकाक का और उसको मना करने का सबसे एहसास होना चाहिए। हम अगर किसी को रिलीफ रहे हैं और वो इसको दे रहे हैं, वो अवाम की वजह से हम इक़्तिदार में इक़्तिदार में आकर हम उनसे जिनसे वोट मांगते हैं या जिनसे हम ये तवक्का रखते हैं हमारे लिए खड़े, तो ऐसा जुल्म है कि हम को ये एहसास इस वजह से दिलाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम गुर्बत की आधी लाइन पर हो और हम कोई बादशाह हैं जो तुम पर ये एहसान कर रहे हैं कि तुम ये हमने यूटिलिटी स्टोर दिए हैं या हम तो चंद कतारों में खड़ा करके लोगों को कम रेट के ऊपर दे रहे हैं। या तो आप मुफ्त में दें तो समझेंगे आपने कोई बड़ा एहसान किया है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़ुहैर नसीम ने बचत एक्सपो में ये इंतजाम और एहतमाम किया है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है। वहाँ पर तमाम ही ब्रांड्स मौजूद हैं और इनका मेरा काम ये है कि उसको ये मेक श्योर करें कि वहाँ रिस्क कम है और उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ लेने आने वाला कोई गरीब या कोई शख्स मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मुझसे ज़्यादा इज्जत रखता है अपने घर में, अपने खानदान में। तो हम बार बार ये तस्करा ना करें कि ये हमने गरीबों के लिए या कोई मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा एहसान किया। यहाँ भी जो हो रहा है वो कारोबार हो रहा है और जो शख्स भी आता है वो खरीदता है। हमारा जरूर काम है कि महंगाई को कंट्रोल, असल लफ्ज ये है कि महंगाई को करने के लिए इन हालात में जहाँ माशी मान मौजूद हो और हम अपनी आवाम के लिए कुछ ना करें। कि अमीर लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या ख्वाहिश करें, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मीटिंग में यही बात कहते हैं, लेकिन कभी आप सुनाएं कि हुकूमत ये कह रही कि इन गरीब बिजनेसमैनों की हमने इंटरेस्ट रेट कम नहीं, वहां पे इंटरेस्ट रेट अपना हक समझ करवाया जा रहा है और गवर्नमेंट कहती है कि हमने बिजनेसमैनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए रिलीफ दिया है कि इंटरेस्ट रेट कम कर। मैं कहता हूँ लफ्ज होना चाहिए पाकिस्तान की डिक्शनरी से, जहाँ आवाम के लिए कोई रिलीफ हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि हमने मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए बड़ा ऐसा किया। तो एहसान नहीं है, ये हमें रिलीफ देना है, यही हुकूमत का काम होता है। आवाम को रिलीफ दिया जाए जो उनका हक है। जैसे बड़े सनतकार का इस मुल्क पे हक है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कराए, बिजली के न कराए, गैस न कम कराए। तो अगर गरीब को गरीब है कि बार बार उसकी तस्दीक जा रही है, अगर मैं ये कहूँ कि गरीब को गरीब हुकूमती पॉलिसी ने बनाया है, वरना आज एक आम आदमी जब मुल्क से बाहर जाता है तो वो 2-4-5 साल में हमें क्या समझ जाता है, क्योंकि वहाँ हुकूमतें उसको इज्जत देती हैं और उसको मौके करती हैं जो कि हमने नहीं दिए। मैं समझूँ कि अगर आज भी हम अज़्म करें, और मैं नसीर साहब यहाँ खड़े हैं और ये मेरी बात की तायीद करेंगे, ये ना कर दें, अगर हम प्राइवेट सेक्टर ये अहद कर लें कि हमने कराची एयरपोर्ट से लेकर और सेंट्रल हैदरी तक अगले 5 सालों में 100 बिल्डिंग्स बनाई है, 100 मंजिला, क्यों नहीं बन सकती? आज अगर हम कर लें तो 5 साल में 100 बिल्डिंगें बन सकती हैं और अगर बिल्डिंगें बनना होंगी तो आपको हर किस्म की मुलाजमत अच्छे पैसों पे इस शहर से होगी। जब आप दुबई उतरते हैं तो आप ये 2000 बिल्डिंगें देखते हैं, आप मलेशिया उतरते हो 2000 बिल्डिंग, दुबई 2000 बिल्डिंग, इस्तांबुल में 2000। तो मेरे शहर जो माशी है पाकिस्तान का, जहां अगर इमारत के अंदर अपार्टमेंट लेने जाए तो 20 करोड़ का है, तो अगर ये 100 बिल्डिंगें दी तो ये 2 करोड़ का मिलेगा। तो इस पर हमने काम करना है और मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है और इस मैं गवर्नर इनिशिएटिव काम दूंगा, प्राइवेट सेक्टर की बिल्डों में बुलाऊंगा,
उनके साथ बातचीत करूंगा और वो कहूंगा कि कम रेट के ऊपर लोगों को रिहायशी मंजूरी दें। यहाँ बचत एक्सपो है, इसी तरह कम रेट पर अगर ज्यादा बिल्डिंग देंगी तो लोगों को रिहाइश भी सस्ती मिलेगी। हमने काम करना है, हमने इस शहर को, सूबे को तरक्की और मुमकिन है। आज कोई चीज ऐसी नहीं नामुमकिन हो। हम जई मुल्क है, पूरा सिंध जो है हमारे पास जमीनें, अगर हम किसानों को, काश्तकारों को सही बीज, सही फैसिलिटी दें तो आपकी क्रॉप है वो बेहतर हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, 5 गुना हो सकती है। तो यहाँ अब सिलसिला जिस तरह हमने गवर्नर हाउस में का इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ताला ने कंप्लीट किया। आज 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां गवर्नर हाउस में पढ़ रहे हैं। आप मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस के दरवाजे रानुल मुबारक के लिए आज खुले हुए हैं, हमारे लिए मीडिया गवाह है। गवर्नर हाउस से राशन ड्राइव आज तक हो रही है, मीडिया गवाह है। आज मैं आपके सामने ये ऐलान कर रहा हूँ, शहर की डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 5 साल हम 100 बिल्डिंग, 100 मंजिला 100 बिल्डिंग बनाएंगे। इसी तरह जो इंडस्ट्री है जो खत्म होती जा रही है, आज मैं जैसे इसके साथ बैठता हूँ, उसकी बहुत सारी मजबूरी है। अगर उनको एड्रेस किया है, क्या जरूरत है कि वो बांग्लादेश की इंडस्ट्री बनाए, उसे क्या जरूरत है वो इस्तांबुल में जाए, तुर्किया में जाए। इसी शहर, इसी सूबे में इंडस्ट्री लगेगी, इमारतें भी बनेगी, ज़राअत भी काम होगा। और मोदी तो वजीर आजम है कि उसने अभी 3 दिन बयान दिया है कि मुझे दोबारा वोट दो, क्योंकि मैंने 10 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान को भीख मांगने वाला मुल्क दिया। वो अपनी तकलीफ है कि आज वो हमारे सामने हाथ लाए खड़ा है। तो हमें एक गैरतमंद कौम, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझसे भी अज़्म करना चाहिए कि मोदी के इस बयान का जवाब पाकिस्तान में तरक्की देना है, बातों से जमा कर नहीं होगा। हमें यहाँ आने से पहले शहीद सैयद काशिफ अली के घर गया, उनके वालिद साहब मिला, उनका जज्बा मैंने देखा। वो इस बात खुश हैं कि मेरे बेटे लोगों की जानें बचाते हुए जान का नजराना दिया। उसके बाद मैं नसीब सुमरों के पास दाल सैयद हॉस्पिटल गया, वो फख्रे से फख्रे पाकिस्तान है। हमारे पास हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। हमारे पास जराबाज है, हमारे सैलानी से बशीर फारूकी साहब, इन सब उठाना होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठूंगा। कोई वजह नहीं है कि मेरा सूबा और मेरा मुल्क तरक्की ना कर सके। सिर्फ कुदरती ज़खायर से मौजूद है। और एक और मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ, बड़ा तनकीद की जाती है, भी खड़े कहते हैं जो इतने सारे काम करते हैं ये आपके पीछे पड़ेंगे, इनको हटा दे। आपके काम आपके सामने आके खड़े हो गए। जफर भाई, मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ कराची गवर्नर हाउस में प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर ये सत्थर में भी, ये नफा में भी होगा, लागाना में भी होगा और हैदराबाद होगा। इंशाअल्लाह ताला IT की तमाम क्लासेस इन तमाम शहरों के अंदर करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहिए, इस तरह इस 50 बार बच्चों को हम जो $8,000 का कोर्स करवा रहे हैं और 50,000 ऑनलाइन पढ़ रहा है, 4.5 ऑनलाइन पढ़ रहा है। सिर्फ यही कहूंगा कि रोक लो, आवाम में दिन और रात खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पे मुझे उम्मीद है कि हम आए ही इस सूबे सिंध को इस पाकिस्तान में बनाएंगे। शहर कराची IT सिटी बनेगा और यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा बच्ची IT कोर्सेज करेगा और इस पाकिस्तान को माशी बहाना करेगा। और मैं सबके साथ बचाना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं SSJDC लैब में कॉलेजेस वर्क करती हूँ। मेरे साथ बरदा ली हैं, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की से, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए और काफ़ी ये रहा है हम लोगों के लिए। मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। हम लोगों की JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जैसे कि जफर भाई कहते हैं जिसका मुंह लाल है हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मवेशी मंडी में इंतजामात का आगाज़ हो गया। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं। सामने आप देखते हैं तो होटल्स तामीर हो चुकी हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपकी सहूलत अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ये तमाम के तमाम स्टॉल्स खासे दिन बाकी हैं।
लेकिन इसके बावजूद सजना शुरू हो गई है हमारी मवेशी मंडी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको पानी के जूस, पानी, जो भी आपको चीज़ रिक्वायर होगी वो तमाम की तमाम आपको अवेलेबल होगी यहाँ पर। For the other stakeholder across divergent symbols, the phase is a platform for G2G, B2G, B2B agents to venture and invest in crypto. A team seminar will also be to facilitate discussions on challenges within the defense. The tradition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024, Karachi Expo Center. पुल से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए। जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जानवर ये मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पहुँच गए। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से आया। कानपुर से हैं। तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर आए। और वैसे कितने चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह, सब फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं, उसके बाद जो है काफ़ी जानवर हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर दिन आगे इसका रास्ते बनेंगे। मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए खरीदारी करने के लिए। और ये फीस वगैरह रखी है, सब बेहतरीन है, इंतजाम आपके लिए किए गए, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैन किया गया, सब जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं, तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिए सिक्योरिटीज़। चले, सिक्योरिटीज का मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम बहुत ज़बरदस्त है। नेक मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच और गुड लक। अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबल चुके हैं। हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद, कहाँ से आए हैं आप? शेखपुरा से। शेखपुरा से। तो ये अंदाजा करें जहाँ से जानवर पहुँचे वहाँ कनकोट देखा और यहाँ शेखपुरा से कैसा अरेंजमेंट वगैरह, खुद बेहतरीन, मज़ा आ रहा है पे? बस मज़ा आ रहा है। साल होने आज 16 साल होने आ रहे हैं। अच्छा, साल आते हैं तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े लगा रहे हैं? इधर ऐसा तगड़े ने वो सारे तोड़ के अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके। आइए तो हमसे बात करते हुए आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा। कैसा अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं? आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुझे आप सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तावन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तावन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। 12-13 दिन हो गए आए, बाकी हर साल ही होने, किसी साल भी ना परेशानी नहीं होती। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे अपने अगले साल दे ये खीरे बच्चे से। अच्छा, हाँ जी, कल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे 11 महीने अगले साल वास्ते बस आते हैं। आपने तैयार किए हैं 10 महीने में, क्या खिलाते हैं? आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ जी, कोई कराची। ये जरा देखें, अंदाज जरा दिखाएं तो सही ना यार। ये जो काम हुआ यहाँ पे आप जानवर देख सकते हैं। आइए आइए जरा, तो इधर आ जाएं आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा, ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम पलवानी है। बिल्कुल सही बात है। मंडी में घूमे हैं, ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं नहीं नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल, कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस। साहिवाल क्रॉस? भाई ये एक ही है मेरे ख्याल से। सी हाँ, एक ही है। कुछ बछड़ा देखो, आपको पसंद है? जबरदस्त किस्म का, जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मजा आया। और हम लोगों को भी बता रहे हैं, पंजाब के शेर आपने देखे, वाकई में शेर लेकर आए हुए ये लोग ना। पंजाब ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं। हाँ, शेर हैं। शेर आ चुके जी मैदान में। ये आप देखते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह, खुश है, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है। फ्लाइट भी भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है।
आप यानी कि बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ की तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा तमाम के तमाम लोग खास मुतमईन दिखाई दिए। मैं अगर थोड़ी सी आपको इस की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कम हुई। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है, छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। उस वीवीआईपी ब्लॉक भी है, वीआईपी ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने भाई आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीवीआईपी भी है, वीआईपी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो व्यापारियों को यहाँ पर फराहम किए आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को या बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि फी गाय और फी ऊँट 4250 रुपये, जगह फी बकरा और 2000 रुपये रखी गई है। तो एक मुनासिब रखी गई है मंडी में। जब आपने जाने आते हैं, आपने देखा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराहम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ खरीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और देयर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ फराहम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलग डेट्स हैं। मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो के लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम अपनी टॉयलेट्स का इंतजाम यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल फैले रहे हैं उन मसाइल को दूर किया जाए। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी खरीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत आप व्यापारियों से भी सुन सकें, लोग से भी सुन सकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आगे आप अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आप यहाँ मुलाकात करता है, जल्द से फिर मुलाकात होगी। मवेशी मंडी में तेज़ी से जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उस पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आके आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं और आए और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एशिया की मंडी कहें या वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी, जिसमें 3.5 लाख से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। मवेशी मंडी के नाम से ही यहाँ पर आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी के साथ ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं इनके तमाम मुतमिज़ीन जो हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आवाम के लिए सहूलियात से हैं। बदर एक्सपो हमारे जो वज़ीर यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने सारा मीडिया यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं समझता हूँ कि एशिया की बड़ी की वजह से कराची के अंदर जो कुर्बानी शौक से करते हैं, खूबसूरत जानवरों की ख़रीदारी करते हैं, उनकी एक तादाद यहाँ मुझे रोज़ाना टीवी पर नज़र आई है। और हर साल की तरह मैं भी पिछले कोई 12-15 साल से इस मवेशी मंडी हूँ। पहले जहाँ लगी वहाँ भी हम जाते थे, पिछले साल यहाँ आए हैं और अभी विज़िट करना है। ये भी देख के यहाँ रेट गए हैं
वो आम आदमी की बीच में हैं यही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आगे के 4-5 रोज़ होते हैं इसमें देखने आया है कि ख़बरें आती हैं कि जो व्यापारी हैं वो भी लुटना चाह हो जाते हैं, जो ग्राहक है उसको भी शिकायतें। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के तवज्जुह से IG सिंध को मैं ये कहूँगा वो स्पेशल अरेंजमेंट के प्रोवाइड करें, रास्ते में पैकेट्स लाएँ ताकि ना ग्राहक प्रॉब्लम हो ना व्यापारी को प्रॉब्लम हो। एक फैसिलिटी लोगों को दी गई है उससे वो फ़ायदा हासिल करें और मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा फरीज़ा जो हम पे फ़र्ज़ है जाहिब सरबत हो गए, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो कुरानी का सिलसिला है वो साहिब सरबत लोगों को पूरा हाल जारी रखना चाहिए, चाहे वो सदक़े की हो, अल्लाह नाम सूरत में हो। क्योंकि इस वक्त जहाँ हालात मुश्किल हो वहाँ एक मिडिल क्लास और एक गरीब शख्स के लिए बकरे का या गाय का बैल का गोश्त खरीदना नामुमकिन हो गया है। अल्लाह ताला ने एक फरीज़ा रखा है जिससे लाखों लोग फैज़ाब होते हैं, कई महीने तक ये गोश्त इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो यहाँ जिन्होंने ये सारे तज़किये हैं उनके एडिटर भी मौजूद हैं, बाकी भी टीम्स मौजूद हैं, मुबारकबाद तय के और इंशाल्लाह मैं विज़िट करता हूँ कि यहाँ क्या रेट्स रखे गए हैं, क्या चीज़ें। शुक्रिया। Basic getters coders across diverse industries. The Faith of Ishq is a platform for G2G, 2G, actions, joint ventures, and investments in the connector. A strategic seminar will also help place global challenge within the defense sector. The competition of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं एसएचएडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ बरदा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से, बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेटी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सिमेट मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफर भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करके लेके नहीं, यहाँ से कुछ बचत हुई नहीं हुई? बस बचत तो है, बचत के बिना तो कुछ लेते नहीं। क्या इतनी हो गई, अब बचत की शुमार में हम घूमते रहते हैं, कहीं पे बचत मिल जाए। ये बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने जो आपके लिए बाजार लगाया, आप मुतमईन हो जा रहे हैं? हाँ हाँ, मुतमईन होके जा रहे हैं। हाँ बहन, आप कैसी कोई शॉपिंग वॉपिंग की आपने, मुतमईन होके जा रही हैं? अच्छा, ये बात नहीं कर रही है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा सख्ती की हुई बात ही नहीं कर रही है, लेकिन आप इंजॉय करके तो जा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल इंजॉय करके जा रहे हैं हम। बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने जो बचत एक्साई, आप मुतमईन होके जा रहे हैं? बिल्कुल मुतमईन। कुछ रेट कम मिला? जी मिला। सुकून होके जा रहे हैं? बिल्कुल सुकून। लोगों को मशवरा देंगे कि यहाँ आए और शॉपिंग करें? बिल्कुल, यहाँ शॉपिंग करें, बाहर से रेट में यहाँ से कंपेयर होता है, कम है। तो अपने बचत बदर एक्सपो सॉल्यूशन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। PM. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening to you people wherever you are in the world. We are live here yet again for match 27 where Clifton Fabulars are up against Larry Legends from DHS Club Moin Khan Karachi. A little while ago, both of the captains are there in the middle with our colleague Danish Anish. And the news from the center was that Larry Legends won the toss and opted to bat first. Here we go. It's match 27 and you're all set. The players are just about to get ready. Off the toss this time, and it's a welcome to the bowling crease by Hamidullah. 6 is up. Qari Hamidullah straight away got his last. This is a big swing, and he's got the connection all right. It's a first 6 by the left here. It's a good one. Typical left-handed leg-sided swing. Again, another one too. This is big. It's landed on second here. He goes there for the massive shot, but doesn't connect. And this time it's further up. You didn't make a mistake and looks really is gone for 15. 26-1 is the score. And by taking Bambles can do that. This time it's been taken. It's your third. Kang has been good in this innings at least. Well, comes and get wicket. He's gone for 4-32. This time it's a connection. It's Hamidullah who's got in the middle of the bat, and there you go. It's half a dozen result over square leg. It's a leading edge chance for the bowler himself, and not going to take it. Once again, another wicket has gone down for our legends. Hamidullah just not timing that sweet shot whatsoever, ending up giving a dog of a cash to the bowler. Hamidullah went for 14 on 9 deliveries, 39 for 3. Biggie on the leg side. Looks like he has got plenty on it. What a connection. First ball has been posited into the stands on the leg side. Shot asking to be hit, getting the elevation and the distance. Another assist to the captain. Good bowling from Imran. Shot again. It's flat, it's hard, it's long, and that's going to be yet another 6. What a start this is for the captain. 3 sixes in the over. For toss. Might give an all go there for. After the umpire signal. Yes, the arm is aloft. Not only it's a no ball, but it's a boundary as well. Bowling the last over of the innings.
Outside edge and taken. Well, that was dying to the wicket keeper, Umar Baja, behind the stumps. Still managed to take it. A wicket of the very first ball to Mansoor. Ashraf Khan's game comes to an end. 23 of 9 for the captain. Full toss. Thumbs it down the ground all the way back. That's good connection for Iran Amos. If you bowl in the middle on his body, definitely you're gonna get hit. Low picked up. It's up. It's up and it's over. Really good hit this from Dawood. He was waiting for that slower length, and as soon as he got it, he had no hesitation. It's pitched up. Once again, Dawood has deposited that over long on for yet another gigantic six. A perfect way to finish the innings. 3 maximums coming in that last over of Mansoor. Liari legend have put up a very good score. They have managed to score 92 runs for the loss of 4 wickets. स्ट्राइक पर है। पहली गेंद आने को है इस दूसरी इनिंग्स की। राना मोहसिन असद चाहिए, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर बीट हुए। फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर विकेट कीपर के पीछे, वरना ये 6 रन होते, लेकिन 2 रन भी हुए हैं। इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर। 4 रन। और इसको ओवर द टॉप ऑफ साइड में, और गेंद को कवर्स और पॉइंट के दरमियानी पोजीशन पर 6 रन के लिए बाहर डिस्पैच कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप, बड़ी खूबसूरत गेंद, एज हुआ, विकेट कीपर ने गेंद को किया, और सोहेल फहद यहाँ चनू की बड़ी विकेट लेने में कामयाब। 7 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस फहद। गेंद को खेले, मिड ऑफ को बीट किया, और गेंद गोली की तरह बाउंड्री से बाहर, चौका। बड़ा खूबसूरत शॉट। ओह शॉट यार, गेंद घास के साथ एक तरह चिमट कर रह गई है, और फिर रगड़ खाते हुए से बाहर। 4 रन। शॉट, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जोरदार और शानदार छक्का, काफी बुलंद वाला, और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे लॉफ्ट किया। फील्डर ने हवा में जंप किया, कैच करने में कामयाब। अहमद विकेट लेने कामयाब हुए उमर की, और 39 रन पर दूसरी कामयाबी। आउट हुए 39 for 2। इस गेंद को घुटने का बेंड करके खेले, 2 फील्डर आए, मगर गेंद दोनों के ऊपर से बाउंड्री से बाहर, छक्का। Outside, and he goes once again outside the off stump. He missed it. Massive outside edge deflection. Good take behind stump. So brief innings is over of that. Outside the off stump, he lifted. Is it long enough? Just enough. Wide outside the off stump, and Shaw chased it beautifully. And what a finish over. Change of pace, going for the run. Could be tight. Oh, gone. But wicket keeper is not happy. Wanted him to throw to the betting end. The wicket falls here. He goes for none. 4 for 63 on the board. He goes for it. Has it lofted beautifully. Over long off. Not quite. He's gone. Good catch. He is yard short of the shot. He tries his best to clear the long boundary. Well picked up by the fielder. And Ahmed has got the breakthrough. Big one. He goes for it. Has he struck it well enough? Picking up. I think it goes for 6. Just enough connection from Arbaz, who came to the crease, tackled well, and cleared the boundary. He goes for it. Chance or 6? Forget about chance. It's a huge one. Lovely connection right off the middle of the bat. Length ball put away by Kaman. Got him. Hit the timber. Beautifully bowled. Lovely line, lovely length. And Arbaz has to walk back. Well, taking all the time before the run-up. Shows off now. Salman hitting the stumps. Arbaz goes 6 of 2. Goes for the big shot. Hard and flat. Should be cut off. No, that's boundary. Good one. Very full. Plenty of pace behind the ball. Hitting 2. And comfortably taken.
The scores are absolutely even. You are spot on, Anna. So 90 for 6. There is no lead. Nobody's ahead, nobody's behind. Good evening and welcome back to all of you folks wherever you are across the globe. We welcome you once again from the DHA Sports Club, Moin Cricket Academy, Karachi, where the second match of the night is up and running. First innings is done and dusted, and the first innings, both of the sides couldn't separate. Now let's play. Let's play, boys. Outside the off stump. Will be gives a wide. And here goes Painda, announcing his arrival with his first maximum. This is Painda, we all know. That's the delivery was waiting for. You're right, but this guy seems to be a master in doing that. And he's a master if you bowl him there. That's Nizar, we all know. His first 6 of the 6. About runs as well. There we see the owner of the Dabangs and Clifton Popular. Oh, that's wrong length. And pays the pass with boundary. That's Farhad Abdali. So a boundary finished that over. 2 done, it's 20 for none. He missed on the India, and it's been accepted. Easy one for the fielder at backward foot. And Painter is gone. Well, technique again comes into play with those type of shots. He gone for 8. और बड़ा उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की इस ओवर की आखिरी गेंद और फरहाद की गेंद को उठा खेले हैं फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जो है बढ़ गई और उन्होंने अपने कदमों से गेंद को रोकने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब हुए दोनों बैट्समैनों ने क्रीज तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन गालिबन यहां पर ये रन आउट की अपील की जा रही है दाऊद को लियारी लेजेंड के वापस जाना होगा 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के के साथ 13 रन बनाने के बाद वापस लौटे हुए उमर बाजवा इस ओवर में पहली मर्तबा आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेले हैं और फील्डर गेंद को देख सकते हैं रुक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए यहाँ शानदार शॉट है निज़ार लफ्टी की जानिब से और इस बार उठाकर खेले हैं गेंद हवा में और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर कर गिरी है 6 रन की उमर बाजवा एक मर्तबा फिर आएगी इस बार इनको कनेक्ट करने में कामयाब हुए गेंद हवा में देती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी और ये गालिबन इस ओवर का दूसरा छक्का होगा और इस बार गेंद को उठाकर खेला अशरफ पठान 6 रन के लिए अशरफ पठान फुल फॉर्म में रहे तो इस छक्के मुझे मुश्किल दिखाई दे नहीं रहे लेकिन अशरफ पठान ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी है जबरदस्ती और साथ ही वाइड बॉल का इशारा भी है दो गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर अशरफ पठान का तैयार हैं सामने मौजूद निज़ार लेफ्टी इस बार निज़ार लेफ्टी की जानिब से चाचिया है कहीं पर फरहाद आलम अब्दाली के टिप मिड विकेट के ऊपर इस ओवर में आखिरी मर्तबा और खेलना चाहते थे विकेट की गेंद के नीचे और उन्होंने कैच किया 96 रन का अब मिला है इस मैच को जीतने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर टीम को 95 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स ने बनाए हैं और आखिरी 12 गेंदों पर 47 रन बने Here's the first ball. And here's the first shot. It seems like that's going to run away for 4. Tackle for Halmbi to start this. It's up in the air. He hasn't timed it. There is a fielder at long who is trying to get a neat and he has taken it. Wow, what a comeback this is from Rana Mohsin. The revenge has been sought. Fahmi Chanu dismissed. Pitched up. Hit away down the ground. There is a fielder up there long gone, but the ball has gone past him. He goes again, this time getting the elevation and the distance cabin. And that ball has landed the roof. So a 1, picked up, it's up in the air, he hasn't timed it. Fielder getting underneath that. And he's taken it in the, well, 6th or 7th attempt, finally. And once again, it's so Bajwa who disappoints. Bajwa goes for 19 for 2. Meanwhile, Sohail is continuing. How he goes, look at how far the ball has traveled across the ropes. Well, that traveled like a bullet.
Full toss. It's up in the air. Rana Mohsin will just watch that ball hit over his head. And he also could ask from the fielder. Let's show it to me. Shot. Wow, that's some hit from Asad Shah. Once again, ball had landed on the roof. Well, his name should be printed on that roof because that's how many times he has hit that. Full toss. He has hit that up in the air. He hasn't timed well enough. There is a fielder who's trying to get in the knee that, and Daud Suleiman takes a really good catch. In fact, that has been signaled as a no ball. Wow, that is interesting. Flicked away. Not that time. Has he got the placement right? Yes, it goes for 4. Flicked away. High in the air. Somebody wants it. Should be taken. Gone. Asad Shah goes. Alam has got the breakthrough exactly what Captain wanted. And it's a big one. Pulled away. He got the timing right. Yes. He's found the fence. One bounce in the boundary. He is off the mark for. क्रिकेट के अंदर उनका मैनेज स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एक कल का जो मैसेज था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक जुमला के यार तुम लोग बहुत खेलो, इसी स्पिरिट के साथ मैनेज करना, इसी स्पिरिट के साथ मैच खेलना, और तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आ रही है. Outside the off stump, in the air, flat. 1 down, 2 bounces. This for 4. Beautifully late, but Ivy went for it. Much higher, much longer. 6 more. Wonderful from Kamran. Goes for it. Onside. It's a on. Comfortably taking. Kamran goes. Well, Hilal, it's all happening. It's a wicket. Sam, the bowler making a comeback. And cameo is over from Kamran lefty. He's walking back. He goes for it. Big shot. Is it long enough? He's got plenty of height. It's over the rope for 6. Haq Nawaz, you beauty. Oh, what on to middle one. It's Haq Nawaz in the building, announcing his arrival at the crease. Goes for run. Could be run out here. Oh, yes. Will they come for 2? Scores are level now. Scores are level. Premier League legends. Way back for 3. Gone this time. Nobody won the frame, but the batsman was way out. But in the end, after cover, the run out took place. They have wickets in hand. He missed the plenty. It's the red light, the confirmation, official confirmation. Shot back behind. Everybody is ready to stop a single here. One important one. Look at Have that. a look at those butterflies on the bat. Looking to stop and run. Here we go. Easily done. Victory goes Clifton Popular. It goes for the boundary. Dalvin finishes the job, and look at that acceleration. Everybody, every supporter of Clifton Popular, they're on the ground. What happened? Yeah, back foot punch, a proper creating straw by Pindi. Kept his arm tizzle and saw his team to the victory. What a game, Priya. वेलकम बैक. एक बार फिर आप कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से केटीवीएल सीजन 3 कराची नाइट्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स, जहां पर मुकाबला है और लियारी लेजेंड टॉस जीत बैटिंग करने का फैसला किया. Here we go. और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए. लियारी लेजेंड्स इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए तैयार. बल्लेबाजी वो कराची नाइट्स मुकाबले पर जी बड़े अहम मुकाबले में इससे पहले कश हुई एक क्लिफ हैंगर पे जब पॉपुलर आखिर में जीत गए. और इस मैच की शुरुआत ही छक्के के साथ है कारी हमीद उल्ला ने. बड़ा जबरदस्त आगाज, और ये वो आगाज है जो चाहते थे जोहेर नसीर, केटीवी के जोहेर रवा. और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है. मिडल हुई गेंद और बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ बैट. एक मरतबा फिर अली शेर आए और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है, और ये फलक बोल का इस मैच का हैट्रिक. और गेंद को उठा के हैं, फील्डर आगे हैं तो फील्डर गेंद को लगेगी जरूर, लेकिन वो गेंद को उठाने के लिए तो अली शेर का एक बहुत ही महंगा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां उन्होंने 25 रन दिए. इसी दौरान शफीक आए और शफीक की पहली गेंद गोल कर दिया है.
और कोई फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 के लिए, और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं। फील्डर क्या तक पहुंचेंगे? बिल्कुल महफूज हाथों में ये गेंद महफूज हो गई। नजीर लेफ्टी गेंद अपने अख्ताम को पहुंची और अब वापस लौट रहे हैं और लियारी लेजेंड्स का 32 पे आउट हो गया। और काजी की पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है छक्के के लिए। अंपायर और बैट्समैन हो राजी तो फिर क्या करेगा काजी? एक मरतबा और ये दूसरा लगातार छक्का। 3 बार तो काजी करवाते हैं। हाँ, इन्होंने 2 करवा दिए। वाह, बहुत जबरदस्त बैटिंग, कोई शक नहीं इसमें। तो काजी साहब यहाँ पर बहुत मुश्किल है और अब तक 4 छक्के वो इस ओवर में कर चुके हैं। और एक और जोरदार जो खेलना से हम बात बनेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने इसको तब्दील कर दिया है। 47 रन बनाकर 12 गेंदों पे ये आउट हुए और 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता और विकेट लेने के बावजूद कारी इमरान जो है उनकी प्यास और उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली। इस तरह आउट हुए बिना कोई रन बनाए सुलेमान। 60 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर मुकम्मल। It was short, it was wide. He absolutely nailed that on the outside, Hassan. He didn't wait for the umpire signal. In fact, the arms are off. What a hit that was. Full toss. Gets the treatment it deserves. In the end, it's over the boundary ropes as well. Goes once again. Wow, just hear the sound of the bat. Wow, that was some hit from Hassan. Another full toss, hitting it straight back past the bowler. The result is going to be the same. Good bowling, Imtiaz Imti. It's the 4th maximum of the over. He goes for it. He absolutely slaps it, and all the fielders are just going to sail over the fielders. They had 5th maximum of the over. Extraordinary batting this from Hassan. They are going to be a 4th side. The onslaught, in fact, has been taken. Wow, that was a good hit. Straight to field, a deep wicket. Soban Seto walking back without even troubling the scorers. It's a 94 for 4. This time he's tried to build it, and this time it has been taken. Finally, he left match take 1 at long gone. That is how Hassan has now been dismissed. He bowled short. He slapped it one in the left on towards Badar at long. The ball just bouncing in front of it. They are looking to come back for the second run. And there is a collision between Haris Ali and the runner. So they'll get 2 runs in the last ball of the over. That means Liari Legends have finished on a very strong score. They're finished on 112 for the loss of 5 wickets. अब इस मैच में अच्छी फतह दरकार होगी अगर आपने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल। तो लियारी लीजेंड्स इस वक्त जो रन्स भी वो बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। इस मरतबा उठा दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा और एक आसान सा कैच लेकर पहली विकेट हासिल कर ली है उस्मान जान की। और विकेट गवा बैठी। ये क्रिकेट की एक फुल टॉस गेंद पर भी विकेट चली जाती है और अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है। वो कराची में पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक स्टार हैं। कराची के असद शाह हैं, आपका हारिस अली खान है, यासिर मुश्ताक हैं। I think I follow all of them and they are all my favorite. Thank you so much for joining us on the sideline. And now it's time to go back to home box. तक 14 रन बनाए हैं, 1 विकेट गवा चुकी है। इस पर गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा की आगे खेले हैं और ये गेंद भी आई 4 रन के लिए। तो खूबसूरत अंदाज उबैदुर रहमान का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ एफर्ट करनी होगी बसों भी। इस पर हिट लगा दी है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा और गेंद चली गई है 6 रन के लिए। इस पर उठा के ले हैं, देखना पड़ेगा और गेंद जाएगी मिड विकेट की बाउंड्री से 6 रन के लिए। गेंद तो ग्राउंड से बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ गई है। इसको खेल दिया है ऑन साइड में, जोरदार अंदाज में खूबसूरत शॉट, छक्का। और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं, जोरदार और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री से दूर, छक्का। 71 मौजूदा स्कोर।
और इस गेंद को अप्पू ने उठा कर लिया। जबरदस्त अंदाज इनिंग्स को मुकम्मल करने का। अंपायर के फजा में बुलंद और कमर पे हाथ रख लिए भी सलाम है और उन्होंने अप्पू को 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे ओवर्स में बनाए हैं। 35 रन की बढ़तरी लियारी लेजेंड्स को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। Welcome back and good evening once again as we are after our innings, the third innings of this last and third match of the night. Larry Legend, the second game of the day, and the Legends are 35 ahead. Here we go. And there you go. On the legs. Hit me delivery and hit me is the answer by Hamidullah. First boundary. Well, he's holding with the bowler and it's paying for him at the moment. He's launched it. And he's launched it in the hands at the moment. Well, he's been goner. He's been goner on that occasion. Long on grabs the catch. Made no mistake here, and Qari Hamidullah goes for 4, 1 for 8. This is a proper connection. This is Hassan Painda. And it's his first innings. It's a fine shot, picked up from outside the off stump. Beautifully struck. खुद कॉलेज का पार्ट हूँ, स्कूल का पार्ट हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है वो जी, तो उसमें हमारे पास जो है वो हमारे स्कूल के लेवल पे इंटर रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमारे ग्रास रूट लेवल से लोग यहाँ पर आएंगे और इस मौके पर परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो आप जैसे पिछले सीजन का भी देखिए, पिछले सीजन से आप सीजन और टैलेंट लेकर आप क्या समझ रहे हैं ये लीग कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करवाने में? Goes through the offside. That one hit like a train through the covers. It waited to get to the fence. Well, this is Hassan's territory. This time he's giving it a go, and it's a little bit of helicopter. Reminding me of Mahendra Singh Dhoni with that stroke. Another 6 for Hassan, and that brings up the 50. What a half on the side. This time he's waited for it, and waited for it for this, because he sees him over square leg for yet another maximum. That's a bad line. Slip it away. And that's gone for 4. That's gone for 4. I thought it would have been stopped somewhere in the outfield, but it could. And he has spread that away and takes that away beautifully, and comes his half century with the 6th. What a way to get up. He goes again, bigger and better, and it's dropped right from us. Oh, thank God. We are behind the glass. They are asking for the more trouble, and Nizar lefty this time around whacked that away beautifully for a 6. And he has blasted that away onto the onside. It's gone country mile again. 6 more. And there we go again. Hassan Panda is in a tremendous form. Nizar has got that away and got that away to Rickley. 6 more into the offside. Hey, Hassan, you little beauty. What a good shot. Oh, they can't stop him because he's really taking the cleaners. And goes again. In the air. Going, and gone. Wow, what a batting. And he goes again. And it's 4. He's not stopping denied. What a way to proceedings. Hassan, you beauty. 85 23 balls. Wow, what an innings. A monumental effort. 176 runs will be the biggest target to achieve for Karachi Knights. It will be very tough. So Haris, here's the first delivery. So Fondin is about to come in here. Muhammad Kulfi is ready. He has got the new ball in his position. Inside edge. Is he gone? That is moved.
That is question. We heard something. Maybe the bat hit the ground. Nothing happened. 171 in 35 balls now. Big shot. Nothing lead. Absolutely brilliant. What a connection there is. That hit over. Straight as an arrow from Haris. Top class stuff. The fabulous shot. Missed it. Missed it. And could be a boundary this time. Missed by the keeper as well. Nobody got there. We have to wait for the mark signal. Yes, leg by given. Whatever, they will take it for valuable runs for them. Big shot over mid-off. Has it cleared the boundary? Not quite. One bounce onto the fence. So finally, a good decent contact for bat lefty. Pulled away by Haris. He found the gap and found boundary well. So boundary to end over. Oh, full toss, weighted beautifully, spunked away down ground. Good decent connection on this again from bat lefty. Half a dozen to his name. That will rank full draws. Swivel away, we'll get boundary. Harris is the man, got boundary. That's down the ground, and that's massive. That's a very good hit by Harris, being in good form. This time it's a proper connection. And yes, result is also in the favor of the batter. He hit that over the lefty. He goes again. That's even at that connection. And it eventually goes over the line. I said a connection because that was the longest part of the ground. So, well, this time I have with me Mr. Hari Mithani, who is team owner, Liari Legends. Thank you, sir, for joining us. Thank you. अभी बात कर रहे थे आप कुछ चंद ही बॉल्स हैं उम्मीद बाकी आज के मैच जीतने के लिए पॉजिटिव है आज के मैच को लेकर आप अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इस सीजन में सीजन टीम लियारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने. This time it's Usman Jan who's hold of that, and it's on all the way. 6 of this innings, Usman Jan. Off delivery is left. And that's even bigger. That's a good hit. Usman Jan with the second 6. Oh, what a way to finish things off. Salam gets his man. It's Tiba. It's big of the last ball. Harris was hustled. One ball to finish the match. And so victory goes to the Legends, a comprehensive one. They won it by 81 runs. Haris was batting quite well. It all get your left. And celebration has begun, and the spot in semi-final has been cemented. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening to all of you across the globe. Here we go. The wait is over. The first semi-final, the big one we have got in our hands. DH Dabangs are taking on Malir Malang all the way from DH Sports Club. From the center has been that DH Dabangs Kisam Shah has won the toss and opted first. Right then, we are all set for the first semi-final of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Here we go. Mighty ball and respect earlier on given by Kashir. Semi-finals, first hit in front of your eyes, and it's a high one. Oh my goodness gracious me, you gotta be kidding me. 2 flies under the ball, and none of them could catch the ball. What's going on? A genuine chance by the fielder to catch this one. He doesn't need second invitation, I tell you what. It's gone for 4, 1 bounce, but he's used that pace of Majid Glee. There you see. This time he's got to hold it, and he's got plenty of it, because it's 6 over square leg. Fun one by Khurram. Goes through the offside. How good is that? What about the timing and placement? Khurram Kwal, you little beauty. Oh my gracious me. You gotta be kidding me. It's all about going nearly the government there. It's on for the maximum.
You won't see a better stroke than this. It's all long gone for yet another maximum. It was flat and it was long. My lord, this guy is unstoppable tonight. Well, this time it's Waqas here in the air and one bounce into the boundary for 4 over Exova. There you go. He's good there. He's good everywhere. One bounce into the boundary. Didn't get entirely out of the screws, but still managed to get a 4. Because his partner is unstoppable. On 47 with that 6. Hammers it underground all across the turf. It's in the gap between long on and mid wicket. DK himself still will be a single. Talking about Mali Mullins, well, after the first 5 games, they were the leading points. As we see, 50 comes up for Khurshid. 50 of just 15 deliveries, and he can raise the bat up. Starts off with a short delivery that has been nailed over square leg. That's going to go over 6. That has been the story of the inning. Goodness me, how clean is this? Long hit from Khurshid. So a delivery, wow, that is a very good hit. That is still in the air. Finally, it has landed, but maybe on the boundary ropes. It's length. When you pull length to a guy of that caliber, that ball is going to disappear. Bad delivery. Juicy length offered to Khurshid and beautifully put away. It's short, it's wide. This time it's Chota Wiki who has deposited that ball over the side screen. Back visit once again. Fuller in length once again. Khurram Chakwal has just smashed that ball over long off. Wow, that is some hit. Juicy ball, over pitch, outside the off. He has absolutely launched it and launched it in a magnificent fashion. Away on leg side, there is a field out there in the deep. They will definitely look to come back for a couple of the last ball, and the wicket keeper couldn't gather the ball. Plenty damage has been done, and Mali Mullins not taking up 118 points. It's a marathon performance. It's a huge performance from DH Dabang in the semi-final. और इस बार कादिर कश्मीरी का गेंद 2 फुट में मिला। इमरान की शानदार फॉर्म जारी है, शानदार छक्का। बॉल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इमरान का उतना ही शानदार स्ट्रोक गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए। ये जी करो तेज गेंद, क्या जवाब दिया है यहाँ इमरान खान का। इस बार गेंद मिल गई रडार में, जहां चाह रहे थे इमरान। मच नीडेड बाउंड्री और मली मुल्लिन्स बॉस को कहते हैं बिल्कुल मुंह में दे दिया और बोल्ड कर दिया। जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी। अगर ठीक है, पहली गेंद पे आप बच गए, लेकिन दूसरी गेंद पे नहीं बचेंगे। दाऊद खान पठान डीके गॉन फॉर 7 28 और फौरी बैक पर है और ऊंचा शॉट खेला, पर शानदार कैच लॉन पर। एक वक्त में हवा में उछले, बॉल को हाथ से जाने नहीं दिया। तो के ऊपर 2 विकेट दिला दी। यहाँ पर पेस बहुत अच्छा था, कैच भी नहीं अच्छा था। करें आप कादिर कश्मीरी की तारीफ बनती है, लेकिन खुर्रम चकवाल की क्या बात है। कलीम 0 पर आउट। मतलब यॉक करने की कोशिश की है, स्ट्रेट शॉट, स्ट्रेट एरो और बॉलर के सर के ऊपर से खेला। पावर मौजूद थी तो 4 रन। होल्ड किया अहमद हसनैन की बच्ची गेंद और मुख्तार के पास उसका कोई जवाब नहीं था और क्लीन बोल्ड। और इस तरह से एक विकेट गिर गई है। मुख्तार 2 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। हसनैन ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया है। 45 रन 3 विकेटों नुकसान पर। और गेंद को खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में गेंद लॉन्ग ऑफ पोजीशन, बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन। जी हाँ, जितनी तेज होगी उतनी ही तेज दूर तक जाएगी। ये शॉट डिलीवरी थी अपने बाहर। शॉर्ट राइजिंग बॉल, इस मरतबा पुल या हुक करने की अटेम्प्ट थी उनकी, मगर इनको एज कर बैठे हैं विकेट कीपर यासिर मुश्ताक के हाथों में और वापस आ रहे हैं ठोकर। जी हाँ, ये स्लो बाउंसर थी और थी तो खासी ऊंची, लेकिन इतनी स्लो थी कि टाइमिंग सही नहीं हो सकी। 30 रन बनाकर इमरान आउट है। 55 पे 4। नए बैट्समैन उबैद सामना कर रहे हैं और पहली गेंद पर जोरदार अंदाज से लॉन्ग पोजीशन पर खेला है। फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। उछलकर उन्होंने अपनी को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी मसूर। आगे गेंद एक मरतबा फिर ऊंचा खेले हैं। क्या 600 का स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा? देखना होगा। फील्डर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद उनकी मसूर। एक और का स्ट्राइक रेट बरकरार 2 गेंदों पर 12।
और इनको ऑन साइड में करने में कामयाब हुए, मगर कॉर्नर से फील्डर वाइड मिड ऑन की जानिब आए, दूसरे रन के बैट्समैन पहुंचने में क्रीज में अपनी कामयाब हो गए। अंपायर ने बॉलर से गेंद ली और इस तरह 6 ओवर के बाद 74 रन 4 विकेट पे बनाने में कामयाब हुई मलीर मलंग्स। 44 रन की लीड उन्हें कंसीड की है डीएच चितवंग्स को, यानी डीएच चितवंग्स जब अपनी सेकंड इनिंग्स करेंगे तो 44 रन के फायदे के साथ या सबकत के साथ आएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी लीड है। Again from BTV Sports Khan Academy Karachi, where BTV is going towards the end, and the first semi-final is being played between DH Dabang and Mali Malangs. And overall, DH Dabang dominated so far, and they got a lead of 44. It's a healthy lead in the first semi-final. So it's all set. First ball of the new innings. Outside the off stump, tried to chase it initially. Wide. Big shot, left ball, put away in style. What a blow! How good is that from Wiki? Could be out, could be out. Oh, he's dropped it. It was a tough one from tone of the bat. And the fielder dived forward. It was never easy. I think he's hurt himself. And his comments in innings in style. It goes for 6, I guess. A flat one. Beautifully timed. That was some shot. Rich work was there. It goes offside. Jora Wiki. One bounce into the hands for 4. What a size. Pulled away. One got the middle. Boundary. 4 more. Runner flowing here for Jidabang. Big full toss. Has he got enough length? Should be taking it long off. No mistake. So finally, wicket falls. Full toss. Hit high on the bat. No timing at all. And Choraki has to walk back. Waqas share for 25 on 11 deliveries. 50 for 1. DH Dabangs. Oh, goodness me. 2 men are converging. Chance or 6. It's overall. What a way to begin the innings. Arslan, man in form, as I mentioned, picked it out of the off to pick up half a dozen. Goes again over long off. 6 more. To be over the hoods. Terrific batting from Arslan. Yes, he got that away and got that away in style. And it has gone for magnificent man. Again is in the air, and I think has come down right in front of our commentary box. Wow, Arslan is absolutely having everything. This one is hit away, and hit away beautifully for a beautiful. Oh, Arslan has given this. Oh, Phil is paddling back a little bit. Oh, has he grabbed it? Yes, he has. He paddled back a bit and then grabbed that one nicely. So he goes down here. Oh, wow. This is going into the hands of the fielder. Oh, it is. Yes. Umar Shahzad goes for 1. 105 for 3. And batsman got excited there as he got that away and got that away all the way for a 6. Out of the middle of the bat, small. This in the air. Has he timed enough? Oh, yes, he has again. What a great timing on that pin by the batsman. And it goes again. And goes well. Another 6. So 6 that single there. Last ball of the inning is coming up. But it won't be last ball. Because it's going to be a wide. I reckon, yes it is. Wide called. Although batsman is being run out as well. And the newcomer will go. But ball will be bowled again. Yeah, 2 runs of the wides will be added to the total. But Salah has to take a long walk back to the dugout. And Khurram gets away into the leg side. There's a man back at the long leg boundary who comes a little bit. They are turning back for the second. Oh, and now they are turning back for the third. And this is going to be out or not. Umpire has referred it to the third umpire. Let's see what will be the verdict of the umpire.
He's given as out, but couple of runs would be enough for them. So they have finished their second innings at 129 in Lord's overs. Means Malir Malangs will be requiring 174 runs of victory in overs. Abdul Qadir Abbasi. Well, what a time he's had. It's just his third game, and so far he has created so much impact. Big shot to the onside. Nobody's out there, but it doesn't. He cleared the rope and also the boundary. Beautifully played. First 6 of this. All in. Clean him up with a beauty here. Abdul Qadir was right on the block hole. Yorker, and Imran has to walk back. And he's out. 6 for 1. 6 to his name. He chipped beautifully over the ring. One bounce into the fence pole. Lovely shot. What a way to get on the mark. That was some hit. Foster it over offside. Nicely, one bounce into the boundary. और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी ये पॉपुलर हो जाएगा. एम्बियंस बहुत अच्छा है इस स्टेडियम में और उसके बाद फिर शायद नेशनल स्टेडियम चला जाएगा. मैं समझता हूं कराची को क्या पूरे पाकिस्तान को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. Flicked away to the onside. Has he got the timing right? One bounce into the 4. He has 4 given. Nicely timed. Leg side-ish and well put away. Very impressive of Qadir. Flick away. Rachua comes into play. Gone this time. No mistake whatsoever. And Abdul Qadir struck in the last ball of his spell. DK has to walk back. Good cash in the outfield. So 2 hits have gone to 35. DK goes back for swing 19. And time to go for his downstairs once again with Hina Didar. कोई फना कुछ है, कोई जानू है. Yes, panda है. वो यूनिक चीज़ है, different है. Sir, thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. And now let's go back to Combox. ये डिफरेंस पोजीशन की जानिब और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. एक और जोरदार छक्का इस दौरान हसन लगा है. 62 रन हो गए हैं. 2 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ बोलती है और हमेशा बहुत ही कम बैट्समैन को देखने में मिलेगा कि एक्स्ट्रा कवर खेलेंगे. स्पेशली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रीजन. ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि इस मौसम में कराची जैसे माहौल में मौसम में ये एक्टिविटी प्लान की गई है और मैं इसका क्रेडिट बदर को भी देता हूँ और पूरी जो कराची जो हमारी बिजनेस कमी है और एंटरप्रेन्योरशिप है मैं उनको. और इस मरतबा भी ऊंचा खेले हैं. इस मरतबा भी आउट हो सकेगा करे तो और इस मरतबा कोई गलत नहीं. अच्छा कह रहे हैं और देखें जैसे हम कह रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट हो रही है 3 सी लगी हुई थी यहाँ पर. Catch out, easy catch. Mr. Fahim Siddiqui, who is senior journalist and president of KUJ. Sir, thank you so much. आपने joined well. Usually journalists हम ये भागते नजर आते हैं लेकिन I'm sure क्रिकेट शौक में हैरान तो यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो क्रिकेट शौक में और ये जो कराची में आपने मेला सजाया जबरदस्त मेला है भाई. क्या रंगारंग मेला है. अभी मुझे बता रहे थे कि 82 ममालिक में ये देखा जाए. ग्रेट 84+. यस. और उसके साथ अगर हम ये कहें कि क्रिकेट हम तो क्रिकेट नेशन को है ना, क्रिकेट लवर है ना. जरूर यह मैच खत्म हो गया है. We'll go back to Combox. बहुत शुक्रिया. 2 रन से कामयाबी हासिल कर ली है. मलिक मलंग कोशिश हुई है. इस टाइम में 72 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए लेकिन 6 ओवर्स मुकम्मल हुए. सेकंड इनिंग्स के और 101 रन से डीएच दबंग ने ये पहला सेमीफाइनल सीजन 3 का जीत लिया है. फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. It's 11 p.m. Welcome back to DHA Sports Club Moin Khan Academy in the second semi-final of 2BL Amin Karachi Table Premier League Season 3. Clifton Populars are up against Liari Legends here at DHA Sports Club Moin Khan Academy, and this also promises to be an extravagant contest between two eastern sides. Talk about the toss, it was Clifton Popular, and their captain has no hesitation in deciding to bat first once again.
and he'll be rearing to in the second semi-final. We are all set for the first ball. Rana Mohsen up against opposition skipper Asad. He's going to come around the wicket first up. Starts off with a full toss. It can bell and be no ball. Yes, it has been a signal as a waist high no ball. Might have slipped out of his hands. It looked like as if it slipped out of his hand. Outside the off, some playing over extra cover. It's up in the air. One bounce and into the fence. Making full use of that free header, Asad Shah. He goes hit. Wow, that is some hit from Asad Shah. Take that, Rana Mohsen. Absolutely gorgeous hit that one was. He banished that one from that presence. Shot is pulled. My goodness, how far that has been. Remember, it was a little late onto that stroke, but still got so much bat onto it. Oh, Zishan, take a look at the reflexes he had. Low full toss. Picked away on the leg side. Maximum in the tournament continues. And look at the spectators. He goes again. This time it's flatter and longer. Brilliant way to end the over. This from the captain. This time it's Fahad Mia Chunnu who has decided to go big. There's a fielder trying to end the knee and he has taken it. Fahad Mia Chunnu kept silent at the other end, and that has resulted in his wicket going down. Popular is there now, और मैं I wish them good luck to Zuhair Saab and his team, Badar Expo and everybody. देखिए से क्या है चले जी, और इसी के साथ हम आपको थैंक्स कहेंगे और बॉक्स में जाने वापस जाएंगे. Goes again. It's straighter. And the fielder at home gone will be just a mere spectator. Oh, that was gorgeous hit again. Wow, right on meat of the bat. It goes offside. It's high and handsome. There it land. It had landed the rope. But a fast striker over cover. It played to the authority. Lifted. It's high in the horse. It 2 men are converting. If they go down to 2. Oh dear, they made a mess of it. They could have saved boundary again to Clifton Popular, and Asad Shah has brought his half century. What a wonderful show. Lifted as they got the timing right. It's high in the air. That's gone way over, I think. Oh yes, it's a big one. Asad Shah continues to amaze us. TV artist Mahira is the president. She is enjoying this contest. Big shot to the onside. Has they got the distance? Yes, it hits the count at Pindi. Picks up a maximum here. What a start of the new over. In the air, could be out. Missed shot. Oh, dropped. Here, drop sitter. That's me. Should have been taken at this level. He goes for it. Has it got the good connection? Yes, it's a big one. What is the, but overall, it's a good over from Rana Mohsen. 10 runs off the over. It's a good total. 6 overs have been done and dusted. First ball, it has gone high up in the air. The fielder Angon is trying to get underneath that, and the ball just goes out of his reach, but he still get a couple of the first ball. Who would know better than you, kind of? It's shot. He has tongued that Qari Hamidullah and has sent the ball into the crowd. Once again, shuffling across the crease, hit it flat. Has that gone all the way for 6? The umpires will definitely take it. Yes, the answer. What a hit this is from Qari Hamidullah. I'm so excited. मुझे लगता है ख़वातीनें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं and sports, cricket and all of that. So taking the stand बहुत ही अच्छा होगा for the women. छोटे-छोटे प्यारे tournaments ही ना प्यारे खूबसूरत सितारे पैदा करेंगे. You rightly said, and we're super excited about him as well. We have just witnessed a wicket going down for Farhad Abdul. Finally, the wicketkeeper had wished to take a catch, and his lefty has been dismissed. The Yari Legends have lost their first. It's 27-1. बहुत मुश्किल होता है और हम देखने वाले को तो और मज़ीद मुश्किल होता है. क्या हुआ यार? It's a 6. In cricketing terms, it's known as 6.
So one picked up. It's hard, it's hard, and it's long. There's a hope. Harry Legends at the moment. It's full toss. Picked away on the leg side. My goodness. That's a flat hit. Once again, that has sailed over the boundary ropes. If that keeps on going like that, Harry Legends are definitely going to get some lead. फरहाद की इस गेंद को बैट्समैन ने ऊंचा खेल दिया। कारी हमीदुल्लाह का जोरदार का खूबसूरत क्रिकेट और इतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अपना नाम खुद बुलंद कर। एक और जोरदार शॉट कारी हमीदुल्लाह के इरादे बधाई बड़े खतरनाक हैं और छक्का। इस बार ऑफ खेले फील्डर मौजूद कैचने में कामयाब। बड़ी अहम कामयाबी कारी हमीदुल्लाह खतरनाक हो गए थे। 47 रन बनाकर लौट रहे हैं और इस तरह 52-47 बनाकर कारी हमीदुल्लाह आउट। इस गेंद को ऑन साइड में उठा दिया फ्रंट फुट पे आते हुए और गेंद तमाशाइयों के बिल्कुल सामने और तमाशाइयों ने डांस करना शुरू कर दिया और छक्का। और ये वो चीज है जो बार बार बॉल करते हैं पर बचे हैं। He got away with that one. अब रन आउट चांस भी हो सकता है। रन आउट चांस स्टिल है क्योंकि अंपायर ने तीसरे अंपायर है टेलीविजन अंपायर की जानिब रेफर किया है कि वो ये देखकर बताएंगे बैट्समैन पहुंचे हैं कि नहीं। यस दैट कम्स इन। एक और विकेट जहां पे गिरी है 67 के स्कोर पर। हवा में लेकिन बॉडी लेकिन इधर रन आउट चांस है। यस अंपायर ने मरतबा जहमत नहीं पाई तीसरे अंपायर को भी रेफर करने की। नॉन स्ट्राइकिंग पे बैट्समैन रन आउट हो गए हैं और सिर्फ हैं रन आउट होने वाले बैट्समैन। फ्रंट फुट आके स्ट्रेट डाउन बेल्ट किया है को बड़ा खूबसूरत छक्का हसन का। और इस छक्के के साथ इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। लियारी ने 78 रन स्कोर किए 4 विकेटें गंवाकर और अभी 31 रन पीछे हैं पहली इनिंग्स के टोटल नापलर ने सेट किया था। Welcome back once again from DHS Club Moin Khan Academy. Second semi-final is being played in Legends and Clifton Popular. And our second is about to begin. 31 ahead. Namfan Ahmad Kulfi is ready. Fahad Mianchano is ready with the bat. Ahmad Kulfi is with ball. He streams in. And straight away bowled a full toss. And I reckon straight away bowled a no ball or not letty. Yes, there's no ball. This is not start they would have liked. And he hit that one over the top. It bounced away to the point boundary of home. Wide of the off stump, not a line, it was full. Length was okay, but line was up. I do, we can say, and like I'm not a big fan of cricket, but I do support since my father loved it. So yeah, this I am here, and I'm also supporting Clifton Popular today. Fahad Mianchano hit it in the air. Oh, he put it on! No! Order! What have you done? Recovers. Oh my God. And now Fahad is telling, if you drop me, I would whack you like that. Absolutely gave it a dunk. What a hit. Fahad Mianchano whacked that away. Whacked away over backward square leg. In fact, a conventional square leg. And it's gone for 6. Terrific. Oh, he got that away and got that away over mid wicket for another 6. Brilliant shot. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं PSL खेल रहा हूँ और मैं PSL की कोई टीम बाय की है। I was astonished to see कि यार कमाल मतलब है कमाल के जो है टीम है कमाल ऑर्गेनाइजर है। You know it's third season और you know season wise ये league improve होती गई है. So this is achievement for KTPL. It is very wonderful just to see just to be here. Enjoy करना is just phenomenal honestly. मेरे लिए तो बहुत मजा आया. Ah, yes! It's like them there. Oh, yes! Oh, my word. This is carnage. Absolutely carnage, yeah. Unbelievable hitting by Sacha. It really is. I mean, I am running out of words to describe this master knock. KTPL की ज़ोहर जैसी भाई और जितने भी लोग मिल काम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग कर दिया है पाकिस्तान की यूथ के लिए पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए और क्रिकेट को एंजॉय करें क्रिकेट खेलें एक और चक्कर लगा दिया फाद ने बिल्कुल अच्छे लगा यहाँ थिंक और we'll go back now. He
He has killed that. He has definitely killed that. Oh, wait. Oh, go on. What a way to bring up the 100 for the team. He hardly seemed to have hit that. I tell you what, it looks as if he's got a knife in his hand. He's really slaughtering them. Big time. He's sword in his hands. Fadmi Achinu. Bowling! Unbelievably got his man through the legs, and it wasn't the cards, I can tell you. It was a slow delivery. Well done, Sohail, you little beauty. You may I hit, say Sohail lefty. Fahad Alam walks back after scoring a magnificent knock of 47. Whipped away. Very good looking. In the gap too. He's got himself a boundary. Umar. And that's what he do. Goes through the offside this time. He goes over the top and gets the connection all right. It's a big 6 to finish things off. What are we doing the proceedings with the bat for Clifton Pebblers? And their lead is now of 162, which means that 163 will be a target for Larry Legends to chase down. इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड में अच्छा शॉट फील्डर दौड़े लेकिन गेंद को रोकने में वो नाकाम रहे और गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन ऊंचा के लिए खतरे में है फील्डर गेंद के नीचे फील्डर ने बहुत कामयाब और उन्होंने सेंड ऑफ भी दिया बैट्समैन को इस तरह हसन की बड़ी कामयाबी पॉपुलर्स को मिल गई 3 ओवर पर विकेट 1 पे 4 कारी हमीदुल्लाह ने खूबसूरती से किया ऐसी बहुत सी हिट्स आ रहेंगी अगर जीतना है लेकिन ये बार पहली बड़ी हिट है कारी की छक्का अच्छा शॉट इस मरतबा भी गेंद को खेलने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्लाह का खूबसूरत अंदाज ऑन साइड पे एक और छक्का पीछे की गेंद और फायदा कारी हमीदुल्लाह ने शॉर्ट गेंद से स्क्वायर लेग यानी खेले रन आउट चांस पक्के रन आउट हो जाएंगे कारी हमीदुल्लाह निजार निकले ही चले आए उससे भी फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर है जो कारी लेजेंड्स की है और इस तरह एक और विकेट जो है वो लेजेंड्स की गिर गई बहुत ही इमरान का इस बात में कोई शुबा नहीं अब तक और जोहेर नसीर का खूबसूरत शॉट बैकफुट पे रॉकेट होते हुए गेंद को बैकफुट स्क्वायर लेग बाहर छक्का ओह गुड हिट ये देखें इस गेंद को ऊंचा खेले हैं बैक स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद रोड लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर चौका इस गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड में और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर एक और चौका Does Zohair Nasir, has he connected well enough? Yes, he has. It's his 7-6. He's enjoying his batting. There you see, everybody seems to be enjoying this. Jubil Amin presents KPL Season 3. Boundaries are lefty. On the leg side, it's up in the air. And it has gone all the way for 6 again. He's just enjoying his time out there now in our lefty. Slower one, picked up on the leg side by Nizar lefty. He's got the height and once again the ball land into the leg side, into the crowd. Oh, he goes in. My goodness, how well he timed that. Wow. He's putting up a show here tonight, Zohair Nasir. Tell you what, he's got something in his armory. What do you mean? It's Zohair Nasir with his bat. Yet another maximum. Come on, you can hit them. Oh, he knocked over. It was all Jaws. He was coming down the track, York himself, and the ball landed in the base of the mid-stump. But a brilliant cameo comes to an end from Zohair Nasir. 28 of just 11, dealt in just maximums. That should have been a regulation chance. It's all happening for Clifton Poplar. This is a field we witnessed in Test match cricket. He's clearly disappointed, going out for a goal bucket. It's 88 for 4. Down he comes. Up she goes. Out of the ground. 6 more. Ashraf Pathan saying to the position, centre fielders back in their position. Pitched up, makes it into a full toss, hits it. Oh, well long gone.
back-to-back maximums for Ashraf, but that's not going to be enough. They scored 100 for the last 4 games since they have huge lead by 63 runs in the second semi-final. Won that second semi-final and advanced to the final. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब रानी है। मैं डोमेस्टिक सेल ऑफिसर अहमद फूड से। तो हमने यहाँ बजट एक्सपो स्टॉल लगाया हुआ है अहमद फूड का। तो हम आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो बचत वजह से आप सब रस लेंगे 800 ml, वो मार्केट में 430 का है और हम आपको दे रहे हैं 250 रुपये का। और ऐसी केचप है जो मार्केट में 430 का है, वो हम आपको दे रहे हैं 320 रुपये। काफ़ी हम बचत दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप आइए लाजमी। यहाँ पे हमारा अचार भी है 600 रुपये का मार्केट में दे रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉल पे देंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का। तो बहुत ही आप यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में ले सकते हैं। तो जैसा कि दे रहे हैं अहमद के सब आइटम, ये पाकिस्तानी ब्रांड, इसको प्रमोट करना चाहिए और इसराइली जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे कराची के लिए आया है। सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास और जो भी आएगा तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा भाइयों, हम हैं अलनूर राइस मिल पंजाब रंगा खान से। ठीक है, हमारे कराची में 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ऑलरेडी हमारा चावल पूरे कराची में। लेकिन इस बार हम बद एक्सपो में, जो कि बद एक्सपो की तरफ से था, जिनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम कराची की आवाम की खिदमत करें। तो ये अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट है, जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स अलनूर राइस मिल, अलनूर नेशनल और अलनूर ग्रुप आता है। तो मैं ये आपको एक अपना प्रोडक्ट दिखाने लगा हूँ, जो कि हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। डबल स्टीम डबल पॉलिश प्योर कायनात 21, जो कि ये अगर आप देखेंगे, इसको जूम करें, ये चल आपको द्रास पर 520 रुपए किलो। ठीक है, बाकी अगर किसी मार्ट पे 480, 450। और ये हम चावल सिर्फ कराची वालों के लिए जो इस बार आए हैं 330 रुपए किलो। 1 किलो ले 50 टन ले। ठीक है, हमको वेलकम करेंगे। हमारे पीछे लॉट भी है, मिल से डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेलकम करते हैं, रिटेलर को वेलकम करते हैं, आम पब्लिक को वेलकम करते हैं। आए, ये नादिर मौका है। पूरे साल फिर से आपको ये 330 रुपए किलो में कोई भी नहीं देगा। ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको चावल पसंद ना आए, आप पीछे दिए गए नंबर पे बताएं कि पसंद है। कराची में आपको चावल चेंज भी कर दो। कराची में ऑलरेडी 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलनूर राइस के। तो आप बिस्मिल्लाह करें, एक दफ़ा आएँ। और आखिर में एक और दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगा बदर एक्सपो वालों का, उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। उन्हीं को गर बुलंद इतना कि हर तमीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Season 3 finale, Clifton Ball training on THA. The Bungs with THA Sports Club in Miami. The one toss, and they are batting first. Here we go. Players are ready. Everything is in order. Everything is in readiness for the ball to be bowled from the far end or from the ocean end. Irfan to start the breathings. Irfan Singh is first for the final. Outside him, and he started off with a wide, runs about straight away. Chora Wiki has got that away, and here comes the first big hit the final. That's gone. On out here. Chora Wiki has got it in there and got it towards the deep mid-wicket boundary before. Good hit.
He got it away over top of us, and it raced away like a cavalry to the boundary before. Oh, he's in some form. Chakwal has played that away. This is Khurram Chakwal for you for the journey. He has hit it again and hit it well. Oman Khurram Chakwal already smashing them around for a magnificent shot. 2 sixes in a row. Khurram Chakwal at his level best as he patched that away, overload up and get the crowd. Khurram Chakwal, little grand finale. 46 for 2 overs. And Chodo Wiki has picked away over cover. Another 6. And again, Baron bigger. Chodo Wiki is making the mid bowling. Wow, short yard. Wiki has hit it, and he grabbed it! What a good catch! Oh, what a great catch it has been! So Wiki drove that one very hard, but fielder plucked that one from the air. Magnificent effort. Is this first in the tail? Is this the first one? Dear Salan. He caught that one away over the top of covers, and it bounces over the boundary before like a twisted bullet. Wow, good shot. Khurram Chakwal put that away and put that away in style. Another 6. Went for it. Has he got enough bat on that? He has. Wonderful. First 6 of the over. Drop the short. Has he got the elevation? Flat. Got it done. What a big catch. You nice and relaxed. What a huge one. Islam went for 11 of 5 deliveries. 9-2. DH bounce. Chance, leading edge, who wants it? Should be a simple catch. Got him! Over goes without scoring. What an over it has been. Imran picked up a wicket, 2 in the over. And he is in a spot of order. Outstanding from Imran, and short save from Shazad goes without troubling the scorers. 3 for 17 and out. Flick of the wrist from first part, and it goes away. He's unstoppable. What a bomb he's in. Once again, a terrific shot of the wrist. There goes toss, he goes offside. Smash away for a flat fix. Wonderful shot in front of that delivery, put away. Smashed away to the offside. What a fight that is. He actually in the crowd, half a dozen. From those shots smashed away. Khurram Chakwal has made. What a blow that is. Short outside the off stump, badly on this occasion. And what a good strike that is. Up goes the arms. Hit it, smashed away, down the ground. 6 more. Yes, it's a big one. What a batting performance. He's already got his half century in previous ball. Big shot on the outside. That is gigantic. That is huge. That is tremendous thing. 69 of just 17 balls. Overs have been done and dusted in the first innings, and look at the score. What a big score. There was 128. Will be a change the one. About 128 in 6 overs. फर्स्ट बॉल आने को है और मिड विकेट पे खेले फहद मियां चन्नू फील्डर मौजूद है। खासा है कादिर कश्मीरी का कि एक तो जबरदस्त पेस से बॉल करते हैं और साथ साथ इनको पिच पे मूवमेंट भी मिलता है। और इस गेंद को खेल दिया असद शाह ने, हवाई रास्ते से होती हुई बाउंड्री से बाहर, सिलसिला रुकने वाला नहीं। बड़ा जोर शॉट इस मरतबा फहद से, फहद का पहला छक्का। फहद मियां चन्नू ने ड्राइव किया और गेंद कोहली की तरह डीप कवर से बाहर, 4 रन। यही करना पड़ेगा, बॉल को अपने मेरिट पर खेलना होगा जब आप सही कालिया का सामना कर रहे हो तो। इस मरतबा मिड ऑफ को क्लियर किया फहद मियां चन्नू का खूबसूरत शॉट, हमारे कंट्री बॉक्स के दाएं जानिब छक्का। और इस मरतबा जोरदार शॉट
शानदार अंदाज में बैट स्विंग दिखाई अपनी यहाँ पर असद शाह ने। इस किस्म के शॉट्स खेल ये टॉप स्कोरर बने हैं अपनी टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के। और फहद मियां चन्नू ने कहा कि भैया बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। जहीर काली को डिस्पैच किया, लॉन्ग बैक छक्का। इस दौरान अगेन फहद मियां चन्नू goes down and goes जोरदार छक्का फहद मियां चन्नू का। जी हाँ, उमर ने स्टार्ट लिया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद और बड़ा ही दिलकश शॉट डी मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर जाके गेंद गिरी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। तो पहले बॉल पे 6 रन ले लिए उन्होंने, क्या करते हैं एक दफा फिर बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये भी मेरे ख्याल से स्क्वायर लेग विकेट के ऊपर से इस दफा और भी बड़ा छक्का, बल्कि मोइन खान अकेडमी के इंटरनेशनल सतह का ग्राउंड के बाहर बॉल फेंक दी गई। शॉकिंग थी, सोचा है कि खेले, लेकिन लगता है कि एज से बैठे हैं जहां विकेट कीपर ने ग्रैब किया और यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए उमरी पेसर और उनकी विकेट नंबर 22। इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए उमर पांचवा, जोरदार और खूबसूरत छक्का लगाकर उस ओवर काम किया है और इस ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 85 पे 1। फहद मियां चन्नू 45 पे। इस गेंद को फहद ने स्विंग किया, फील्डर मौजूद, डाइव फॉरवर्ड किया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए और 87 स्कोर लिए विकेट पर 2 गिर गई है और फहद मियां चन्नू 45 रन बनाकर आउट है। बहुत बड़ी तादाद को आप मौका दे सकें कि वो आएं और इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। इस दौरान जोरदार शॉट ताहिरी पिंडी का और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 100 रन पूरे हो गए आरिफ साहब। आखिरी बॉल लेकर एक बार फिर हंसने और इस मरतबा भी अच्छी गेंद, लेकिन फाइनल के फिर से फंबल हुआ, उन्होंने गेंद को रिकवर किया, दूसरे रन की कोशिश है, रन आउट चांस लगता है फिर अवेल नहीं कर पाए और इस मरतबा 2 रन के साथ लगता है कि इक्तिफा हो गया है। जी हाँ, इन 2 रन के साथ स्कोर हो गया 110। इस तरह 18 की बर्तरी जो है वो DH को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। 110 रन बनाने में कामयाब हुई यहाँ पर टीम जो है वो क्लिफ्टन पॉपुलर की। Back once again from the DHA Sports Club Moin Karachi, where the all-important final is going on. The first innings have been done and dusted, and the defending champions DHA Debangs have excelled by retrieving a lead of 80 runs in the first inning. We are all set for the start of this third innings. Irfanan Chorawegi. Let's play, boys. Nicely ball, full toss, just with the angle going away. These sort of forms are not required. Asad Shah, the captain, was there on that occasion. But off the mark, Waqas Sher and company nevertheless. That's hit a hard flat, one to recover. First boundary of the second innings by Waqas Sher, and it's a good one. And bowling full toss, hit hard and caught, my word! Not exactly wicket-taking delivery, but he will take it all day and all night. It's Irfanan, it's already. They're the Clifton Populars. Waqas Sher, bowling piece, goes for 4 for 1. Away in the vacant region, and the ball is going towards the boundary because that is vacant region. That's why eventually it gets to the fence for Irslan's boundary. Oh, he has swooped it away flat, and in no time he's gone to the boundary. 4 more. Well, that was not a slow delivery, but he just had it down there on leg side. He's brave enough, and he's getting the success as well, but not this time because it's Khurram who gets into the act, thumped it down the ground for yet a boundary. Boundary, how about that? Round his legs, and I like that salute. Wow, for little beauty. Tell you what, I've been waiting for a dismissal since the very first day of the tournament. Bowling the ladder, rounds legs, and we're talking about Khurram Nakwal, who has been simply outstanding. Takes a big fish. Khurram goes for 9. 2 wickets down for 27. देख के अपने आप कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओसाका लाइटिंग ने इस मैच के लिए नुमाया काम किया है। इन्होंने क्रिकेट के लिए ओसाका क्रिकेट के नाम से टेप इंट्रोड्यूस कराई है। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द इवेंट किया गया है जब फरहाद की गेंद पर फहद मियां ने जबरदस्त अंदाज में सलमान खान का कैच किया और वो 1 रन बनाकर आउट।
और यहाँ पर उठा कर खेल लिया है उमर भाई ये बुरा ओह माय गॉडनेस क्या कमाल का खेल लिया है टीम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द कैच पिछली इनिंग में भी आपने देखा था शॉट ओवर खूबसूरत कैच जब वो लेकर पहला विकेट दिलवाया था। तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं और उमर शहजाद बिन कोई रन बनाया आउट। और यहाँ पर उठाया है गेंद को और जाएगा ये बिल्कुल मीलों दूर अरसाना दी बट फखरे पाकिस्तान बेसबॉल टीम के ये बड़े अहम खिलाड़ी हैं। 57 रन की लीड गेंद को खेलने में कामयाब हुए। बड़ा जोरदार शॉट अरसलान का डीएचए मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ अ कमबैक हियर। 45 रनों के छक्के के साथ 4 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल। इस पर तबाह उठा के खेल दिया है देखना पड़ेगा और गेंद यकीनी तौर पर जाएगी तमाशाइयों के बीच में। जो जिस तरीके से हमने लोगों के अंदर जाना था लोगों को बताना था कि देखो हमारा ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था जो गली मोहल्लों में खेला जाता था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इसको ग्राउंड के अंदर लेके आए। 15 साल हो गए नॉट बीइंग मतलब 15 साल में क्राउड नॉट इवन इन द सबर्ब आई हैव टू गो एज सीईओ आउटसाइड टू हैव 2000 पीपल साइड गेट सो इमेजिन करें जो है और जो लेवल है और जो इलेक्ट्रीफाइंग है। उठा के खेला है मुस्तफा स्क्वायर रीजन के बाहर और बिल्कुल अब्बा ने इशारा है कि इट्स अ बाउंड्री मुस्तफा हनीफ। उठा के खेला है एक बार फिर से और ये बॉल तमाशाइयों के बीच में जैकॉन पुल इट मुस्तफा सलान एट द बैक यहाँ पर एक बार फिर से उठा के कहा है ट्रिपल विकेट की जानिब another maximum just it is back to the bowler और यहाँ ओवर है आखिरी 3 गेंद इसी करने में कामयाब हुए। पहली 3 गेंदों में 18 रन उन्होंने पड़े थे, एक चौका और 2 छक्के वाइड बॉल। अगर आखिरी 3 गेंदों में 2 रन दिए इस तरह ये से अपनी 87 रन 4 विकेट पे मुकम्मल की है। 105 रन से उनकी बढ़तरी हो गई है। इस तरह चैंपियन बनने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर को 6 दरकार होंगे। Abdul Qarbasi sort of started the proceedings in the final innings. Just good timing, hitting the bottom half of the bat, start off with a short ball. No time at all. Try to heave it. Intentions is pretty clear because target is way above 100. Hit it over extra cover. This is bread and butter stroke for Sulaika Shah. Typical of Mr. 360. Boundary to start the innings for himself. What a start that is from Asad Shah. He went over extra cup. A well-controlled shot, lofted beautifully. Pick up. Not many batters can hit a shot like that. The kind of ball and a sail into the crowd. Stunning from Asad Shah. Flick off the rip and they traveled over the boundary. What a start that is from the captain. He hits it up. It's over long off. Wow, that is a big hit from Fahad. That's how he announces his arrival. Welcome to the Zaid Ahmed Kalia. What a shot that is. Go over extra cover. That's a flat hit in the crowd. What a magnificent shot. Once again, tremendous contact. Zaid Kalia, what can he do next? Once again over extra cover. Wow, what a hit that is. Elevation and the distance. And not the first time you have seen crowd dropping a catch. You little beauty. My word, that is a classy shot. Picked up. Wow, there's that monstrous one from here to do. And look at going to go. The first was good, but this is something special. Wrist work over long on. What a shot that is. He'll have to work a little harder because Fahad Chinnu is absolutely clear. Abdul Qadir over the wicket. He stayed in the crease, and what a shot that is. It's short, it's pulled, it's flat, and into the ground he goes one again. Sixes are literally flowing like a river. Goodness me. Murtaza Wahab's present here, Mayor Karachi, with this cracking final. Sitting out with Mr. Zaid Nasir. It's up in the air, he hasn't timed it. Can this be taken? Oh my goodness! Oh my goodness! This is Zaid Ahmed Kalia. What has he done? The crowd, in fact, the whole team is running out to him. This is a sensational catch. Look at the reaction of Fahad Chinnu. Will they come back? And what scintillating performance from Fahad Alam. 42 of 14, last ball of over number 3. It's a trade.
Wow, that is as straight as an arrow. Umar Bajwa also announced it having swing, but not tonight. Remarkable shot, absolutely remarkable. Just a hint of a helicopter shot. Asad has put away into the left side, picked up, and it's gone for 4. Hasnain streams away. Oh, this one is pumped and pumped over the corner. The timely 6 for Asad. He comes. He got that away and got that away through the offside. Where has it gone? It's all the way. He slapped Zahir Kalia. What a magnificent Asad Shah, you little beauty. Here he comes again. And he has hit that. And where has it gone? Oh, no, it hasn't gone anywhere. And fielder is looking very upset as well. We will have to. Here he goes. He has hit that into the leg side. Oh, what a fielding. What a fielding. Who was the fielder? And it could be out. It could be out. It is. It is an out card. Although umpire has sent it upstairs, I think they won't see who has been run out. I tell you what, pressure is mounting. Umar Bajwa gets out for 10 of 7 balls and it's 95 for 2. Every eye is in the middle. Umri goes away. And Asad got the way. On top, it's swung away. Has it gone to the boundary? Oh, yes. For Rashila. 7 right of 2 balls. My God. 5th ball of the over. Asad has played that away. Protection is the check one. Will they turn back for the second? Run out. It is. It is. They come down to the final ball. And Asad will have to face the final ball. And Asad and his team will need 6 more victory. Javed Miyadat, Sweshwet Dharma in it is for 6. Everyone is up on their feet. It's commentator's turn and up. Get up on your seat. Here's the final ball. And Asad has hit it in the air. And oh yes, Asad smashed it out of the park. Look out! Oh my God! What is in here? It looks like we got in England many years ago. Now you come to the ground and to hug the page of their favorite in the aisle. Oh my God! Oh my God! KTPL is ended and it's Clifton Couple. They are the champions of KTPL Season 3. हमारी कल्याण चाहिए यूबीएल अमीन कैंडिडेट फॉर प्रीमियर लीग सीजन 3 चैंपियन पॉपुलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक महमूद भट्टी, डिप्टी जनरल मैनेजर पीईसी जो है वो पीआईए का एक इदारा है जो एविएशन से रिलेटेड जो है पार्ट्स वो बनाता है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट्स बना रहा है और दूसरे डिफरेंट एविएशन ग्रेड के सर्टिफिकेशंस हैं हमारे पास जो, और हम जो है चौथी दफ़ा इस आइडियाज़ 2022 में पार्टिसिपेट करने, इससे पहले भी 3 दफ़ा आइडियाज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हुए हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। Ideas 2024 stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition was a platform for G, B2G, interactions, joint ventures, and investments in the defense sector. A strategic seminar will also be able to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The television of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karate Expo Center. आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
Together stakeholders across diverse defense industries. The platform for G2G, B2G, and BTV Russian ventures and investments in the production sector. A strategic seminar will also facilitate discussion of global challenges within the defense. The trade of peace will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Together stakeholders across diverse defense industries. The activation platform for G2G, B2G, and BTV Russian joint ventures and investments in the sector. A strategic seminar will also facilitate discussion of global challenges within the defense sector. The 12 of ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Brings together stakeholders across different industries. The Friday is a platform for G2G, and joint ventures and investments in the sector. A seminar will also help facilitate discussion on challenges within the defense sector. The division of ideas will be held on 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together speakers across diverse defenses. The 4-day platform for 2G, B2G, B2B interaction, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also help facilitate some challenges within defense sector. The 12 ideas will be held from 1922 November 2024 at Karachi Expo Center. Idea 24 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day platform G2G, B2G, and 2B interaction, ventures and investments in the sector. A seminar will also be held to facilitate discussions on challenges within the defense sector. The division of ideas will be held from 1922 November 2024 at Karachi Expo Center. जहाँ लोगों के लिए बचत का पूरा मौका, वहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए ताकि वो भी सस्ते दामों में लोगों को सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनका अपना किचन भी चल रहा है। एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो ये एक स्टॉल लगा के मौजूद है। एक छोटे से स्टॉल के जरिए भी इस बचत एक्सपो से करके कोई ना कोई काम जरूर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बताइएगा अपने स्टॉल के बारे में। जी, मेरा नाम संसारी है। यहाँ पे मैंने आज स्टॉल लगाया जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों को रेट टू रेट विदाउट एनी प्रॉफिट यहाँ आप लोगों को आर्टिकल्स प्रोवाइड करूँगी ताकि जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं आजकल के इस महंगे दौर में तो वो अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी कर सकें। फूड इंडस्ट्री के साथ मौजूद है। जो बुनियादी चीजें आपको दरकार है रमजानुल मुबारक से लेके और पूरे साल जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फूड्स कंपनी आपको तमाम चीज़ प्रोवाइड कर रही है। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सही मोहम्मद सर का नाम है। हुसैन साहब जरा मुझे थोड़ा सा बताएं ना ये जार फूड कंपनी क्या काम कर रही है? रश आपके स्टॉल पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, जार फूड के इनिशियली जो हमारा बेस स्टॉक है वो टी का है। अभी क्योंकि पाकिस्तान में एलसी बंद हुई है चाय की और चाय की कैटेगरी में अभी चाय सबसे एक्सपेंसिव हुई है। 2,500 रुपये केजी पे मिनिमम चाय जा रही है। सिंध के गवर्नर हैं उनकी उस पर हम अपनी चाय को लेकर आए हैं सिर्फ 1100 किलो देने के लिए।
हम बेहतरीन क्वालिटी लेकर आए हैं अपने कंज्यूमर के लिए। ये माल मेरे पास चेस मौजूद है, चेस डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर। बेहतरीन क्वालिटी चाहे उसके साथ साथ खीर जो ये सामान है, मसाला जात हैं, सब 30-35% डिस्काउंट में लेकर आया हूँ और आवाम के लिए लेकर आया हूँ। AM. Welcome to the DHA Sports Club, Winecom Cricket Academy, Karachi. The second match of tonight, DHA Dons are taking on Clifton Popular. And news from the center is that Clifton Populars have won toss and they have opted to bowl first. For presently 3 at least, but they have to offer. It's going to be another very good game of cricket. Looks as if it's going to be Farhad Abdali, the man on your screen, will be starting the proceedings. He's a lefty. And taking strike is going to be Casey Quran Chakwal. Here we go. And there you go. In the slot. Welcome to the Chris. And sails off eventually for the maximum. This is Casey for you. As is another one. This time away as well. Couple of sixes to start the proceedings. Entertainment already, Zishan. Again, look at the race and away she goes. That's another one. 3 of 3. He's non-stop at the moment. There you go. It's a no ball. Alding saw to the wound and he called away 4 of 4. It is an onslaught, and so far the bowling side have no answer to that. 4 maximums to start off the campaign, 4 maximums to start the innings. Gotta got that Yorker right. No, it's not going to help. The length delivery are not going to help scores. It's a couple of bounces and over the boundary for 4 through mid-off. He goes big. This time it's Umar. And it's gone all the way. That has to be the best of the night so far. It's 37, would you believe, after first over. And there you go. Have a look at that for a shot. It's gone for 4, not going all the way, but it was an amazing stroke of cricket. It was slower in pace and it went high in the air. Now somebody has to get underneath it. Someone lining it and makes a good reverse cut. And the under of Kuram Chakwal will be much really Clifton to see back of this guy. At the moment, Umar is going to be on strike. And Umar goes big this time. It's very high in the air. And it's safely gone all the way, I reckon. Yes, it is. Another maximum. Full toss. It's going to be up flat. No, bounce into the fence. Is it? Yes, it is. Figure go up. All the precisions with that line and angle eventually helping ball scores 63 for 2. Shot. He goes big, and this is what Wakas is known for. It went a country mile over mid-off for a half a dozen. Come on, umpire, put up your both hands. He goes big, he goes long, and it's a Wakas airliner once again, but lands in the hands, unbelievably caught. They're losing wickets in comps as well. They're hitting sixes and losing wickets, so it's a mix-up. End of the third over, it's 72 for 3. Another one, even bigger and better, and it's gone many a miles. Balls are traveling and buzzing the boundary ropes regularly. Oh, Yas Mushtaq has hit it in there, and that's exactly you are talking about. And finally, bowler got it right, and Yas Mushtaq gifted a catch at the long on boundary, and 4th wicket falls. Oh, he caught that away and cut that away magnificently. It has gone all the way. Siptan, umpire, raised his arms and signaled at a half a dozen. Edged it. Going to be out. It is. It was there at the flying, one may call it. Took that one deadly, and another wicket falls. Facing Irfan. And he straight away launched that one. And launched that one out of the park. Another 6. What a way to start his innings. He hooked that one away onto the onside. Fielder was down at the long leg boundary and he caught that one beautifully. He had to run to cover territory to get under the ball, which he did pretty well, and at the end caught that one very, very nicely. 1 or 2 for 6 now. And straight away, he caught that one over wide mid-on for a 6. It's a lot of 6s. In fact, too many 6s.
That was a very good ball. And it's going to be a run out. It's going to be a run out. It is. 114 for 7. Single on last ball of the innings and called leg-wise by the umpire. So they have finished their innings, I reckon, at 120 for 7. It's a very good score in 6 overs. The umpire calls it play. Fast bowler is going to start the proceeding from the gymnasium and he's going to come around wicket first up. Hit away on the outside into the gap. That might go all the way for... Yes, it does. So an excellent start as well from Clifton Popular. First ball has been dispatched for a boundary on the offside. This time taking the aerial load. Is that going to be the first maximum of the innings? You bet it is. Boundary now maximums. And even Clifton Warriors are up and running. Short pitch delivery. That has been smoked on the leg side. That is going to go into the stands. What a way to get over the mark with that too from the captain. Hitting from the air. It's into the gap. One bounce into the fence, or is it a maximum? Yes, it has been signaled as a boundary. So once again, Fahad sang the over with a boundary on the offside. A big shot attempted. Down the ground it goes, and it goes over the boundary ropes as well. Once again, a 4 followed by a maximum coming from the batter, Fahad. Pick up shot on the leg side. That's going to travel the journey as well. All of the batters from both the teams are showing no mercy whatsoever to the ball. Shot of the day to me. He goes straight, he goes long, and he goes for yet another maximum. That has been the story in this over. It's the third of Zohaib. 26 of the over. Another swung away on the leg side. It's into the gap. That's going to go all the way forward as well. So that's the over they were looking for. 3 maximums and 3 boundaries. Make that 30 coming out of Zohaib. So it's going to be a Salim starting the third over. 4 fielders outside in the ring. Starts on the short delivery. Put away on the offside. Beautiful batting once again. This time coming from the batter, Fasad. Now he decides to go big as well. And that's going to go way over the stadium. And the crowd really enjoying it. Very good strike for the ball. He goes big this time, doesn't get the elevation. Certainly in the gap for a boundary. Down to mid-wicket, first boundary in this over. He goes big, and he goes massive. And he really comes down, but out of the ground. What a shot to start the proceedings. Welcome to the bowling crease. I'm very excited about it. और आप देख रही हैं पीछे के कराची और everybody is enjoying this match और खास तौर पर देखिए क्लिफ्टन पॉपुलर्स ओके यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्लिफ्टन पॉपुलर्स की एक विकेट गिर गई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिस गेम यू नो इसमें गेम में ऐसा होता है But if you bowl that length, then you're going to go the journey, no matter it's speed of the bat or not, and go all past the bowler. He picks that one away, but straight to the throat of the qualified fielder. Another wicket goes down. It's Haq Nawaz who's the latest exit. Second wicket goes down now. He goes big, and this is what we were expecting of Umar Bajwa. He's a big strike ball, and that's the evidence. He chips one in the air, and he's been caught brilliantly. Very good pass here by Khurram Chakwal at long boundary. So Bajwa goes for 6 after 2 deliveries faced. He goes big this time, does Tahir, and he goes long as well. Over square leg for a big 6. There he goes. And I wonder if there's a wicket. There you go. Your prediction comes true, Kaina. Yeah, they missed 113 runs off their quota of 6 overs and lost 4 wickets, which means that they will have to trail by 7 runs. Welcome back to the DHA Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is being played. And the third innings of this match about to be get underway. DHA Dabangs has the lead of 8 runs. And for what do you make of this 8 runs lead? But lead is a lead. And straight away he had a wild swing at that one. But I think he changed his pace a bit. He bowled a slower one back of the hand. Left arm from round the wicket, and Vicky has got that away. Over mid-wicket all the way for 6. Tremendous shot. Wasn't a long hit, but how does it go? This one is picked away, and picked away for a massive 6. 6s are
being hit in every part of the ground again. He's a real classic, no doubt about that. And he goes again, and goes good enough for yet another 6. This one is going, and gone away for 6. That was a some hit. And he goes again. But fielder is there at the backwards leg, and he caught that one beautifully. Chota Vicky went for the big hit again. He has to walk back. Wicket 50 to his name, 34 for 1 on the board. Meanwhile, Hassan is going to continue with his second, the left arm seamer. Picked up. Is it long enough? It's sailing over the boundary ropes. Yes, it is. Perfect start to the over this for him. Another slower one. This time he decides to go straight over, long over, and seal ASAC to the ball. Back-to-back 6s for Khurram. And now they are up and running once again, DH at the bungs. 34 for 3 was not that threatening for Clifton. Once again, goes straight, goes long for yet another 6. It's the hat of maximums now. This time long gone. Left. He goes flat. Is it another one? Yes, it is. Oh, someone take it. Someone in the crowd, please take it. We're looking to make the grand just to come back. He tries to go big. He has sliced it up in the air. Is it going to be taken? It has been taken. Second wicket goes down. They are 62 for 2 at the moment. And he decides to go straight. There is a feeling out the moment. The ball is going to go over his head. A bit of counter punch now from Arsalan. He tries to go big over long off, and he gets plenty on it. Another 6 from Arsalan's bat. They lead in the first innings of about 13 runs. It's in the air and it's been caught. So Chakwal has to take a long walk. Khurram will be walking on his way back to the pavilion. 42 of just 15 tonight for a big start. Once again, perfect execution of that yoga. It's going to be just one. In fact, they're looking to come back for the second. Right opportunity at the bowlers, and it's a suicidal run out. There was no way he could have come back the second run on that occasion. That just did not even cross the inner ring. I wonder what the chemistry was going on between both guys. Full toss, picked away on the leg side, and a much needed maximum for DH Dungs. Missed out his length time by just a few inches. Felt like he was waiting for it, Arsalan. He got the one. Full extension of the arm. That's the shot of the night. Over long on for a gigantic 6. Forget about the distance. How about that height? So the innings of the Dungs is over. 105 is the equation. Clifton Popular have to get 105. They did well in the second innings. First ball of the final innings. Full toss outside the off stump and plug the gap, and could be a boundary. Chases on, and finally ball has got to the fence. So boundary is over. That should have been struck. It wasn't struck very hard. Umar again. Smashed away over long off. He has cleared the boundary quite comfortably here. It's not a long strike, but he smashed it well enough to pick up maximum. He goes leg side. Is high in there. Will this be taken? It's a tough one. Who wants it? And a check in. What a wicket that is. It's a huge one. Fahad has to walk back. It's a lead edge. And well touch catch indeed. It was a tough one. Picked up an important wicket of Fahad. On 6 followed by wicket again. It's high in there. Where is going to land? Is there a chance, or is the maximum? It's got him. 2 wickets and 2 balls. Would you believe it? Dream start for DH Damangs. It's 12 for 2 on the board, and they are extremely happy. Ball. Pulled away, was taken, or it goes for 4. Nicely struck, importantly, a well-placed shot. He goes leg side as a Shah, and it's got the distance. He's just cleared bowlings, and he starts off with the maximum. Beautifully played. Outside edge, and on. No doubt whatsoever, massive deflection goes up as well. And Palpindi just came in when he knows it. He has to back. He went for after the bowler. He wanted to smash it over long off. Now he's walking back to the pavilion. He goes big, he goes high, and certainly cleared the long way. That has cleared the stadium. What a start that is. Beautifully played, pick shot by Nawaz. What a shot. Went for the big shot, and he took on in with absolute power and class. No doubt whatsoever. Of course, the arms of umpire. He goes left side, is high. Is it long? Certainly. It's just cleared the boundary. It could be maximum. He was right at the edge of the boundary for top edge. What a good strike. What a good strike.
It has sailed over the rope comfortably. Haq Nawaz is on fire. He gets a full toss and he hits it hard, hits it long, and it's going all the way. Oh, not all the way, it's in the lap. Oh my word, it's Guram Chakwal again. He just can't keep him out of the action. And Asad Shah walking back after 12. It's 56 for 4. Full toss, picked up into the sand. That at least 6 rows back. He goes for another one. Once again, it's high up in the air. And that's way over the boundary ropes as well. Here we go. And there you go. If you bowl a little shot, you're going to do it. It's a 1 bounce 4, but they'll take it. Length, as we're talking about length, he bowls 2 full, and he goes the journey again. That's now maximum. And now they're getting closer to the victory target. Now it's a different story altogether. Shot. Starts with a good delivery, and he's been thumped down the ground. There was a little bit of fumble, and I think he's signaling that ball has hit the skirting. It's gone for... Needs to pull the pick off the ball. Full toss. It's up in the air. Third man fielder drops it. Goodness gracious me, that should have been taken. Oh, you gotta be kidding me! It's just a skip. It's a full toss. He has hit that on the leg side. He take it. Mustafa has done it. He has provided an all-important breakthrough of Haq Nawaz, who is gonna perish after scoring 24. It's 93-5 with just 1 ball winning. Yeah, in the delivery in which he got out, Daniel Shirazi is the new batter in. This from the captain. It's short. It missed everything. It could be a ball. He has done it. They have defended this total against Clifton Popular and have managed to win this game by 11 runs. While the defending champions registering their first victory of the season 3 in this KTPL. Here's the match summary. The first innings, the bank made 121. Courtesy 37 runs by Guram and 3 wickets taken by Arfan. Clifton in reply made just 113. Fahad once again another half century for him. Was picked the bowlers with 3 wickets, and in the second innings the bun made just 96 runs, whereas Clifton Populars were 11 runs short. Good evening to all of you across the globe, wherever you are, and it's day 3 of KTPL. Day 2, Season 3, and today's first match is going to be between Johor Jawans and Gulshan Gohars. Earlier on, the news from the was that the captain Syed Nasser of Johor Jawans has won the toss and has opted to bat first without any hesitation. So here we go. First ball of the night. Oh, it was a full toss, but way away from the batter. Allowed to re-ball, and it's a wide, way outside the off stump. There is a lot of difference in tight ball and cricket ball, but this time it's in a slot and thrashed away over the offer of boundary. First boundary of the night, and it's Nasser, the captain. And there you go. We are here for this stuff. It's going all the way to the boundary. It's a beautifully struck. Not inside the middle. Was there a nick? He's gone for the umpire and finger is wrist. So it goes down. Chance. Umar gone 3. 16 for 1 at the moment. The lefty is the new coming batter at number 3. And he has to face that delivery, which he sends into the stands. Well, he announces his arrival at the crease with that big blow over mid-wicket. He means business tonight, his best Basit lefty. Full toss, gets the treatment, 6. That's one, that's even bigger. He's not going to stop one bit. He goes big and he goes high, somebody getting underneath it. And somebody takes a big catch. And it's Basit lefty who leaves the arena at the score of 12 with a strike rate of 200. And he has got him. Ball was generating a lot of pace. Batsman doing his bat, that one missed the line of ball, and it did hit these stumps. And so Nasser is on and gone for after making 11.
And he has caught that away. And it bounced away to the mid-wicket boundary for 4. Fielder, I think, should have stopped that one, but he made a miss of that one. And there you see, he let it away over square leg. It's gone all the way 6. There was authority there in that stroke. With great smoothness, and he goes again. Catherine bigger. It lands upside boundary for another 6. Oh, that can worry them. That can worry them. Way down the side, rest away for 5 or 6 wickets. That was a bad ball. This will go blazed away through the offside for 4. That's a very good shot. Take 1. It's a leg by 75 is what they got in 6 overs. Saddam Shah coming back after injury. He's been the top bowler in 2019 and 2020. Here he comes. Straight away, that has been hit down ground. Although there was a fielder down there at long on, so he'll still just get a single. Once again, picked up in the air. There is a fielder at the mid-wicket, but the ball is going to go way past him. A boundary for the tender. He goes again on the leg side. Fielder at square leg is after the ball. Ball might just trickle past the boundary ropes. So back-to-back boundaries to Bahadur. So the chase is definitely on. Starts off with a short delivery. Taimur Mirza decides to go big and hits it way over the boundary ropes on the leg side. First maximum of the innings. Well. It's TM in the house. Fuller. He decides to go straight and he goes long. Does Taimur Mirza. Second maximum to TM in this over. Don't search for the use when you don't have enough pace. Short. He goes big again. This time long on. That's a magnificent hit from TM. Back-to-back maximums. He goes big. He goes straight. It's up in the air. Mid-off was inside. And that's way over the boundary ropes. The ball just landing from the orbit. Perfect start to the over. A 6 of the very first ball. This time he goes over extra cover. It's in the gap. That's going to run away for 4 as well. Overcompensating this time. Previous one was down the side. It was 2 outside the off-stump. Rashid now bowling to TM. Going to come over the wicket. Once again, it's the leg ball. And that's going to trail into the stands. That went 4 rows back. Excited away. 1 bounce into the fence. This is stopping him tonight, that's for sure. 50 also comes for Gulshan Kauhars. Wajid coming over the wicket. Starts off the full toss. Picked up on the leg side. It's into the gap. 1 bounce and into the fence. Horrible delivery. In fact, it has been signaled as a no ball as well by the on-field umpire. I think इन्होंने जिस तरह से टीम को मैनेज किया है अनलकीली लास्ट टाइम जो है वो हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे लेकिन इस दफ़ा आप देंगे इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर नजर आएगी आपको Toss it away and everybody's a spectator. That has been smashed way back over the boundary and once again umpire his arms. So one backed up and once again same result for Taimur Mirza. He's just 1 away from an outstanding half century and 6 to end the over. 82 for none after 4. Smash hard, it's high, it's handsome. That's gone way back. See you later. What a strike that is. And 50 is up for Taimur Mirza, an standing half century. And he just consumed 15 balls to get to this landmark. He goes leg side this time. Once again, he doesn't need to run. This is stimulating batting from Taimur Mirza way back into the stands. Taimur Mirza, he in the 60s now. Once again, pitched up. Thank you very much from Taimur Mirza. Goodness me, this is a real glitch. Bahadur lefty, beautifully played. Towards the side. Sublime shot from Bahadur lefty. This right-left in combination. Once again, he goes high. Is it long enough? Is it long enough? No, it is not. It's well taken at the boundary. 2 fielders was converging and there was certain chance and the fielder just well. He kept his cool. And finally, an open partnership has come to a close. Bahadur lefty has to walk back. Final ball of the innings. And he pitched up with a maximum, yes. One of the biggest 6s of the innings. Of course, the arms. And Taimur finished things with 75. Blistering performance.
from a superstar. Welcome back to the DHS Sports Club Moin Khan, where BTV Season 3 is taking place. And I think Gulshan Gaur have done a very good job as well by taking the lead of 43 runs. First ball of the third innings of this match is coming up. A left armer streaming into us. And first one has been smashed away. And batsman knows that it will go all the way for a maximum. मिलते जुलते नाम के अभी तक बढ़तरी देख रहा हूँ गौहर की है तो जवान नजर नहीं आ रही क्योंकि उनको 47 का एक्स्ट्रा हमने टारगेट दिया है पहले तो उनको 47 पूरे करने 12 मैच में आने के लिए और कीनन जब 47 पूरे करेंगे तब टारगेट पता लगेगा. In the air and take it back foot point quite easily, and the first wicket falls. So the opening stand has been broken. Johar Jawan has followed both. They are now at 25 for 1 with Sharaz working back after scoring 5. He edged that one, and another beautiful catch is taken. That's a very, very good catch indeed for the fielder at third. So the captain is walking back to the pavilion without even troubling the scorers, and Johar Jawans are in some sort of trouble. They are 25 now for 2. Umar is taking strike, and he's on ball the hat-trick ball. He streams in, crosses the umpire, and it is in the air. Wicketkeeper is trying to get under, Oh, he made a mess of that one. I think misjudged that one. Hat-trick could have been taken. Thank you so much, Rana. There you go. It's a 6 of the left hand is that. What a time to jump into the commentary box. With me is Kainat. As we can see, a flat hit this time through mid-off, wideish mid-off. It goes all the way after a couple of bounces. They need more of these. And keeping your shape just like that. That one has been smashed out of the screws. It was 6 written all over it when it left the bat. What a cracking sound of the willow. Oh, he goes again this time. Not exactly very intended, but this is what it happens in tape ball. Not out of the screws, but he gets that result. Maximum to say the least. Yeah, he's getting under. Full tosses are not going to help the bowler's cause. That one went into the night sky. We have lost a ball. Please get the ball back. And have a look at that shot. That is shot of the night. So, in my opinion, mere flick of the wrist, and away she goes for a half a dozen. That's gone. That's out of here. Please get the ball back. Well, it blinded me, in fact, when the ball was in the air. I thought it was out of here, but it was in the lap of the fielder. Comedy of errors in the commenting bench, I would say. Anyways, there was an action, so it was a bowler's victory. Falak Bashir go to the extra cover. One bounce into the boundary. That's high. Where is it going? It's going in the square leg fielder's hands. So Falak Bashir has to take a long walk back to the change room as they lose their 4th wicket. All right, it's going to be Arib, the incoming batter, who is going to face. Look at that, not catching the middle of the bat. No timing behind that. They will look for 2 here. Have to hurry, but they get it comfortably in the end. A batter throw could have got the interest a little too high, but they managed to pick up a couple to end innings. So 6 overs now have been officially bowled. So they have managed 92 for 4 in their quota of 6 overs. As we see Taimur Mirza with Bahadur Ali making their way to the center. They've got 50 runs to defend, and it's not going to be that easy for the bowlers. I still believe the first ball has been taken on the side by Taimur Mirza, and that's gone way into the stand. So an excellent start once again by Taimur, starting exactly from where he left in the first innings. He hit a perfect in the house. He decides to go straight. He goes long and he goes over long gone as well. So both deepeners opening the count with a maximum each. What a glorious shot. First ball and smash it out. He picked the ball very well. A slower one once again decides to go big. This time the long on fielder is going to take it. So an anti-climax this innings of Bahadur lefty. A 6 and a wicket.
So wicket falls. So they need more wickets like that to keep the batting side away from the victory. 6 to his name, 13 for 1 on board. There's one ball still to go. Jahangir running up. It's a length delivery. Blazed over long off. That's a magnificent hit by Taimur Mirza. Another 6, this time to end the over with. Low full toss. He has decided to go big and he has got plenty on it as well. This time comes 6 coming back of Essen. Real consolation, real relief for Essen. They just try to play straight or towards the onside. Well played, that's gonna be 6. Beautifully played, no trouble. Short delivery and punished once again by Taimur Mirza. 6 more to his name and now need just 15. He decides to go big on the offside. There is no fielder there. In fact, there would have been even. It would have still saved his head. Took 6 to Taimur. Has he timed it well enough? Has he timed it well enough? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. The boundary to Essen. And now they are not far away from the victory. Once again, it's lifted up. It's high in the air. Who's trying to get underneath that? Is it going to be taken? It has been taken. A really good catch indeed by the fielder at deep mid to get rid of Essen. A very good catch indeed. Kept his eye on the ball, kept his cool. So that wicket has delayed the victory of Gulshagot. 12 to his name, 43 for 2 on the board. Of UBL Amin KTPL Season 3. Lofted over extra cover. It's going to be a boundary. Beautiful hit this from Ilyas. Was it outside edge? Yes, the finger has gone up. What was thinking Taimur Mirza? An unusual way for Taimur Mirza, the way he got out. 24 to his name, but he's done his job for his side. 3. But he didn't need any sanitation. Abdullah pulling the first ball down towards leg side for a boundary. And that is it. That is how Gladiator Gulshan Gohars have registered their first victory in this UBL KTPL Season 3. A commanding performance both with the bat as well as the ball. Welcome back to the BTV Sports Club Moin Khan Academy, where the KTPL Season 3 is taking place, and the latest match is between Liari Legends and Malibangs, who won the toss and they have it to bat first without any hesitation. Shah is very much ready. He's in, right arm over the wicket. Oh, batsman did have a go at that one. But Shah Jahan knows how to baffle the batsman, how to castle the batsman. Shah Jahan again. This time it has been bashed away and bashed away in the stands. Here comes the first 6 of this game. Goes again and goes big. It has gone all the way. Another 6. Daud Khan is looking relentless, he's looking ruthless. Yes, he was. And this one is going. Where it's going to land? It's landed in the spectators. And look at the relation in the dugout. 26 runs off the over. And this one is whipped away magnificently. There we go. Another 6. Oh, my God. And he got that away. Over mid-wicket. That's a huge one. That's a colossal hit. That is a big blow. Gigantic one. That's been caught behind. Bowler made a very good comeback, and wicket-keeper did the rest by taking a very good catch, and the first blood is drawn. Smacked it. It's a flat batted hit that go way over deep mid wicket for a magnificent hit once again. A 6 to start the over with. Malin Mungs 56 for 1. Another big hit. And he has timed it well enough. Yes, he has. Back-to-back 6 to man. Another good start to the over from Salam. Oh, once again, terrific contact from Imran. It doesn't matter. This time the ball goes way over long off. 3 to maximum from Imran. This was the biggest.
Once again on the offside, there is no protection up there. 2 months into the ball goes. Nothing's looking in favour of Salam in this over. This time he connects, but hasn't timed it well enough. There's a feeling that he did not even get his hands to it. And they're coming back for the third one as well. I think it's really good running. Outside edge and taken this time. In the second attempt though. But what a magnificent spell this time from Rana. Once again ending the over with a wicket. This time once again the danger is bad enough. 85 for 2 on the board and Imran is walking back. Just 5 meaning in this innings. He tries to blast it on the outside. It's a flat hit. That did not glide the ground but still carried the journey. Once again the ball hit the leg. This has been an exceptional last over from Sohail. How well has he come back after being hit for a 6 on the offside? Just 7, in fact just 8 runs conceded in the last over. And Malir Malangs are going to finish their first innings on 93 for 2 in their allotted 6 overs. So here we go. Down the leg side, misfiring. It was a bullet, but off target. And preference given in the form of wide, that's not on. Is the bowler. There he goes with covers. This should go across the boundary for 4. The left-hander expanding a bit. His first boundary, Nizar lefty. There we go. If you bowl there, you're going to end up over the boundary for the maximum. Wow. There is Ali continue his bowling spell. And welcome to the bowling crease. Simple as that. In the slot. And there you go. Oh, Ali, come on. Welcome back. And there you go. That's another fine stroke. A good bit of football skills there on the boundary line. And it's comedy of errors. What happening at the non-striker? Look at that. Oh, there's a big mix-up. That was very comical as well. Very, very nicely and very neatly. And the first blood is drawn. He's launched that one, though. And that's going to carry all the way. It was long, it was high, it was handsome, it was all the way, it was maximum. That is picked and hit out of his presence for the member squarely. Brilliant pickup once again. Straight onto the pad and take the penalty. He definitely is swimming around, but the fielder made a mess of it. That really was an opportunity at deep backward square. Oh, nicely picked. It was slower in pace, in slot, and it's man, because the lack of pace has done batsman on that occasion. Ashwardan goes for 10, and they are now 49 for 2. Straight down the ground. It's high. It's handsome. Is it long? Yes. Forget it. It's huge from the... It was right in slot, and what a strike that is. Dropped the ball short, and great shot in fact from Hamidullah. Picked the ball really well. It wasn't an easy shot to execute, but he finished over with a magnificent maximum. Starts off with a short delivery. Once again, on the leg side. It's up in the air, and it is going to land. Oh, take. What a brilliant take that